हम भी तुमसे मिलने लगे, तुम भी हमसे मिलने लगे, बोले जो कोयल। क्या ही प्यारा थंबनेल है भाई, क्या ही प्यारा थंबनेल है। आवाज सब कुछ आ रही है बढ़िया से? एवरीथिंग फाइन, देख लिया मैं। ओ बकवास क्वेश्चन वापस से एक बार किया जाए, माथा फोड़ा जाए, बस व्हाई नॉट। भाई तो 607 सब्सक्राइबर, काश इसकी जगह में 1000 सब्सक्राइबर कर रहा होता, मजा ही आ जाता। क्या चमक रहा है भाई? बस ठीक है, ये चीज जो भी है चलेगा। मेरा पिटी कितना है, हटना साल इस बार। इसका देखने दो, 4 5 5 का पिटी है, ठीक है। अल्हाइथम पे 5 10 10 खोलने पड़े थे मेरे को। दिया यहाँ पे है, और अगला 5 स्टार करता हूँ। टाइम लिया अगला वाला। अर्लकीनो, नेवलेट, नेवलेट से पीछे की भी रैंकिंग पड़ी हुई है। मीको तक होगा, 30 टाइम्स तो है। ये रही मीको 36 पेज पे। 36 35 इंटू 5 करो, 150 प्लस 25 175। 175 विश पहले, जो 176 विश था पुराना, उसमें मिली थी अपन को याए को। नाइस। हम भी तुमसे मिलने, यार ये चीज करना है मेरे को, रिपोर्ट। फ्री के प्रीमोजम वाले चीज पहले करवाए, इवेंट कभी भी चले जाए, भरोसा नहीं उसका कुछ। सिर्फ ये वाला भी हो ही चुका होगा मेरे हिसाब से। क्या भी है, स्टार्ट करो भाई, चोरी ना करो। ये टावर वाला है, ठीक है। इसको ऐसे लगा इधर पे, इसका जो भाई है उसको लगा इधर पे, लगा दे साले, ठीक है। ये मोटे को लगा इधर, इसके साथ इस बैट को लगा दे यहाँ, इसको लगा दे यहाँ। हम पे फायर की पावर है, ठीक है। 43 सेकंड्स में चार्ज होगा। यहाँ से रोबोट आ रहा है, कुत्ते का बच्चा। फिर कुछ मेरे को मिला नहीं है क्या सामान, हो रहा। और कुछ कार्ड वगैरह नहीं मिला भाई। डिप्लॉयड 4/6।
अपना एक चार्ज भी हो गया आग वाला। आने दो, देखते हैं। रोबोट आया है, उस साइड से कोई नहीं आता। रोबोट पे यूज करूँ क्या पावर? मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, इधर करना चाहिए। ठीक है, ऐसे सही रहेगा। 99% का डिफेंस है भाई। हलवे में ले रहे क्या? पिक कर पिक कर पिक कर। मेरे हिसाब से ये सही रहेगा। ठीक है, मैं स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को 5 सेकंड का और वो मिल जाएगा टाइम रिचार्ज के लिए। फाइनल शोडाउन, लास्ट राउंड। रोबोट आ रहा है क्या? 2 रोबोट। 8 सेकंड है, वरना दोनों पे आग लगा था। उधर से वो नन्हे आएंगे, नन्हे मुन्ने। ठीक है, इतने मार तो देने चाहिए भाई अपना डिफेंस। मर तो जाना चाहिए लोग। 93% हो गया, कोई बात नहीं। खत्म। लगता क्यों नहीं? मैक्सिमम नंबर डिप्लॉयड लिख के आ रहा था, कोई बात नहीं। लास्ट वाला भी खुल चुका है स्टेज। पहले वाले में हमने मिस क्या किया? 50,000 बीपी और 2 रेड वाले। ठीक है, मेरा लैपटॉप भाग रहा है। स्ट्रीम प्ले करने में इस लैपटॉप की माँ की छूट हो गई। हमारे छोट लैपटॉप है। कोई चीज स्ट्रीम कैसे प्ले नहीं कर पा रहा है भाई ये? 144p पे लौड़े के बाल है। हम निशब्द हैं। अरे गलत जगह, ये माइन था, मेरे को लगा टावर है। हद बे। इसको तो इसी से मारना होगा।
बैट ज्यादा कुछ डैमेज कर नहीं पाएंगे। भाई यार यहाँ मत फंसना। ठीक ही है, शॉर्ट ऑन दो। नो इंटरनेट क्यों लिख के आ रहा है? वाईफाई डिस्कनेक्ट हो रखा है। बेशरम वाईफाई। Fall before me. We'll meet again. Fall before me. Fall before me. इस गोले वाले को पहले मारो भाई। फोर बसेस डिप्लॉय हो चुका है। Fall before me. Cut down. नाइस 86% 3 स्टार। फर्स्ट वाला राउंड मेरे को मन कर रहा है दोबारा खेल लूँ क्या, क्योंकि उसमें 3 स्टार नहीं हुआ था। स्टार्ट करो, ट्राई करते हैं। इस बार भी अगर नहीं हुआ ना तब छोड़ देंगे। ओके, क्योंकि इस बार मैं थोड़ा एक्सपीरियंस लेके आया हूँ चीज़ों का। इसको यहाँ डाल। नाइस। शार्ट तो खैर करना नहीं, अपने आप होने दो। अरे नहीं भाई, इस साइड से मेरे को पढ़ना चाहिए था। कहाँ से फोन आ रहा है? बहुत बढ़िया। ये हवा में भी टारगेट करते हैं टावर। नाइस। कुछ कार्ड मिला, बहुत ही बढ़िया कार्ड मिला है। उठाओ। पायरो स्लाइम इधर डाल। 12 सेकंड वेट कर लेता हूँ। पता नहीं कैसे पर लैपटॉप अभी सही से चल रहा है। बहुत बढ़िया, ऐसे ही चल भाई। इधर से ये आ रहे हैं। लेफ्ट खाली है अभी के लिए। एक आ रहा है कि दो? Let's end this now. Let's end this now. We'll meet नाइस। again. उस साइड से आने चाहिए। अच्छा वो मार दिया उधर। नाइस। अब सिर्फ टाइम पास करना चाहिए इसमें। ये वाले पे आग क्यों नहीं आ रहा? सारे चार्ज नहीं हो रहा ये। सैलरी कट करो भाई इसकी। ये आ रहे हैं कभी भी कुछ। उस साइड से वो लोग आ रहे हैं। एक आधे तो उसी से मर गए। 100% का डिफेंस है अभी के लिए।
will इस वाले पे meet तूफान डाल दूंगा मैं। again. खत्म, 3 स्टार, इजी, 100% के साथ। ये तो अपना डिफेंस का कंप्लीट हो गया, ठीक है, साथ के साथ हो गया। अटैक में इस पे 3 स्टार नहीं हुआ है, क्यों पता नहीं। अटैक में मेरे को उतना एक्सपीरियंस ही नहीं है। ये 2 बचे, ठीक है। एंड सीन कैसा है, खाली अगर मैं कंप्लीट कर लूँ तो मेरे को प्रीमो मिल जाए, 120 सेकंड कर लूँ तो मेरे को बुक्स मिल जाएंगे। ऐसा सीन है। अपोनेंट वो चीज़ लेके आ रहा है, मेरे को लेके जाने होंगे इनके अपोजिट। आग वाला ला रहा है तो मेरे को पानी वाला लेके जाना चाहिए, फोर्स। बिजली ला रहा है तो मेरे को आग चाहिए। पानी ला रहा है तो मेरे को दोबारा आग चाहिए। बर्फ ला रहा है तो मेरे को बिजली चाहिए। आग ला रहा है तो मेरे को दोबारा बिजली चाहिए। बिजली ला रहा है तो मेरे को आग चाहिए। ठीक है, सही रहेगा। या फिर मैं थोड़े चेंजेस कर लूँ, इसके जगह हटाओ इसको। अबे यार, इसमें एक तो ना पूरा हटाना पड़ेगा। ये डाल दो, या ये डाल दो और ये डाल दो। स्किल की बात कर रहा ना, आग का स्किल। Going somewhere? Going somewhere? Perfect distance. My blade. वो हवा वाला Going अगर मर जाए मेरी somewhere? आधी दिक्कत नहीं है। Ha! The perfect distance. To the ferry. Going somewhere? The perfect distance. आग की पावर है, मैं पता है कोई फायदा नहीं होगा मुझे यूज करने। साइड में कब आ गए थे? Feel my blade. To the ferry. अटैक वाला सक्सीड मेरे, डिफेंस वाला कर लिया मैंने, अटैक वाले में दिक्कत है।
ऐसा ना हो कि मैं अटैक हार जाऊं। कि मैं हारता हुआ सही लग रहा हूँ। पर ये वाला कैसे होगा? टीम कॉम चेंज करो पहले तो। अब एक काम करते हैं, जिसपे ये अंगूठा बन के आ रहा है ना, अंगूठा छाप ले, उनको लेके जाएंगे। और दो जगह खा दिए, एक ये ले ले और एक क्या ले, कुछ भी एक ले ले और चल। पावर में इस बार ये वाला लेके देखते हैं। रैंडम स्टफ लेके जा रहा हूँ, मेरे को बस कंप्लीट करना है। अभी तक तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। Let's end this now. We'll meet again. कंप्लीटेड। बेटे रूइन गार्ड बढ़िया कर रहे, इस बार मजा आ गया। पिछले में हम हारे और इस बार ही भाई 3 स्टार। ठीक है, अब ये बचा है बस। 5 बुक, 5 ये पोशन, 10 बुक एक्चुअली, और 50 प्रीमोजन। ये वाला 3 स्टार करना पड़ेगा भाई। लास्ट वाला बैटल है। हम्म, अंगूठा जिन पे बना उनको लिया हो ना। सेम टीम लेके जाए, लेट्स सी। और यही ले लेता हूँ, ये काम तो आ रहा है। लेट्स गो। मैंने दोनों स्किल यूज कर ली, बहुत बढ़िया भाई। रोबोट बढ़िया काम कर रहा है भाई। रूइन गार्ड जो है, और ये जो व्हील टाइप है वो भी अच्छा कर रहा है। दो रोबोट हो जाएंगे, मजा आ जाता है। फिर मरेगा तो मैं रोबोट डाल दूंगा। अरे यार, अपना एक रोबोट ही खुल गया। Let's end this now. टूटने वाला टावर ऑलमोस्ट। बस दूसरा लिया गॉड बियर ग्रेट। ये मुझे उस सामान, इसमें हमने मैंने जो कर रखा है वही लेवल दोबारा कर दिया भाई। हट गई। 2 स्लॉट खाली है।
ये सामान लेके जाऊं या उसको चेंज करके दूसरे को ले लूं? देखते हैं, इस बारी में नहीं होगा तो उसको ले लूं। जो लेवल कर रखा है वही 2 बार किया भाई। कुछ खास मेरे को लग नहीं रहा अपना प्रिपरेशन। ये गोल घूमने वाले भाई बहुत इरिटेटिंग लगता है मेरे को। दो टावर लेना बचा है। We'll meet again. We'll meet again. अच्छा वो इम्यून है तो टावर तोड़ना भाई, क्या कर रहा है? इम्यूनिटी भी है तेरे पे? ऐसा मत बोलो कि दोनों एक दूसरे से इम्यून है। हमारे तो साले डीजे वाला हमारा बहुत बढ़िया। ये टावर तोड़ना है खाली। बिजली और रोबोट एक साथ मिले, रोबोट छुट गया। इसको बेचता हूँ। खत्म 3 शॉट। तुम भी तुम है मरने लगे। एक बारी जाके ना ये कलेक्ट कर लेता हूँ भाई। ये चीज चिकन टूल कर लेते हैं, फिर 20 प्रीमो मिलेगा। देखो इसके लिए अच्छा हुआ कर लिया। नीड अप चिकन, ठीक है, हो गया बा। अबैंडन क्या होता है अपना? हो गया कंप्लीट। लैपटॉप पगला गया। जस्ट गोल गोल घूम रही है। कुछ चीजों को कुछ नहीं हो सकता। इवेंट वाले टैब पे जा, इसमें एनालिस्ट प्रोसेस, ठीक है, ये सारे हो गए कंप्लीटेड। मोड सेंडिंग, ये पता नहीं क्या है। और ये चीज तो कंप्लीट है अपना। इसमें एक ही बचा है ना, थर्ड वाला 3 स्टार नहीं हुआ, ये है 50 का। गार्ड में जाए मत होने पे। ये वाला भी कर ले जा तो। चैट डिलीट, किसी ने कुछ चैट डाला था क्या भाई? जो डिस्कनेक्टेड लिखा है वो तो हो गई ना, जब इंटरनेट ऐसे छूट गया। नहीं पढ़ना बे, चैट खत्म करो।
नो इंटरनेट लेके आ रहा है। कंप्लीटेड। कुछ मिला भी? कितने फ्री में? BB10 हो गया। एक स्टैंडर्ड मिला है, स्टैंडर्ड खोलते आ जाओ। 5 स्टार मिलेगा देखो। 4 स्टार भी नहीं मिला बेंच। इस पे पिटी कितनी है? 3। 16। अलाइटम के बाद मैंने खोला था क्या भाई? और 0 है मेरे पे। मतलब किसी काम के लिए। और कोई इवेंट है कुछ? रेस्टोरेंट में प्रीमो है ना? ये कर सकते हैं। फिशिंग रॉड करना है के बाहर में गए। ये कंप्लीट हो गया ना भाई? बेकार। प्रीमो चाहिए अबे, और कैरेक्टर्स आ रहे हैं वो भी निकालना मेरे को। कोई बात नहीं, फिर आज इसको बिल्ड करते हैं। दे दे बहन, Add 20 प्रीमो दे Astro. मेरे को। बकवास मत कर। Thank you for Add Astro. इस पे क्या लगाना था हमको? गिल्डेड ना? गिल्डेड फार्म करते हैं, छोड़ा। अभी क्या है? ये वाला पीस ठीक है, गिल्डेड का ही है। CR है। डीप वुड कोई बात नहीं, एक ऑफ पीस। EM का ये है। अटैक एंड HP। गिल्डेड का ही है ना ये? नहीं, ये वाला नहीं है। एक चीज चाहिए मतलब हमको, उसके लिए फार्म करना होगा। Add सैंड Astro. चाहिए। अरे यार, ये क्यों डब? पहले कन्वर्ट करता हूँ इसको, क्या बोलते हैं, कंडेंस रेजिस्ट, उसके बाद जाते हैं। 5 बना दे। और फाइट के लिए टीम चेंज कर लूंगा मैं। पार्टी सेटअप। अलाइथम 2 मिनट बाहर निकलो जरा। This will be a productive. शट अप। अब यहाँ नहीं। इसको क्रॉस कर। ट्रेनिंग गाइड। किसी भी एक में जा। अलाइथम में जा। आर्टिफैक्ट में जा। इधर पे जा। ये वाला डोमेन है, इस वाले में फार्म कर। 8-5। रुक, सर्च करना पड़ेगा। 8545155423। यही है ना? जेंसिन। बढ़िया। 81 का है। 1200 का अटैक। EM 300। नाइस। CRCD कैसा है? बढ़िया स्प्लिट है यहाँ पे, 240 और 70। ER 111 ठीक है। 10 डैमेज बोनस है, नाइस। 74। एंड वेपन 5 स्टार लगा रखा है, बहुत बढ़िया। CD का R1 90 लेवल ठीक है। गिल्डेड ही है क्या? हम्म। इससे मैं आइडिया ले रहा हूँ, पता है मैं कौन से वाले लगाऊं करके। EM का लगा रखा है ना तूने, सैंड। CRCD 20% यहाँ पे भी है, नाइस। एक एक बंदों का 40% देखा होगा मैं सब स्टैट। क्या खा के वो फार्म करते हैं। CR का सर्कुलेट ठीक है। डनो डैमेज बोनस, मतलब मैंने ये दो चीज सही फार्म की है, ठीक। मेरे को चाहिए एक ढंग का गॉबलेट। गॉबलेट नहीं, शायद सैंड। EM का
जो कि मेरे पास अभी नहीं है। ठीक है, दूसरों से फिनिश Stay. करने के खुद बिल्ड करेंगे अपन। वेयर आर यू? द फक आर यू? ये रहा। सीआर का था, मेरे पास भी सीआर है। डेनो डैमेज बोनस ठीक है। ये चीज मेरे को चेंज करना है। थंडरिंग फ्यूरी की जगह गिल्डेड का होना चाहिए सैंड। ये एक फार्म करना है आज बस। Staring into my eyes is ill-advised. शट अप I आल्टीनो। can't promise you'll love. वो एक पीस मिल जाए मैं बिल्ड कर दूँ। You are not welcome. Overruled. Right here. Emerge. You're up! Settle down. 11,000 का ही है ना? भाई एक बंदा था जो कल स्ट्रीम में आया। ही वाज लाइक तेरा Right now, न्यूविलेट 1-2 right हजार का here. डैमेज करता है। वो बंदा अभी का है। साले जब बिल्ड किया था वो बंदा भाग गया। Dump. Oh, Bow your head. ready, go! Emerge. Right here. Test with patience. The tides beckon. Gotcha. मेरे को याई मिको का वो देखना Right now. है। Stay put! Nothing lasts forever. प्यारा तो है भाई ये चीज। Right here. Right now. Silence. अबे यार गलत टाइम का अटैक करता है। Laid bare. Right here. लेकिन बिल्ड नहीं है। कुत्ता बना के मारा है। My turn. Everlasting as the moon. Emerge. Right here. Right now. कोई बचा भी? Bow your head. यार एक अच्छा पीस दे दे। मैं 4 दिन से फार्म कर रहा हूँ। एक अच्छा पीस। 3 पीस मिला। काश कोई एक अच्छा डेंड्रो डैमेज बोनस मतलब वो है क्या नाम है डीप फूड वाले पीस दे रहा है हराम को। इसकी जरूरत नहीं है रे डीप फूड वाले की। एचपी का सैंड। सैंड ठीक है वैसे। सैंड मैंने लगाया कौन सा है उस पे? याओ पे। एचपी हीलिंग बोनस। एचपी का सैंड है मेरे पास ऑलरेडी। You are not Emerge. Right here. Don't be scared! Pain, pain, go away! आर्टिफैक्ट Settle फार्मिंग down. बड़ा मुश्किल है भाई। इसका रीजन है कि रेजिन जो है Be बहुत कम दे रहा है sanctified. गेम वाला। खाली 200। इसमें क्या होगा? Right now. Right here. You're up! Bow your head. क्या डॉट मारा होगा? Right now. Silence. I'm ऐसा नहीं लगता always मैं watching. आर्लेकिनो को जबरदस्ती का कैरी कर रहा हूँ कि Right here. Emerge. Right here. Stay put! Bow your head. Ready, go! Right now. Right here. The tides beckon. An oversight on my part. Silence. Emerge. Right now. चार्ज हो जा। Oh, भाई इसका जाइरोस्कोप ऐसा घुमाना पड़ता है ना नेवुलेट पे। इंसान बैठे बैठे घूम जाए दूसरी तरफ।
चीज दे दो। क्रिट डैमेज का सर्किट मैंने रेट का लगा रखा है शायद। काम आ सकता है, आइडिया नहीं है, देखना पड़ेगा। आ भी सकता है, नहीं भी। मैंने डिफेंस का पहाड़ में जाए। डिफेंस इस गेम की सबसे बढ़िया चीज। लैपटॉप भाई मार खाएगा जिस हिसाब से अटक रहा है ना यूट्यूब चलाने में। चलता क्यों नहीं साले, मेरे को वॉच टाइम चाहिए। चलता क्यों नहीं। 144 पी बढ़िया। Emerge. Don't be scared. Overruled. Right here. बहुत बुरा मार खाएगा। Emerge. Let the mighty be humbled. Justice is blindsight. Right now. Right here. Uglade, you're up. This is where you fall. Pain, pain, go. Oh. Emerge. Right now. Right here. A sight to behold. Emerge. Right here. Right now. Don't be scared. Bow your head. Huh. Right here. Right now. Stay put. Silence. हटना साले, हटना रखो। Right here. Right now. Ready, go. Bow your head. What a nuisance. Right here. Emerge. डॉट Right. एचपी पे है ये और मर नहीं रहा। समथिंग प्लीज। एक घटिया सा सामान तो आप दे ही सकते हो गरीब को। डिफेंस का सर्कुलेट इसकी माँ का जय। आज भी कुछ अच्छा सामान नहीं मिला। सीडी का बस एक वो मिला है सर्कुलेट पिछले राउंड में। अब सीडी कम होगा तो लगाएंगे या फिर Emerge. सीआर। Right here. Right now. Don't be scared. Silence. An oversight on my part. Right here. Is that all you've got? The tides beckon. Now you're testing my patience. अबे रुक जा। Right now. बूमरैंग ही बना Nothing रखा है lasts पता forever. Emerge. Right here. है। बाहर और रुक Emerge. जाइए इस वाले के बाहर आओ। Stay put. Bow your head. Oh! छुपा दी। Pain, pain, go away. Right now. Right here. Emerge. Uglade, you. वैसे पता है ये मेहनत बर्बाद ही जाने वाली है। मेरे को लगता नहीं मेरे को ये बस Right here. Right now. Right here. Let the mighty be humbled. Right now. Emerge. Right now. Don't be scared. यही है वो बूमरैंग। Silence. Emerge. Right now. खत्म। समथिंग गुड प्लीज।
गरीब आदमी को एक ही बचा है मेरे पास इसके बाद। एक दे दे हराम को। दिया है। पायरो डैमेज बोनस इसकी मार है। पायरो कौन है मेरे पे? आर्किनो है एक। और कौन है? दिया है 5 स्टार में पायरो मेरे पास। ऐसा तो नहीं कि मेरा AR-45 पे मैंने लॉक कर रखा है उसके लिए मेरे को घटिया मिल रहा है। AR बढ़ा दूं तो अच्छा मिलेगा। उस कोने में क्यों खेल रहा है भाई? 510 को वैसे 160 से डिवाइड कर 160 320 480 तीन बार ही खोल सकता हूँ मैं। क्लोजिंग भी चाहिए थी भाई मेरे को, ये भी चाहिए थी। चाहिए सब कुछ पर मिलता नहीं है। आओ आराम से, मैं टाइम पास ही करते हैं। Huh? तेरा आर्टिफैक्ट इसमें जा। सेट फिल्टर गिल्डेड सैंड एक भी है ही नहीं गिल्डेड का, बहुत बढ़िया। डिफेंस का सर्कुलेट ना ना CD का है मेरे पे। ये लगा लूँ तो चलेगा, ठीक है। ये यूज कर सकता है। फिर 4 पीस हो जाएगा गिल्डेड का, जो कि मेरे हिसाब से काफी है। CD बढ़ जाएगा, मगर CR का क्या होगा? अभी क्या हाल है? 92 9% बहुत बेकार है भाई। वैसे बिल्ड भी नहीं है ना अभी। वेपन से भी इसको EM मिल रहा है। कोई अच्छा वेपन है मेरे? प्रोबेबली नॉट। सारी सेट देखो एक बारी गिल्डर के कौन कौन से निकले हैं। डिफेंस और ये वाला है, ठीक है। इधर पायरो और डेंड्रो का है। ये खत्म है। 2 फेदर है, एक रेड का एक डैमेज का है। फ्लावर एक ही है। डिकोड मिल रहा है ना, याओ याओ में काम तो आएंगे, देख सकते हैं। तेरे को कूदने के लिए छोड़ा जाता है। इसके जगह पे इसको डाल। हीलिंग की कोई दिक्कत नहीं होना भाई। मेरे को ले लूं क्या? Right here. Emerge.
Settle down. Huh. Be sanctified. That's all. Resin खत्म. भाई इतना हरामखोर कोई कैसे हो सकता है? वे डीपूट का दे रहा है, एचपी का सैंड और पायरो डैमेज बोनस डीपूट पे लेके मैं क्या करूँ गधे? फ्रेजाइल यूज करना पड़ेगा लग रहा है. पांच यूज कर लूँ फिर. आ जाओ पांच यूज करें. दिल तो दुखता है पर यूज करना पड़ता ही है. 300 कन्वर्ट करके आ रहा हूँ. रुक. इनाजुमा जाओ कन्वर्ट करके आओ. ये पूरा एक वीडियो बनाऊंगा मैं. व्हाट 5000 रेजिंग कैन गेट यू इन गेंशिन इम्पैक्ट, ऐसा टाइटल डाल दूंगा. और होल्ड नहीं कर पाएगा ना. यूज तो करना पड़ेगा भाई, पर वो बात है ना, एक साथ जब आपके पास 40-50 हो एक साथ कलेक्टेड, वो देखने का मजा अलग है. अभी ये बिल्ड करना है, इसके बाद आर्लेकिनो बिल्ड करनी है और फिर मेरे को जोंगली निकालना है, वो भी बिल्ड करना होगा. मजा पता है कब आए? मेरे को एक पीस मिल जाए वो वाला इलेक्ट्रो डैमेज बोनस वाला, तब मजा है. फोटो में शाओ है क्या? ये कोई और नहीं. भाई मिलने के लिए किस्मत होना भाई. किस्मत थोड़ी बेकार चल रही है. मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, मेरे को डेंड्रो डैमेज बोनस वाला कैसे मिल गया? वो भी है तो बढ़िया पीस, मगर किस्मत कैसे चल रही है? Right here. A sight to behold. Hey there! Right now. 15,000 Emerge. 19,000 का डैमेज बढ़िया. Bow your head. Fire! Let the mighty be humble. Going in! Hiya! Will. Haha! Justice is blindsided. Hey there! नोलेट की एचपी प्यारी है बे. 27,000. 30 से ऊपर हो जाए मजा आ गया. इतने हरामी कैसे हो सकते हैं भाई? अगर मैं सीडी वाला यूज कर लूं देन मैं ये फार्म करना छोड़ सकता हूँ. Right now. Emerge. Right here. Silence. Huh. Emerge. Right now.
Emerge. I'm always watching. Right here. Emerge. Be sanctified. Settle down. Right now. Right here. Adventure time. कुछ अच्छा दे दे भाई बेशरम आदमी। एक पीस के लिए रो रहा है ये वाले नहीं चाहिए बे। क्रिट रेट का सर्किट ये लेके इंसान कहाँ जाए? मेरे पास हीलिंग बोनस है भले ही ऑफ पीस हो मगर है। Right now. Emerge. Silence. Fire! Right here. With rock. Let's light it up! The tides beckon. Hiya! Haha! Emerge. Right now. Emerge. A sight to behold. Right now. Emerge. Right here. Settle down. Right now. Emerge. एक चीज दे दे। अरे यार डीप फूड देख के ही मेरा दिमाग खराब हो जाए। एचपी का सैंड कितना लूं भाई? 50 एचपी के सैंड हो गए। अच्छा या तो इनको ऐसा करना ना एक डोमेन में एक ही आर्टिफैक्ट का सेट रहेंगे। जबरदस्ती का 2 जगह तक है मेरे को 6 दिन। Right now. Emerge. You are not welcome here. Don't keep having it. Let the mighty be humble. A proper send-off from the speak. Everybody stand back. Right now. Right here. Coming at ya. Sever. Emerge. Right now. Right here. Nothing lasts forever. इसका एनिमेशन बहुत प्यारा है। Right now. Bow your head. Watch out! Emerge. Right here. ये चीज नहीं सुधरेगा। मेरे ख्याल से खत्म हो गए थे कंडेंस। ठीक है वापस खरीदना पड़ेगा जाके। एक ही पीस है कंडेंस का। और ये क्या मैसेज किया है? सीडी वाला यूज कर लूं क्या मैं? सर्कुलेट कहाँ गया? वेयर आर यू? आर्टिफैक्ट यही था ना? सीडी इसके जगह सीडी वाला यूज कर लूंगा तो काम हो जाएगा। गिल्डेड यहाँ पे गिल्डेड सीडी ठीक है। ये वाला कर लूं तो 4 पीस हो गया। Traveling to other worlds is all that anyone seems to be writing about these days. Goodness knows what they find so disappointing about their own world. और आर्किनो भी बिल्ड करनी है अपने को। इनाजुमा
जाके रिजन निकालो, फिर से कोई काम नहीं जिंदगी में। 5 और ले ले भाई, 500 रिजन है मेरे को। सीढ़ी वाला मत दो। सीआर मिलने से हो जाएगा, सीसी सीढ़ी वाला किसी काम का नहीं। आरडे भी फार्म करना है बे, आरडे तीनों के। एक याद है तेरे को पायरो डैमेज बोनस वाला मिला था, वो आरडे पे लगा देंगे। बाकी 4 पीस उसके फार्म करने होंगे। सबस्टैट तो घटिया ही मिल रहा है, वो तो मैं देखना भी नहीं चाहता अब सबस्टैट क्या है। मेन स्टैट बस ढंग के मिल जाए, काम हो जाए। ग्लैडिएटर दे दो। ग्लैडिएटर अभी दे रखा था, उसका मेन वाला फार्म कर रहा हूँ बे मैं। ग्लैडिएटर उसका था अभी थोड़ी देर पहले तक। इसमें डांस का ऑप्शन रहना चाहिए, जैसे इमोट या कुछ करना। और मजा Emerge. Right here. Silence! Ready, go! You Glade, you're Justice is blindsided. Be sanctified. Right now. An oversight on my part. Will. I'm always watching. Right here. Emerge. Right now. एक पीस चाहिए मेरे को, एक पीस दे देना हराम खोटे, एक पीस। क्या है ये? अटैक का सैंड। ईएम का चाहिए तो मेरे को सर्कुलेट भी सीआर का। Emerge. stay put! Right here. Right now. Pain, pain, go! Emerge. एचपी का सैंड इसकी माँ का जाए। स्ट्रॉन्ग बॉक्स में भी नहीं है ना ये सेट, ना तो ये है ना तो वाले तीनों का नॉर्मल सेट है। और जो सेट है उनकी भी अच्छे सामान मिले। Right now. Emerge. Right now. Don't be scared! तो बॉक्स में तो क्या नहीं सकता। Nothing lasts forever. Right here. Right now. 27,000 Right here. का जरूर। Wind Strider. That hurt real bad! Stay put! गलत साइड क्यों जा रहा है भाई? फिफ्टी थे मेरे पे फ्रेजाइल, तब से एक भी नहीं मिला। पूरे 50 वेस्ट में।
हमें ईएम चाहिए। ईएम का सैंड मिल जाए मैं वो ऑफ पीस यूज कर दूंगा फिर। You are not welcome here. Go get him, Yue! Right now. Emerge. That hurt real bad. A sight to behold. Right here. Right now. Don't be scared. Right here. Emerge. ये मिल गया। सी डी वाले को छोड़ के सी आर का मिल गया। बाहर मिला। मैंने स्टार्ट क्यों किया फिर? एग्जिट ले ले एग्जिट। क्योंकि एक ऑफ पीस लगा ही सकते हैं ना। ईएम वाला ऑफ पीस रख लेंगे जो है। मैं हमारे पास क्या है वो थंडर शूटर का है, उसको यूज करेंगे एंड सी डी के जगह सी आर कर देंगे। इनाजुमा जाके कन्वर्ट करके आ रहा हूँ। आर्लेकिनो फार्म करते हैं। ठीक है कहाँ गया वो? बस उसको लगा देंगे। आर्टिफैक्ट ये वाला ऑफ पीस रहने दे ईएम का। यहाँ पे सी डी के जगह सी आर लगा रहा हूँ। स्विच। अब ठीक है। ये देख फ्लावर पड़ा है। फ्लावर में वैसे ऑप्शन है अपने पे। ये 3 ऑप्शन है। ये वाला सही है शायद। ईएम और सीडी दोनों इस पे। फेदर पड़े 4। ऑप्शन ये है। डिफेंस की जगह ये वाला ले लेंगे। अगला ये सैंड। सैंड ऑफ पीस रहने दे क्योंकि अटैक है। Most एचपी humans अटैक could है। have the ईएम रहने entirety दे। of their fleeting lives chronicled बचा in ये but a few short lines. डेनो डैमेज Their बोनस है। ठीक है stories really make for terribly ये dull फिर reading. बढ़िया है ये। रोल करके भाई रोल करने का मेरा जरा मन नहीं है। अभी तक एक चीज मेरे को जिंदगी में अच्छी नहीं मिली रोल से। उससे बढ़िया मैं अपग्रेड पे लगा दूं भाई 5 स्टार वाले। 3 बनाया था। रोल में बहुत बेकार लग रहा है भाई मेरा। एक बार जाने से पहले देखेंगे आर्ले पे है क्या। ग्लैडिएटर दे रखा है मैंने अभी के लिए। ये किसका गॉबलेट मिला? एचपी ईआर। एचपी ईआर और फ्लावर है जो कि असलियत में बेकार पीसेस मिले मेरे को। ये वाले चाहिए भाई। इसमें अच्छा मिल जाए ना। आर्लेकिनो के लिए अच्छा क्या? अटैक अटैक परसेंट। और कौन सा अच्छा होगा उस पे? पायरो डैमेज बोनस वो एक पीस पड़ा है वो लगा देंगे। Something you wish to जोंगली report? चाहिए भाई मेरे Go on. You have my undivided attention. Gather! Right here. Emerge. Silence! Right
Right here, right now. Let the mighty be humbled. Right here. I'm always watching. Emerge, right now. Bow your वो head. वाला कोई गाना चाहिए। Emerge, right now. Emerge. Order. Be sanctified. Gather. Kamisatsu art. Sumetsu. इसमें चाहिए कौन सा हमको स्टैट? ये गलत चीज है। अटैक का गॉबलेट ये वाला काम आना चाहिए मेरे हिसाब से। वैसे हमारे पास पायरो डैमेज बोनस है जो वेस्ट होगा। अरे यार क्या दब गया। सेम विद अटैक एंड पायरो। Silence. Right here. Gather. लॉन्च करें। Emerge, right now. Bow your head. Right here. Emerge. Settle down. Right here. Emerge, right here. Order guide you. Whirling snow. Embrace the ice. Nothing lasts forever. Right now. Emerge. Solidify. This Let the mighty is order. Be humbled. Right here. Emerge. Right here. Bow My your apologies. head. गलत चीज है ना ये। जो पीस चाहिए वो नहीं मिलता। बॉन्ड ऑफ लाइफ वाला चाहिए क्या तो नाम है उसका पता नहीं। वो नहीं मिलेगा। अटैक वाला मिल गया। Right now. Silence. Emerge. Right here. Whirling snow. The tides beckon. Settle down. Emerge. Gather. Let the mighty be humbled. Sumetsu. Right now. Bow your head. A sight to behold. Emerge. Right now. This is order. Silence. Solidify. पीस मिल जाना साले इतना क्या तलवार है।
हीलिंग बोनस का सर्कुलेट नहीं चाहिए था मेरे को, और ये तो बेकार है बेकार है। बचे हैं मेरे पे कंडेंस, एक बचा है, बढ़ा के लाना होगा। और लेकिन तो है कहाँ आर्टिफैक्ट, पायरो डैमेज बोनस 2-3 है अपने में, पायरो डैमेज बोनस बहुत ज्यादा है। गिल्डेड का है, इसका है और इसका है। स्टैट किस पे अच्छा है? इस वाले पे स्टैट अच्छा है, इसको लगा दो ठीक है, CR/CD मिल जाएगा। बाकी दोनों ठीक है, रहने दो, लॉक कर लो। और इन पे डाल दे ये चीज, हीलिंग Melusines बोनस are नीचे, beautiful creatures. They are the pride of Fontaine. CR Be sure ना to तो befriend फेदर them मिला, ठीक है, and फेदर चाहिए cause और ये them no चाहिए harm. सर्कुलेट। आर्ले का वेपन, आर्ले का, आर्ले की ना है का, ये रहा वाइट टैसल R5, CR है इस पे। क्या सामान चाहिए इसको? अभी हो जाएगा, थोड़ा अपग्रेड कर देता है इसको। वेपन सही है ना? और हो सकता है ना, सामान कम पड़ गया। CR का वेपन है What तो could the CD पे फोकस children करना be होगा up मेरे हिसाब to? से, ठीक है। Never 54-72 mind. CD चाहिए। Let them do as they please. तुम जो है जिस स्पॉट पर, और मैं लेके आता हूँ, रुक जा, रेजिन लेके आता हूँ। मैं आज पूरा ही फार्म करूंगा मैं। रेजिन कहाँ पे? 124। बस मेरे पे बटरफ्लाई पड़े हो। कंडेंस कहाँ गया बे? क्या हो गया तेरे को? बटरफ्लाई खत्म, बहुत बढ़िया इसकी। चालीस बटरफ्लाई थे, कैसे पता? इतने ऊपर हो रहा है ना ये। हटा ना इस पिन को। मैं इसको ले, ठीक है, अब यहाँ से 2 मिल जाए। अबे नहीं बे, ये टावर कुत्ते का बच्चा, हट जा साली। चार ही अभी मैं बना भी सकता हूँ, उसके बाद रेजिन खत्म। तीन बना सकता हूँ, कोई बात नहीं। बटरफ्लाई कैसे खत्म हो गया? 50।
इसके बिल्ड में भी इसको ले ले भाई, हाइपर ब्लूम मारेंगे। चेक नहीं कर सकता क्या मैं मीको का बिल्ड? इलेक्ट्रो डैमेज बोनस चाहिए भाई मेरे को मीको में, वो भी नहीं है। एक इलेक्ट्रो डैमेज बोनस का पीस मिल जाता ना अगर। यार मीको आती है गॉबलेट है, गॉबलेट डिफेंस का मिल रहा है भाई, नहीं चाहिए मेरे को। इलेक्ट्रो डैमेज बोनस कंफर्म सेटिंग। किधर से भी मिल जाएगा इलेक्ट्रो डैमेज बोनस में कुछ। Gather! Stay put! Ah! Right here. Emerge. Right Ready, here. stop! Settle down! The tides beckon. उसको देखो गांव तक मार दिया वो। Uglay, you're... Bow your head. Stay put! Silence! Hey, go! Let the mighty be humbled. Justice is blind. Don't be scared! अरे चेंज हो। टाइम पास करने में कुछ है ही नहीं। Go get him, Uglay! Settle down. Stay put! The tides beckon. Silence! Pain, go away! Yep! Emerge. Stabilize! Be sanctified. Emerge. नोवेलेट बहुत ज्यादा चिल्लाता है भाई, कान फट गया। कौन सा पीस एचपी का फ्लावर है? इसका नाम क्या है? फ्रैगमेंट चाहिए मेरे को और अनफिनिश्ड मिल रहा है। अनफिनिश्ड बहुत मिल रहा है, नहीं चाहिए वो वाला। काम का तो है बट नहीं चाहिए। Stay put! Settle down. मुझे मत Go get him, Uglay! An oversight on my part. Ha! The tides beckon. Uglay, you're up! Silence! Right now. Ready, I go! will have order. Be sanctified. Bow your head. I'm always. Don't be scared! Settle down. अरे कुत्ते की क्या प्रॉब्लम है? tides पहले नहीं beckon. मारेगा, जब वो बॉल्स आ जाएंगे तभी मारेगा ये।
I will have order. Stay put. Bow your head. 3 रेजिन और बचे कंडेंस वाले। चार्ट कुछ मिला नहीं यार। ऐसी उम्मीद थी डिफेंस का गॉबलेट पीछे डालो अपने। बची भी है क्या मेरे पे? लेकिन खत्म है ऑलमोस्ट। टीम चेंज। मेरे को लगता है अलाइथम के साथ मेरे को हैशटैग क्लोरीन लिख देना चाहिए तो बढ़िया रहेगा। क्या मतलब यूज है? हेलो ब्रदर, वेलकम टू द स्ट्रीम। आई एम डूइंग जस्ट बैड। यू आके तक फार्मों के नहीं दे रहा। तो बंदा बाहर आ गया काश। एक मिल जाए, एक दो पीस, 2 पीस मिल जाए जो खाली कुछ भी मिले मगर मिल जाए, काम हो जाएगा। पोस्टर वाला यूज नहीं करना। एंड ऑफ पीस बहुत सारे लगेंगे। Right here, right now. Settle down. Be sanctified. Right here. Right now. Transfixed. A sight to behold. Adventure. Emerge. You're in over your head. Let me try. Let the mighty be humbled. Right here. Emerge. Adventure time. I'm going in. Silence. Right now. Right here. Be sanctified. Overruled. Huh? Teamwork is dreamwork. Witness my wrath. An oversight on my part. इतने सारे भाई वो नए वाले मिले हैं ना मेरे से जो नहीं चाहिए। एक कैरेक्टर लगा के उसको बिल्ड कर सकते हैं। अभी ले जो बेशर्म कम से कम फ्लावर दिया है, नहीं चाहिए फ्लावर। और ये फिर दूसरा सेट है। आपका रिजन खत्म हो गया।
पिछली बार ही कर पा रहा हूँ। Emerge right now. Settle down. I'm always watching. What a nuisance. ये इसी को मारने की Emerge पीछे है भाई। right here. हमारे- Emerge. Oh! Bow your head. Adventure time. The tides beckon. Right now. Emerge. Let's light it up. Right now. Silence! Let the mighty be humbled. Justice is blind. Right here. Emerge right here. Bow your head. Stand back. Nothing lasts forever. Right now. पे हो ना। लास्ट पीस आ गया मर्जी का, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ दे दिया आखिरी में तो दे दे बेशरम। देखा डैमेज अटैक। I see the value in my own work, but I also see the meaning in all the endeavors of the people of Fontaine. I believe I will continue to take pride in fulfilling my duties. HP अटैक और ये है ठीक है। फेदर नहीं मिला और सर्कलेट नहीं मिला। फेदर और सर्कलेट नहीं मिला। Melusines are beautiful creatures. They are the pride. ये नोवेलेट इतना चिल्लाता क्यों है? म्यूट ऑप्शन नहीं है क्या इसके लिए? किसको मैं मुंह बंद करा दूं इसका? खुद तो साले ने बहुत अच्छे आर्टिफैक्ट ले रखे हैं, भले इसका स्टार्ट भी यहाँ पे बेकार हो। हाइड्रो डैमेज बोनस इस पे मिलेगा क्या? ना, मैंने कौन सा लगा रखा है? एचपी का। ठीक है, एचपी भी कोई बात नहीं। एचपी एम सीडी और एचपी रेजिन खत्म हो गए भाई। इसलिए हो गया था ना कंप्लीट। गिल्डेड का फ्लावर है, गिल्डेड का फिर अटैक का फेदर है, ईएम का ये है। Water comes in many Dendro flavors to the or- discerning palate. Mondstadt's water is crisp and pure, while water from Liyue has an enduring aftertaste. In Inazuma, the water possesses a depth of flavor unlike any other. Sumeru's water Ping देख रहे हो? meanwhile, has a 196 rich and एशिया सर्वर complex पे flavor profile, but it 200 must be savored patiently to fully appreciate it. पूरी दुनिया की पिंग मेरे पे ही आ रही है क्या? अच्छा बेली तो बिल्ड है ना अपना। Oh, 211 का ow. ही आ रहा है, ठीक है। Where did that come from?
एक दो चीज क्या देखना है, इसको बढ़ाने पे क्या बढ़ेगा। क्रिट डैमेज बढ़ता है, ठीक है। आर्टिफैक्ट कौन सा है इस पे? CR। I see the value in my own work, but I also see the meaning in all the endeavors of the और इस पे people क्या of बढ़ेगा? Fontaine. I believe I will continue to take pride in fulfilling my duties. यहाँ से हट गई। इस पे बढ़ेगा डेंड्रो डैमेज बोनस। अगर मेरे को बटरफ्लाई मिल जाए ना, मैं और वो यूज कर लूँ। बटरफ्लाई चाहिए मेरे को। बटरफ्लाई मिलते कहाँ से अभी? स्टैचू के इधर इधर ही होने चाहिए, पर मिल नहीं रहे। मेरा नूवी रिव्यू कर दो। जेंशिन का नूवी कहाँ पे? नूवी ये रहा 90। बहुत बढ़िया। 29 300 नाइस। ऑलमोस्ट 30,000 है। 1,000 का अटैक है। पीएम छोड़ दो। पीएम नहीं देखना भाई। 300%। कहाँ से करते हो भेद का? क्रिकेट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर 300% है। 300 बोनस भी है साथ में हाइड्रो डैमेज का। 46% नाइस। विद सेट दे रखा है 90 लेवल R1। Melusines 90 are लेवल अच्छा है। beautiful creatures. They are the मेन pride of सेट है Fontaine. इसका। Be sure to फ्लावर पे befriend them 32% and डैमेज। cause them no कैसे आता है harm. हमसे मत पूछो, हमारा नहीं आता है। डैमेज का सर्कुलेट ऑब्वियसली। फेदर पे भी 24% का डैमेज है। एचपी का सैंड मैंने भी यही लगाया ना। हाइड्रो डैमेज बोनस का प्रॉब्लम की बात हुई है। बहुत ही बढ़िया। कॉन्स्टिट्यूशन कितना? C1। टैलेंट 10 8 8। कोई बात नहीं, हाई तो है। बढ़िया है भाई, बढ़िया है। मुझे है भाई तुम्हारे। I see the value in my own work, but I 29,000 also से और see the 1000 meaning था, in ये all याद the रखो। endeavors of the people of Fontaine. 950 और I 27,000 believe I ऑलमोस्ट will बराबर। continue to take pride in fulfilling my बस ये duties. घट गया है। नोरेट क्या बढ़ा था ब्लीड होने पे? क्रिट डैमेज। प्लस 16 20 20 20। एचपी का वेपन लगाया मैंने। उसने क्या लगाया था? विदसेट लगाया था ना क्रिट डैमेज। विदसेट 50% देता है। 50 बढ़ा दो तो 180 190 हो पाएगा मैक्सिमम। मैंने एचपी लगा रखा छोड़। मूवी 308 सीडी था ना उतना। वही तो मेन था हाईलाइट पॉइंट। सीडी था। और ऐसा भी नहीं कि कुछ कॉम्प्रोमाइज हो। एचपी एंड वो भी था हाइड्रो डैमेज बोनस। स्ट्रीम स्टार्टेड 99 मिनट, 100 मिनट हो गए। देखते हैं 100 मिनट टाइमिंग तो है। क्या किया जाए बे? मेरे पास वही नहीं है ना। बटरफ्लाई है ना मेरे पास ये है। क्या नाम है उसका? रेजिन। या फिर आर्लेकिनो छोड़ दे, किसी और दिन बिल करने का। इन दो को पकड़। और कहाँ मिलते हैं बटरफ्लाई? I cannot help but feel that you bringing me here is some sort of an assassination attempt. एक काम करो, छोड़ो दे। कितना ही उसको इंसान फार्म करे। इसके लिए क्या चाहिए मेरे को? स्टारफिश। ठीक है 24 स्टारफिश चाहिए। इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए रोज। Melusines are beautiful ये कोई यूज भी creatures. नहीं कर रहा बाद में। They are the pride of Fontaine. Be sure.
अल्हाइथम को क्या चाहिए? पत्थर चाहिए, ठीक Wait. है। Huh? मिनट टन में हो सकते हैं। No. इधर आओ। नीचे है फ्लाइस। भाई कैसा कुत्ता फ्लाई है भाई। चार हो गए हैं, ठीक है। एक हो रहा। 500 भी होगा फ्लाई। इधर खेत में होने चाहिए मेरे हिसाब से। घर के ऊपर एक। मीको का डोमेन करे क्या? इलेक्ट्रो डैमेज बोनस वाले गॉबलेट के लिए। अभी उठा क्यों नहीं? और है नहीं यहाँ पे शायद, ठीक है। ये खेत में देखो बहुत है। दो मिल गए। एक आगे पड़ा है, दो आगे पड़े हैं। ये कह रहा आगे एक और है। चलना भाई आगे, कहाँ अटक गया? डेली इधर आओ, डेली मिलेगा। उसका लेवल कितना है? लेवल 50 है क्या? कितना हो गया अभी के लिए? Where are you? ये रो 13 हो गए। Well, एक ऊपर है। that's not bad. वहाँ इंसान जाएगा कैसे, कोई आइडिया नहीं, बस एक ऊपर है। चढ़ता क्यों नहीं भाई? रात को मिलते, ठीक है भाई।
106 मिनट कितना होता है? 1 घंटा 46 मिनट, ऑलमोस्ट 2 घंटे होने वाली है। 510 ही कर दी है। और क्या करना था मेरे को? पत्थर चाहिए, ठीक है, पत्थर और स्टारफिश, ये 2 चीज कलेक्ट करना है। हर तीनों का तो मुश्किल है भाई। इस पे चल, आर्टिफैक्ट पे चल, पहले गॉबलेट कर ले वो, क्योंकि अच्छा पीस है। एनहांस दवा, ये 10 के 10 यूज कर लो। 5 लेवल बढ़ जाएगा, क्रिट डैमेज प्रकाश, इसकी माँ का एनर्जी रिचार्ज। एनहांस नेक्स्ट है। क्रिट डैमेज ब्लीच, एनर्जी रिचार्ज नहीं चाहिए वैसे, ठीक है बट नहीं चाहिए। डेंडो डैमेज बोनस बढ़े जा रहा है। 16 तक होगा ना कोई और एक चीज। सिक्सटीन हो तो चुका है, सीढ़ी बढ़ जा भाई एक बार तो कर, एनर्जी रिचार्ज ही बढ़ा कर। और अब 20 पे होगा, 20 तक करना वर्थ इट है भी कि नहीं? 40 पे रुक जाते हैं। I see the value in my own work, but I also see the meaning in all the टेम्पररी endeavors of the अनेबल भाई, people of Fontaine. सिंगल मोड जाना है मेरे को, I कुछ तो believe I करना will continue to take pride in fulfilling my duties. है। ये चीज पागल है। अगर मैं रिमूव करके बाहर जाऊं, क्या लिखा है यार? प्लेयर इज इन द सी, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। अच्छा, इंटरनेट की चीज कर रहा था। सिंगल आ गया ना मैं। आर्टिफैक्ट अपग्रेड करना है मेरे को, +20 +0 क्या है? एक सेकंड, ये कौन सा पीस है? ठीक है, ठीक है, सारे उसी के पीस हैं। क्रिट डैमेज है, एचपी है, ये दो ठीक है। अटैक और एचपी, इसके जगह कोई और चीज का पीस भी लगा सकता हूँ मैं, जो कि बिल्ड हो, पर कोई भी नहीं है बिल्ड। यार का है और कोई खास नहीं हो गया। ईएम अटैक और एचपी है, यही सारा है। अटैक परसेंट का ले लेते हैं, ये वाला ले लेंगे। एनर्जी रिचार्ज कुछ खास नहीं हो गया भाई, ये ले लो, ये वाला ज्यादा बेटर लग रहा है। एचपी के भी हैं, अगर मैं 2-2 एचपी लगा दूं तो। एचपी वाले जो उसमें सबसेट उतने प्यारे नहीं है, यही अच्छा है। और इसमें डिफेंस बढ़ जाएगा जैसा मेरे को लग रहा है। इधर जा, एचपी, एचपी परसेंट, इतने ही पीस है। इससे स्विच कर ले, ठीक है? एचपी 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 पूरा हो गया। अभी मेरे हिसाब से 30,000 पार हो जाना चाहिए, डबल एचपी का है क्योंकि, अगर मैं इसको एनहांस कर दूं।
इसका भी है 9 और 88, बहुत बेकार। गॉबलेट है सीआर का। गॉबलेट भी ठीक है, इसके अलावा कुछ और ऑप्शन है नहीं ऐसा। एचपी ऐड किया है। मैं चाह रहा हूँ इसके साथ जो सबस्ट्रैट में सीडी है ना वो भरे, सीडी भर जाए। एचपी नहीं चाहिए भाई, एचपी नहीं चाहिए, सीडी चाहिए। रेट ठीक है, सीडी बढ़ा दे भाई थोड़ा। सीडी भर गया। 16 लेवल पे एक और बार होता है ना, 16 लेवल कर देता है इसको। 16 लेवल हो गया। सीडी प्लीज, इसकी माँ की चुप्पी। 20 लेवल अभी नहीं करना, मेरे पास उतना रिसोर्स नहीं है। एनो डैमेज बोनस ईएम कितना, 25% क्रिटिक आ गया। ईएम वाला चलो मैक्स है। अटैक और एचपी का फ्लावर है। सीडी है ना इस पे, सीडी और एचपी परसेंट। एवरेज एवरेज सामान लेके आया हूँ, कुछ खास रोल नहीं मिला तुमको। बेनेट तो बना हुआ है, बेनेट बन गया। अर्लकिनो बनी नहीं है, ये है। हीलिंग बोनस है ना इसमें, हीलिंग एचपी एचपी। ठीक है, ये वाला अपग्रेड करना बचा है। और नूवी, नूवी का वो पीस अपग्रेड कर देता है। कहाँ पे नूवी का है, ये वाला पीस अपग्रेड कर देता है। मेरे को 30,000 एचपी पहुंचाना है इसको, 30 के ऊपर। क्रिट डैमेज बढ़ता ना भाई। अटैक भी ठीक है पर क्रिट डैमेज में मजा आता है। 12% हो गया। डिफेंस छोड़ के कुछ भी मिल जाए इंसान को। अगर डिफेंस मिलता है मेरे को, पीस घटिया लगने लगे। स्लॉट फिल। 42% एचपी अभी के लिए, 18 है। 20 अभी नहीं कर सकता मैं। 32,000 हो गया भाई। ठीक है ठीक है। पर इसका स्प्लिट बेकार है ना, 20 है बस, 20 और 140। बहुत घटिया स्प्लिट है। बढ़ेगा क्या? सीडी बढ़ जाएगा, 150 हो जाएगा। मगर 20%। इसका कॉन्स्टलेशन कॉन्स्टलेशन आर्टिफैक्ट। अटैक डिफेंस नहीं चाहिए भाई, डिफेंस का गॉबलेट नहीं चाहिए। कोई अच्छा गॉबलेट मिल जाए ना, 7% क्रिटिक जिसमें कम से कम हो। गॉबलेट है कौन कौन से? एचपी का है, अटैक है। एचपी टेंड्रो नहीं चाहिए। ये एक है अटैक वाला, बेकार है क्योंकि इलेक्ट्रो डैमेज बोनस का चाहिए, तो कहाँ से भाई? इसको ट्राई कर सकता हूँ। ये कौन सा लगा रखा है? अटैक चाहिए तो इलेक्ट्रो डैमेज बोनस पर। जियो डैमेज घटिया। पायरो, पायरो के बहुत हो गए भी। एचपी एनिमो डेंड्रो के भी है। यही चीज लगा के देखना दे, कहाँ गया वो इलेक्ट्रो का है? एक पीस नहीं इलेक्ट्रो का, चाहे 2 स्टार क्यों ना हो। अटैक परसेंट पे जा, अटैक परसेंट की ये सारे पीस हैं।
स्ट्रॉन्ग बॉक्स कर दूं क्या? उम्मीद है स्ट्रॉन्ग बॉक्स से कुछ मिलेगा। नज़ुमा कहाँ पे? उसके लिए पर मेरे को पहले ये करना पड़ेगा, लॉक करने पड़ेंगे अच्छे वाले। जैसे कि ये सारी चीज है, ये लॉक पड़ा है, ठीक ठाक फेदर है ये मैं अभी यूज कर रहा हूँ। ये सारी स्टोरी होंगे, जो खाली है वो वाले देखेंगे, जैसे कि ये सारे। ये फ्लावर टूट भी जाए कोई गम नहीं होगा मेरे को। डिफेंस का साइन नीचे है, बेकार पीस। पायरो डैमेज बोनस लॉक है, बेकार। एक इसको लॉक करके रख लेते हैं इन केस। इसके बाद नीचे है, डिफेंस का टूट गया, अटैक किसी काम का है नहीं है। मैंने ये लॉक किया है ना, इसमें क्रिट डैमेज है, रेट की ज़्यादा जरूरत है, रेट वाला लॉक कर। एचपी नहीं चाहिए ये भी, हीलिंग बोनस सब नहीं चाहिए मेरे को भी। जियो वाला भी हटा दे, जियो कैरेक्टर का है वैसे, जोंगली आने वाला है बच्चे। एचपी का गॉबलेट भाई, ये अपग्रेड करना चाहिए था ना नूलेट के लिए। मैं क्या चूतिया चीज अपग्रेड किया, ये करना चाहिए था। लॉक है ना, वो अच्छी बात है। सर्कुलेट है, डिफेंस मेरा। लैला भी बिल्ड नहीं है, बाद में करेंगे उसको। ठीक ही है, इस पे लगा देते हैं इसके पीस, और फिर जाके स्ट्रॉन्ग बॉक्स कर देते हैं। इसको दे दो जो भी अच्छे पीस हैं, ताकि बाद में रोते हुए ना बैठे। ठीक है, फ्लावर तीन ही ऑप्शन है, कोई ले ले। यही वाला रख छोड़, ये चीज इस पर पड़ा है ऑलरेडी। अटैक, एचपी अटैक मैंने कौन सा दिया है, ये ठीक है। बचा ये गॉबलेट, गॉबलेट इस पे है, डंडो का सीआर भी है। अब बाकी की चीज एक तरीके से मैं डस्टबिन में डालने जा रहा हूँ, क्योंकि कुछ नहीं मिलता। इसमें जा, फ्यूरी निकालना मेरे को, और इतने पीस में कचरे में फेंकने जा रहा हूँ, लिटरली कुछ नहीं मिलता। फेंक दे भाई, मेरे को नहीं पढ़ना। अगर मेरे को नहीं मिला ना भाई इलेक्ट्रो वाला, मैं पागल हो जाऊंगा। ऑलमोस्ट सारे डाल दिए मैंने, 38, 38 आउट ऑफ 39 है। इन दो को हटा लो भाई, इन दो को हटा लो। 36 डाल रहा हूँ। जय श्री राम, मिल जा अच्छा चीज। साले ने एक ही गॉबलेट दिया है, बहुत चूतिया आदमी है ये, और वो डिफेंस का। कुछ लोग बहुत चूतिया है भाई जिंदगी में, कुछ लोग बहुत चूतिया है। ये फ्लावर ठीक ठाक है। एचपी का सैंड वैंड लेके मैं क्या करूँ, यार का सैंड अगर है तो बढ़िया। कितने हो गए, 12 हो गए। अटैक का सैंड साले नहीं चाहिए था मेरे को। एचपी का सर्कुलेट है, अटैक का सर्कुलेट है, घटिया चीज।
फिजिकल डैमेज बोनस हरानी जब डैमेज बोनस का है तो इलेक्ट्रोड दे देता ना भाई, भग दे। मैं बोला ना मैं वेस्ट करने जा रहा हूँ, एक भी सामान नहीं मिलेगा। बर्बादी है भाई। आर्लेकिनो तो टीम में मत रहे, तू मनहूस है, तू मनहूस है। Just get out. Yes? क्या ही बकवास हुआ अभी। टैलेंट क्या चाहिए इसको? लेवल अप चाहिए, ठीक है। 16, 0, 0, 20 और 17। 3 बिल्ड है, 3 बिल्ड नहीं है। कौन सा बिल्ड नहीं है? एचपी का, फेदर, ये 2 बिल्ड नहीं है। भाड़ में जा। वो 20 जेम ले लिया ना मैंने, ले चुका हूँ। इन शॉट अभी करने को कुछ नहीं बचा। तो आओ दिमाग खराब करे उसमें जाके, इधर जाके दिमाग खराब करते हैं थोड़ा। Cause why not? आज के दिन में सिर्फ एक पीस मिला मेरे को, इतना फार्म करने के बाद एक 10 डैमेज बोनस का पीस मिला है बस, खाली। मरा नहीं गई। पचास से मेरे पे फ्रेजाइल लेकिन मैं 20 पे आ गया हूँ भाई, सादा कोई क्या। बुक्स है क्या मेरे पे? 33 to 75 बुक्स की भी कमी है। What do we do? The whole situation is so confusing. Let's take things step by Good step. plan. Impossible things don't just happen. We'll get to the truth one way or इसमें another. चश्मा नहीं आता है क्या भाई? Just relax. Even if everyone else suspects Lenny and Lynette, at least we will be supporting them from the stands. Besides, I doubt Furina understands any more about what happened than we do. Thanks, Navia. Well, we'll be going then. Best of luck to you. मेरे को मन Finally, करता है you're मीको को back. फेदर अपग्रेड कर दूं। Well, how did your investigation go? To be honest, you might be disappointed. No. We're already very grateful that you were willing to help. Well, now, don't you all look disappointed. Don't tell me that your investigation came up empty-handed. That was to be expected, of course. The guilty can never produce proof of their innocence. But don't let that stop you. I shall be terribly disappointed should you, my most anticipated foe, concede so Just you easily. wait. Since both parties are present, I declare that the trial regarding the magic show incident is now in session. Firstly, in order for the audience to understand the causes and results of the incident, could we please have Mr. Linney explain the trick? Yes, of course. I will explain while Lynette demonstrates on stage. All the necessary items have been prepared. Thank you, Mr. Linney. In that case, I take your statement to be that you ran to and remained hidden within the magic box in the audience stands once the trick began, and thus could not have committed the crime. Is this correct? Yes, that's correct, Your Honor. In that case, I call upon the prosecution, Lady Furina. Why, of course I do. Allow me to take the first shot and break this case wide open.
Mr. Linney is clearly We lying. don't need proofs, There man. is no way you could have been in the box the whole time if you were to abduct Halsey and murder Cowell. In fact, I'd say you were hardly in that tunnel at all. That is simply your hypothesis based on the presumption that I'm guilty. Oh, is that so? And if I may ask, what did you hear while you were inside your box? The roaring countdown of the crowd, of course. That's how I kept track of the time and built anticipation for the finale. And you didn't hear anything else at all? Nothing that might leave an impression of any kind? No, nothing. I see. But when the count reached 30 seconds or so, there was a thud. One so loud that I believe practically everyone heard it. Huh? Hey, hang on. Something's not right here. How could Lily not know about that sound? Yeah, I'm sure he could have heard a noise that loud from inside the box. I was right by the box and I definitely heard the thud. क्या ये क्या है? वजन Look at किसके those तरफ तेज scales. जा रहा है? Could those mean... The probability is in the क्या है? Aura trice stands on its side. Well then, ladies and gentlemen, allow me to use the words of the magician himself. You never know what can happen in the blink of an eye. Indeed, it seems his alibi can also collapse in the blink of an eye. Of course, I have armed myself to do far more than smash your alibi. Confidence cannot go unfounded, and my foundations are rock solid. Tell me, aren't you and Lynette actually from the House of the Hearth? The House of the Hearth? They are Fatui. ये उसके बच्चे हैं ना? अर्लेकिनो के. No Shite. wonder they did something like this. So the serial disappearances were the Fatui's doing. Now it all makes sense. I've got a feeling that what happened on stage probably wasn't just an accident. पूरा वजन जो That's जा रहा irrelevant. है. Our identities have nothing to do with what happened. Indeed. Then perhaps you could tell us everything that happened during that 1 minute. Your first priority is to prove yourself innocent after all. I'm sure there is little that needs to be kept secret now. Unless your script already has holes in it. The Outlander is speechless. My, oh my, don't they look flabbergasted? Now comes the infighting and discord, I suppose. This was almost too easy. Good thing I made all those preparations. Seems the all-nighter I pulled last night is really paying off. Hey, Linny, why didn't you tell us this before? Order! Order! Mr. Linney, allow me to re-establish the facts. Lady Furina has raised 2 points. First, when the thud was heard in the Opera House, you were neither in the box nor the tunnel. Second, you and Ms. Lynette are both members of the House of the Hearth. Are these claims true? There's no doubt about a magician's ability to con others. Given how Lenny connected his identity, this could all have been set up beforehand. Plus, Child is here in Fontaine along with other house cooperatives. There must be some scheme at work here. I've been a victim of such schemes before and now. Please answer my question, Mr. Linney. I'm sorry. Yes, they're true, Your Honor. I knew it! Well, that's it. We might as well move on to the sentencing already. What should we do now? Permission to speak, Your Honor. Granted. My defense cannot proceed. My client has withheld some key information. In that case, what is your request? I request a brief adjournment. There are things that must be discussed. Is that really necessary? They're already as good as guilty. The defendant deceived their own attorneys. What is there left to discuss? Order! Order, I say! Your request is reasonable, and we shall adjourn. This trial will reconvene in 1 hour. So you would stick to Mr. Linney's defense even after knowing what you do now?
You certainly have more professionalism than I thought. In that case, my dear audience, let's allow the joy of victory to steep for a little while longer. चैट से जाके पूछेगा while the coach and roommate leaning backstage on Opera House. Well, this is awkward. I didn't think the Hydro Archon would dig all that up. I'm sorry, Traveler and Paimon. Yeah, sorry. Paimon doesn't know where to start. We trusted you two. We based our entire reasoning on the assumption that you weren't bad guys. Not to set the wrong tone or anything, but Paimon's really mad. I'm very sorry. I know you're angry, and reasonably so, but please, let me explain. I know you've clashed with the Fatui several times before. I wouldn't be surprised if just hearing the word is enough to make you upset. But our organization is very, very large, and the Harbingers have very different personalities and goals. Right now, we want to save people. As many as we can. That's right. I'm sure we're on the same page when it comes to this nation and the disaster that its people might face. I knew if it weren't for our respective identities, we could become good friends. That's why I didn't wish to flat out lie to you, but chose to hide some details instead. The truth is very important, but being completely transparent about everything would see us spending more effort than we need to. But how can we know that this isn't all Right. another lie? So, you be the judge. Heck, if I were you, I fear that I'd even struggle to trust me at this point. You met a Fatus who works as a magician, a trickster by trade. All by coincidence, but still, I'm asking you to trust me. I am no criminal. At least, not in this case. Sorry. Please forgive us. Well, you both say that, but... Explain the other issue first. Right. Let's hear your answer first, and no lies now. Of course. I'll answer any question you ask. Charge hai. We've been trying to find out how the Oratrice operates. We want to know why it has a consciousness. Why can it deliver sentences accurately? During our investigations, we learned that the machine's core is beneath it. From that moment on, Lynette and I have been designing this box swap trick, with the objective of getting close to the core. Is that why you needed a whole minute? That's right. In truth, the audience would take about 75 seconds to count down from 60, while I would only need 15 to get to the opposite box. So, after jumping into the tunnel, I accessed the Opera House basement via the vent, and went to investigate the room in which the core is stored. That air vent was created during the construction of the tunnel specifically to execute this step. And what did you find? Well, nothing. As soon as I reached that room and was about to investigate, I heard someone's voice. Which should have been impossible, of course. I was quite certain that I was the only one in the room. That voice seemed to recognize me and tried to speak to me. I chose to err on the side of caution and retreated the way I came. On the way back, I saw the broken vase and the clothes on the ground, but the countdown was almost finished, so there wasn't time to give it any thought. After that... Well, that explains why you didn't hear the thud. But why do you want to understand how the Oratrice operates? Because of that prophecy I told you about, of course. We must know all we can about this nation's secrets in order to deal with that prophesized crisis. That's the only way we can save everyone. So, there you have it. The whole truth. I swear, I didn't hide anything from you this time. It was never my wish to proceed under this cloud of mistrust, but like I said earlier, you can be the judge. If you want to leave because you don't trust the Fatui, there's nothing I can do to stop you. Well, Traveler, you decide. Paimon will follow your lead however you choose. I believe in the facts. I will defend you. I believe that judgment will be dispensed as it should. Okay, thank you. Thanks for giving us a chance. The current problem is that the scales are tipped pretty badly against you two. If we want to refute the Hydro Archon's accusations, we're gonna need a seriously watertight defense. Actually, we already have the key evidence we need. Huh? Let's go back. पूरे टाइम में सोच रहा हूँ क्या फ्लावर अपग्रेड कर दूँ. फ्लावर एक बार ही देखते हैं, वो ज्यादा कुछ खास नहीं लाना था.
क्रिट डैमेज 14% है, रिस्क तो है, इश्क भी है। यार एचपी सीआर सीडी, क्या मुझे इसको अपग्रेड करने का रिस्क लेना चाहिए? एनहांस प्लस मटेरियल भी नहीं है मेरे पे, डैमेज बोनस इतना डाल दे। मटेरियल ही नहीं है भाई, कहाँ से अपग्रेड करूँ? अटैक का सैंड है, डाल दे किसी काम के लिए। मेरे को ये चाहिए 14% से ज्यादा क्रिट डैमेज पे, तो मैं इसको यूज करूंगा। ऐसे ये वाला फेदर अच्छा है, ये भी अच्छा है, अगर सीआर और सीडी भर जाए तो ये अच्छा है। लोग ले क्यों रखे हैं? मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? ईसा प्लीज लीव योर दिस, छोड़ दो इसको। यान आप भी छोड़ दीजिए। यान के आपको सबसे पहले छोड़ना पड़ेगा। यान को वेयर आर यू, वेयर इज योर फ्लावर, आई मीन फेदर। ठीक है, इस वाले में जाओ, एनहांस पे जाओ, प्लस में जाओ, एक 5 स्टार का डाल दे। सीआरसीडी सीआरसीडी, एनर्जी रिचार्ज इसकी माँ की चुप। वी आर गॉन। Both parties have returned to their positions. Let us continue the trial. Positions. When last we left off, Mr. Linney acknowledged the new evidence presented by Lady Furina as fact. Therefore, Lady Furina may continue stating her reconstruction of the events. Ugh, that took long enough. Now then, if everyone would lend me their attention, at this stage, let's revisit that scene from Linney's perspective. As the countdown began, he entered the tunnel. When the flatbed trolley passed, he opened the box and got into an altercation with Halsey, which caused the loud thud. He did not realize that this sound could be heard by everyone in the opera house, which is why he claimed earlier that he could not hear the sound. Finally, he used the vase to knock her out, before making her change clothes to prevent others from recognizing her. At this time, Cowell arrived in the tunnel, having heard that strange noise, and caught Linney red-handed. So Linney proceeded to knock him out too before stuffing him into that box. Afterward, Linney passed the unconscious Halsey to his accomplice through the magic box in the audience stands, before operating the devices such that Cowell's death would be ruled an accident. And there you have it. That's the truth behind. Does the defendant's side have any objections to Lady Furina's description of the events? The key to refuting Lady Furina is the order of events, what Linney experienced and what he saw. हमारा बंदा बोलता भी है। Identify loopholes.
Seems this won't produce a particularly effective rebuttal. Did not witness the crime taking place and thus did not hear the sound. No one left the opera house during the magic show, and after the incident happened, only those who had identities cleared by the gates could leave. The chamber that houses the Seems that जब मैं कुछ बोल ही नहीं सकता भाई. according to Linny, he left via the vent after entering the tunnel. He couldn't have had that altercation with Halsey. एक तो हो गया. Linny went to the... Linny did not take part in the underground altercation. Attention! Ace Detective Paimon has something to say! When the countdown started, Linny did indeed go into the tunnel. But he immediately used a vent to access the Opera House basement, which is where the underground core of the Oratrice is stored. Once he reached that area, he heard a voice in what should have been an empty room. Since he felt something was amiss, he returned immediately. The crime scene had already developed by the time he reached the tunnel again, and in order to complete the magic trick, he did not remain there for any length of time. Finally, he reached the surface, and that was when the accident happened from his point of view. Therefore, he's innocent. थोड़ा सा बराबर हो गया केस. Paimon did it! Paimon actually managed! In other words, you believe that he knew nothing of the incident? That's right! Moreover, I believe my opposition's reasoning is flawed. My reasoning? The on-stage equipment was clearly tampered within the permitted fashion. However, you say the crumple bumped into Penny by chance. If that's the case, then if Cowell hadn't entered the tunnel, who was the entire setup meant to kill? Assuming that what you say is true, Linny only needed to kidnap the young girl to cause a new disappearance case. What would the point of killing someone on stage be? Oh, they have a point. That's right, you tell them! And that's why they're partners of mine. They've managed to turn things around. Oh, well, your denial is very strident, I'll give you that. But what proof do you have to back your claims? How you refuted Linny's alibi initially? Of course I do. If he had been in the magic box the whole time, how could he have not heard that sound? Why do you ask? You're saying that he wasn't? Your claim has now become my weapon. Your claim has also become a critical clue. Are you sure we don't need to give this more thought? Paimon thinks there's something off here. करना क्या है? What is the evidence that Lenny wasn't in the tunnel during that time period? The deceased identity, strange sound during the magic show, entrances and exits in the opera house. ये सब irrelevant है, ऊपर भी कुछ है. Are you sure we don't need to give this more? That's right! Linny wasn't in the box or in the tunnel. That's why he didn't hear anything strange during the performance. This means that when the crime happened, Linny had already entered the basement via the vent. The same clue you used to disprove his alibi has now become the best proof! How do you like that? Well played. To think you'd use such logic.
Well then, if it wasn't Linny who committed the crimes, then who was it? The murderer was. Select the gear icons in the interface to check the corresponding page. अबे नहीं करना इतना नहीं पढ़ना जो करना पड़ गया. Halsey is the missing person and an ordinary audience member. हो सकता है ये उसका मर्डर करके भाग गया. Could there have been a third person involved? जो भाग गया Halsey वही is the होगी, missing वो तो मर person. गया. ये भी नहीं है. The deceased's name is Cowell, Linny's assistant. He would have been able to tamper with the equipment. तो वो क्या आत्महत्या करेगा साले? Huh? That can't be right. Are you serious? The killer was, in fact, Cowell, the deceased! Oh, is that so? How interesting! Let's hear your... What I must do next is recreate the truth. What Cowell did, and how he went from would-be perpetrator. No one entered or left the opera house through its entry. Linny was not in the tunnel at that moment. The sound we heard may have come from a clash between the missing Halsey and the criminal. The deceased's name is Cowell, Linny's assistant. It would have been tough for both people to fit into that vent. They would likely have bumped into Linny as well. The sound we heard may have come from a clash between... Halsey's clothing was in... Linny was not in the tunnel. No one entered or left the opera house through its end. It would have been tough for both people. The deceased's name is... It would have been tough for both people to fit into that vent. Halsey's clothing was in... The deceased's name is Cowell. It would have been tough for both people. No one entered or left the Halsey's clothing was in... It would have been tough for both people. Linny was not in the tunnel at that moment. No one entered or left the... It would have been tough for both people to fit... No one entered or left... क्या गलत हो रहा है यहाँ पे? It would have been tough for both... Leaving aside how he died, Cowell had all the means to commit a crime at his disposal. The strange noise could likely have been the sound of Cowell and Hasley struggling. Linny was not in the tunnel for 1 minute. This would have given time for Cowell to bring Hasley out of the magic box in the audience. But according to Gates' testimony, no one entered or left the opera house. Exiting from the box would have been in full view of the audience, pretty much guaranteeing that they would be discovered. What's wrong, Traveler? Are you still having trouble figuring things out? Where in the world did Hasley go? I see how it is. So this was all just a bluff. And here I thought you had something to show for it. But it seems you're still far from the truth. Look, since we're at a dead end, why not consider a different track? Just like the trick as it transpired, the end result must have been utterly different from the magician's initial design. If only we knew how Halsey disappeared. Well, that would be nice, but the tunnel only has 3 exits, and none of them seem very likely. And it's not like this is a magic trick where you can just make a real live person disappear. You know, like you... Would have been the bottom? Excuse my interruption, dear opponents, but do you not see that the crowd is growing impatient? There is no greater sin in this opera house than an awkward delay in the performance.
अल्लाह If उसका the भारी हो defense गया is है. unable to make further effective arguments, we will move on to the next stage of the trial. Hold on a second. Linny was not in the tunnel at that moment, which gave our criminal ample time. The sound we heard may have come from a clash between the missing Halsey and the criminal. The deceased's name is Cowell, Linny's assistant. He would have been able to tamper with the equipment. The vase was not broken by chance. It was used to cover important evidence. The water. Paimon gets it! It all comes together if Halsey disappeared instead of being kidnapped. Lynette escaped from the water tank, vanishing gradually and leaving only clothes behind. If there's a similar method where a person could be transformed into water... Oh, just a moment, please. I do hope you know how preposterous you sound at the moment. How could a person ever be transformed into water? This is reality we're talking... Must we really? I should think that of anyone. Your friend Linny already knows this truth. Magic tricks are ultimately just illusions and misdirection. But Halsey's disappearance is very real. We're talking about two complete... Even so, I trust the Traveler's judgment. The truth must be out there somewhere. Perhaps some new line of reasoning may open if we try to gather all the focal points that don't make sense. Since Cal was the deceased, we haven't placed much attention on him. But given that we aren't making much progress with the case, it wouldn't hurt to have a look at his belongings, would it? People really do come up with all sorts of harebrained schemes when at the end of the rope. The way I see it, your suggestion that we broaden the scope of our investigation is nothing but a tactic for stalling the trial. Nevertheless, I believe that this is a reasonable request on the part of an attorney. Since the trial does indeed appear to be at an impasse, I believe that additional evidence may help us make more progress. Guards, please step into the lounge and examine the personal effects of the deceased. After some time, a guard returns with news. We are still examining the items, but we have already made critical progress that we feel must be shared with everyone post-haste. We discovered several test tubes of fluid within Cowell's baggage, each labeled separately. The notebook in his backpack claims that these fluids are... water from the primordial sea. The primordial sea? The note's contents also indicate that Cowell belonged to an organization that sells illegal drugs and that he had an accomplice. The notebook has many entries concerning safe usage of these fluids, in which the keyword dissolve appears many times. One of these tubes was labeled Opera Epiclese, along with yesterday's date. It is empty. The notes also state that these dissolution properties work exclusively on people from Fontaine. It's likely that Halsey was chosen as some sort of test subject. As such, we believe that the defense's hypothesis is, in fact, supported by sufficient evidence. You gotta be kidding! People dissolving into water? Could something so ridiculous actually be true? Wait a moment. This reminds me of a certain prophecy, but it's just a coincidence, isn't it? Huh. If people can become water, does that mean that the water tank's real use was as a means to hide water stains? And if Cowell was targeting that girl... Wait just a minute. Could that mean... You two, with me, quick! Demoiselle, wait! What about your partners? Let's go. Just... Order! Order! It is undeniable that further examination of the deceased's personal effects has yielded some surprising results. But we cannot yet verify the veracity of these clues. Still, let us assume that these clues are indeed authentic, albeit with the understanding that Ms. Halsey has yet to be found. Guards, please continue examining the items along these lines. Mr. Linny, it appears your hypothesis is supported by the evidence, so please continue speaking. Of course. Thank you, Your Honor. If we Nora uphold अपनी this support hypothesis, करने I believe that many of this case's seemingly unrelated clues can be connected together. Right! Like the metal heart! That one didn't make sense at all.
Let's think about this. Cowell's methods must have something to do with that water from the primordial sea. Now it seems like the hook rope was not meant for another magic trick, but was instead some form of triggering mechanism. The water from the primordial sea should already have been prepped before Halsey entered the magic box. The deceased's name is Cowell. The rope that held the water tank up was lit by the fireworks and snapped. As such, the focus here is on the water and not the tank. Lynette was in the magic box on stage the entire time. Did she have something to do with this? I remember there was something else within the inner layer of that box. The water from the primordial... Lynette was in the magic... The rope that held the water tank... The water from the The deceased's name is Cow. Now it seems like the hook... ये चलो. It's Ace Detective Paimon's turn! In the original plan, Cowell would tamper with the water tank rope, and the number selector securing his target. When the magic box containing Halsey was lowered, the metal hook would retract gradually and pierce the balloon at the top of the box. When the balloon attached to the box popped, the water from the primordial seed inside it would pour down and dissolve Halsey. Afterward, Cowell would enter the tunnel and break the flower vase to conceal the water inside the tunnel, with the remaining evidence being covered up by the water tank on stage. But he encountered something unexpected in the tunnel, and wound up being fatally hit by the same water tank he meant to use to cover his tracks. Huh. That does make sense. That actually links together a lot of the more confusing pieces of evidence. अपने पल्ले में नहीं सकता कोई. Oh dear, what do I do? Even I think they sound convincing now. Have I falsely accused an innocent person? What a humiliation. Now, it seems like the only point of contention remaining is the exact circumstances that led to Cal's death. His notes mentioned he had an accomplice who could be related to the situation. On that note, the guards have just contacted me indicating that they uncovered new evidence. I shall now invite him on stage to share it with us. Thank you, Your Honor. We were just inspecting the luggage of the other people involved in this case, and we found an identical sample of the water from the primordial sea among Linny's personal effects. What? That can't be. Oh, I see. Well, how wonderfully comedic to have your own counterattack only to come back and wound you. Does this not clear all doubt? My dear citizens, my loyal audience, allow me to present my reasoning and bring this performance to a swift Linny did not need to take part in the dissolution of the young woman at all. Indeed, he did leave the scene via the vent. Having made modifications to the props beforehand, his accomplice Cowell then caused Halsey to vanish using the water from the primordial sea. But upon his return, in cruel avarice, Linny desired sole credit and prepared to do away with his partner in crime. Ultimately, he knocked Cowell out, and the tool meant to cover the crime up also became a murder weapon. Now, as much as I regret having come to such a viciously straightforward conclusion, it does seem that the famed Fatui is quite the cold-blooded and ruthless. Am I right, Miss? We've used up all the evidence we collected. There's no way for us to make a rebuttal here. Is this the end of the road? पूरा ही पल्ला उसकी तरफ है भाई. Paimon can't think of anything
water as new evidence was too good a move. Why did this... I think we've all seen enough now, and we have ample witnesses to my flawless reasoning. I believe this is indeed the finale. एक और बचा Now स्टेप. then, my good, noble Chief Justice, should we... Excuse me, everyone, but I must interject. Miss, I must ask you not to shout and to respect the ongoing legal proceedings. Oh, come on. Don't be hasty. I have a good reason for interrupting, you know. Now, would anyone here like to take a little break from all this debate and see a little magic? I'll show you an amazing trick. One that can bring a young woman who has disappeared back in the flesh, right before your very eyes. Please, do the honors, Mr. Linny, if you would be so kind. What in the world is she saying? No offense, miss, but miracles like that are beyond my scope as a magician. Come on now, don't be silly. Magic is all about misdirection, isn't it? It often conceals the truth while presenting a fascinating illusion. But once everyone believes the illusion, can't magic reveal the truth to them once again? कोई तो कुछ किया वहाँ पे जाके. And wouldn't such a trick be the most marvelous finale to today's performance? Come on, Lenny and Lynette, give it another go. Don't worry. Spina di Rosula has made the necessary arrangements on your behalf. But as the magic makers and stars of the show, I think I should leave the final performance to you. I understand. And voila! यही मरी थी ना शॉर्ट में. Sorry for the interruption. Wait, isn't that Halsey? So the whole thing about people dissolving wasn't true after all? To be clear, I'm only here because this person told me that if I testified, the merit of doing so would lessen my sentence. I was hiding outside this room listening to the proceedings because I was afraid that I would be the one put on trial. I was just feeling happy that no one had noticed me. And then before I knew it, she caught me. That'll teach you to underestimate us three. Where should I begin? I'm sorry. I am the one who killed Cowell. I admit it. What? Why? Firstly, my name isn't Halsey. It's Lillian, and I'm originally from Mondstadt. I heard that Linny's show was gonna be a real thriller, but I missed the chance to buy a ticket, so I stole one. That's how I make a living. I steal stuff here and there. And I'd never been caught before. But I was noticed at the harbor a few days ago, and I barely got away. Linny was the one who caught me in the act. Hey, no wonder you look familiar. So you were the thief. Liddy even mentioned that you were pretty skilled. Well, and I thought that would have been the end of it, but then the number selector chose me. He even mentioned the Fortress of Meripede. That's a prison, isn't it? So you can imagine how shocked I was. I thought he was on to me for sure. So I played along with the show while looking for an opening to flee. But then I got water poured on me for no reason, and then someone jumped into the tunnel to nab me. I wasn't going to take that lying down, so I knocked him out and stuffed him into the box. There was nowhere to run from there, though, so I had to change my clothes and hide in a box containing performance costume. I slipped out after the first guard arrived at the scene and continued hiding inside the opera house. Can a person even hide in there? If they have practice hand at concealment, probably. But I swear I didn't know that the water tank would fall down. Really, I swear it. Had I known that, I wouldn't have put him in the magic box. I may be a thief, but I'm no killer. Well, that makes everything pretty clear now, doesn't it? It's the time to refute the Hydro-Archon's previous reason. This time, we need to tell the entire story from Lily-Ann's... कुछ भी एक डालो भाई. तो कौन सा डालूं? कोई भी नहीं है.
The strange sound wasn't from a fight. It was Liliane's attempt to... The flower... Liliane... And it's having been selected out of the blue, Liliane panicked. Her panic only intensified after she entered the tunnel and had water poured on her head. So she kicked the door open, producing the thud we all heard. Hearing the commotion, Cowl leapt into the tunnel, only to discover that Liliane had not dissolved. He did not know that Liliane was not from Fontaine, but was a thief who made her way in by stealing a ticket. Mistakenly believing that the water from the primordial sea needed time to take effect, he tried to force Liliane back into the box. The two broke the flower vase during the struggle, but Liliane came out on top, knocking Cowl out and putting him in the box. With no way of escaping, she changed her clothes and hid in the costume trunk until the performance ended. अल्लाह हमारा भारी होना चाहिए. She knew that she would have to go through guard inspection if she tried to leave afterward. So, she has been trapped in the opera house these last 2 days. She had already become desperately hungry by the time we were chatting over macarons. So, she swiped 2 of them right under our noses. Talk about a sneaky thief. At this point, all the events that happened in the tunnel have now come to light. Ah, so that's the whole story. Bravo! Bravo! अपना बल्ला भारी है. Now then, Lady Furina, do you wish to speak against the defense's statements? फरीना तो भाई बच्चों जैसे करती है, Please तो पता answer है. the question, Lady Furina. जबरदस्ती Also, किया. if I may add, the trial has not yet ended. As such, I request that the prosecution not leave the room before the proceedings have concluded. What? Are you reading my mind now? No, I have no further arguments. I admit defeat. But really, could you at least have left me with some dignity? Wow, look at that. She's like a deflated balloon now. If there are no objections, then as the Chief Justice of Fontaine, I shall once again repeat the full sequence of events. The actual perpetrator of the serial disappearances, Cowl, selected his next victim from the audience reservation list. With some modifications to the selector, he could ensure that the pre-selected young woman would be लड़कियां chosen. पकड़ने वाला था. To cover up any evidence while committing the deed, Cowl thought of allowing the water tank to fall, which would conceal the water left behind after the young woman was dissolved. He also tampered with the rope suspending the water tank, using the fireworks at the end of the performance to cause the tank to drop and hide. He poured the water from the primordial sea into a balloon during the preparation of the magic box and stuck it to the box's lid. Finally, he passed the prepared hook on a rope through the gap in the magic box's door when bringing the young woman to said box. When the magic trick officially began, the box containing the woman was lowered into the tunnel, tightening the hook rope and bursting the balloon containing the water. If all had gone to plan, the young woman would be dissolved at this time. However, Liliane was not from Fontaine, and thus fled the box with a loud noise. Realizing that there was trouble, Cowl entered the tunnel and met Liliane. Thinking that the waters had not yet taken effect, he decided to proceed. However, his opponent was more capable than he thought, and he was overcome, knocked unconscious, and placed into the magic box, and thus became his own final victim. Liliane, according to her own statements, then changed clothes and hid until the performance ended, before hiding in other parts of the opera house. As for Linny, he was in the underground structures within the opera house, and was thus ignorant of these happenings. From this reconstruction of events, we can conclude that Linny, the accused, is in fact innocent. Hooray, Linny and Lynette! Amazing! While there is much in Linny and Liliane's conduct that should still be investigated separately,
This case, at least, can be handed over to the Oratrice to make the final decision. As such, Linny and Lynette are officially declared not guilty. Great work, partners. Thank you all. Thank you so much. Let's not celebrate just yet. Next, I think we deserve an explanation, Guard Vaughn. How did you find the water from the primordial sea in Linny's baggage? Right! Your discovery caused me to make a serious mistake, you know. Or was that not a discovery, but false evidence that you dared to bring before this court? I suspect that the accomplice mentioned in Cowell's notes was not Linny, but you, yes? I'm sure you know what you must do to lessen your sentence. Speak quickly! Unless you want to earn yourself a one-way ticket to Coupon Town. I was just following orders. We were supposed to place blame for the serial disappearances onto Linny, and thus cause suspicion to fall on the Fatui. The higher-ups said this was the best opportunity to do so. And now that your plan has fallen through, and the secrets of the water have been revealed, you have become a liability to said higher-ups, yes? Therefore, you would be wise to tell everything you know, and seek the protection of the guards. Yes, I'll tell you everything I know. Our boss discovered that the water can cause people to dissolve. It can also be made into a potion, which when extremely diluted, can cause people to experience unforgettable exhilaration. We've been in this business for a while now, and have made decent more off it. The disappearances were also the boss's idea. I mean, this is the boss we're talking about. ये खुद पानी बन गया. He turned into water. And now he can no longer talk. Such ruthlessness. I shouldn't have expected any less of them. An outrageous act. All present, please submit to inspection immediately. However, nothing is found in the sea. Look up behind the open this up. So, we're just going back now? We're not needed here anymore. That's true, but... Traveler, Paimon! Please wait. Linny... I know you may not want to speak to me right now. Maybe you don't even want to look at me. But still, let me thank you again for defending me to the end. Even after you learned that I'm a member of the Fatui. I just didn't wish to see anyone be falsely accused. I guess. But regardless, I'd like the opportunity to set things straight. I didn't approach you with any ulterior motives or ill intent. I've spoken to you as myself, just plain Linny this entire time. As for why I'm a Fatus, it's because the goals of the House of the Hearth align with those of an orphan like me. That was how Father, who you might know as the Knave, approached recruiting us back then too. The Knave? The one who controls the House of the Hearth? She's your father? That's right. And since we're here, I was wondering, would you mind hearing a story? It's about my past. Hi, Pikachu. Back when our parents first died, Lynette and I were left wandering the streets. To survive, I took to surreptitiously observing an older street performer who did magic. It took me several days to figure out how he pulled off his amazing tricks. I took my sister through several streets until we found a crowded corner, and we began to perform magic tricks there. To my surprise, we proved to be pretty popular, and we could at least stop worrying about where our next meal would come from for a time. But I didn't want my sister to remain a street rat together with me forever. Before long, an aristocrat came to me and claimed that he wished to take us in after watching my performances. So you went from orphans to nobility just like that? That was how we felt at first too.
as if fate was on our side and we could say goodbye to those painful days. But I gradually discovered that while we were called foster children, he was really after my talent for magic tricks. He would constantly take me to all sorts of banquets to garner attention, which he would then use to expand his social circles. That doesn't seem too bad either. Better than roaming the streets at any rate. It took a while for me to realize just how dark his heart really was. After one particular performance at a banquet, I discovered that Lynette was not on the same return vehicle as me. I waited a long time after we returned home, but she did not come back. I went to that noble's bedroom and asked him about her whereabouts. The answer he gave me was, she caught the eye of the most eminent person at the banquet, so I sent her over as a gift. I mean, you'll be able to perform your magic regardless of who your assistant is, yes? Oh no. So he was gonna... But wouldn't Fontaine's laws deal with such people? As far as outsiders are concerned, this is a relationship akin to adoption or foster care, and they have their ways of escaping the eye of the law. So what happened? I managed after to that? ferret out the location of the mansion of that so-called eminent person, and hurried through the night. But by the time I leaped over the walls, avoided the guards, and made my way in, all I saw was the moonlit ground covered in blood, and the knave standing there in the darkness. So, she'd already taken care of that guy. That's right. She had rescued my sister before she could come to any harm, and had even Neto discovered and several girls hidden in a basement, all of them orphans. Father, I mean, the knave, might have seen something in me, and so she made me an offer. The House of the Hearth welcomes you, for your interests align with ours. Here, none will ever betray you. Indeed, betrayal shall never be permitted here. I was hesitant to trust her. I mean, I had just been betrayed by nobles, but she was also quick to destroy the noble who had taken us in at first, giving us back our freedom. Oh, so that's how the two of you joined the House of the Hearth. The knave is after Gnosis, isn't she? She has her own plans. She has gained permission from the Tsaritsa to first use the Gnosis's power once she obtains it. She plans to use it to find a way to break the prophecy and save Fontaine. So, she believes in that prophecy too? That's right. The whole House of the Hearth is currently working to combat that crisis. Today's case has also proven that people from Fontaine can indeed dissolve into some sort of water, thus further supporting the prophecy. Everyone at Hotel Bouffe d'été, including the knave, has their roots in Fontaine. And we will always defend our homeland. To us orphans, the only connection we have left to this world, apart from our family, is our homeland. So, from small deeds like distributing magic pockets to huge schemes like stealing a Gnosis, everything is aimed at dealing with that prophecy. It's all right. I understand. The only thing I can do is relate all this to you. I just hope you can understand that even as a member of the House, I have never stopped making my own decisions, and that I believe what I'm doing is right. If you should need anything at all in the future, feel free to find me. I understand. Bye, Linny! Leave the opera house. उसका कुर्सा वहाँ पे है। एक बार जाके देखो क्या क्या अपन लोग बैठ सकते हैं उसके कुर्सा पे। अरे यार इमेजिन नेवलेट खुद ऐसे चढ़ता हो। पकड़ नहीं रहा, इसको ग्रैब नहीं कर रहा ये। ट्रैवलर का स्किल यूज करके जा सकते हैं, बट छोड़ो उतना मेहनत कौन करो। तेरे को ट्रायल कर दूं क्या लाइफ हम साढ़े
hey there. What was with the disappearing act you pulled right as the trial ended? Were you looking for us, Navia? Well, this whole thing isn't exactly over, is it? I do feel that we're getting closer to solving the serial disappearances case, though. Don't you think so, too? Well, What's wrong, my dear partner? I was really one trying to defend Lenny. I wasn't necessarily looking into several different. Besides, are you sure we're the ones who can crack a case that's been cold for decades now? And given that there's new evidence from the trial, there should be a trail of breadcrumbs for the Hydro Archon's people to follow now. Ah. I see. Well, I won't lie. I'm a little shocked to hear that from you. But I suppose you are just travelers who have only arrived in Fontaine after all. Sorry. I might have been too presumptuous. Don't say that, Navia. Aw, and we were having so much fun investigating with you, too. It was like having new waters flowing into a stagnant mire, causing new hope to spring forth, and the reflection in the murk to become clearer. Well, sorry about that. I'm a bit prone to nostalgia. Don't mind me. Wait, shall we have a farewell meal? You know, to commemorate our time as partners? Huh? Do we really need to get that formal? Well, guess you really did treat us as partners, huh? Well, I'd just like to have a proper ending to every important memory. That way there are no regrets later. Anyway, it would just be a meal, so it shouldn't take up too much of your time. Let's go have that meal. You don't have to twist Paimon's arm. If Boss Navi is treating, count Paimon in! Oh, wonderful. In that case, why don't we return to the court of Fontaine and head to the Hotel de Boer? I believe we'll... All right, then. Let's have our farewell. Go to the workshop. Now 915 मीटर पहुंची बड़ी. I came here several times with my father when I was little, but stopped eating here as often after growing up. I hope the food here will be to your taste. Oh, don't worry. We haven't eaten at a hotel like this in a while. Paimon's getting excited already. Ah, in that case, I'll go order for us first. Please wait here a moment. देखो मेरे फोन में दिखा रहा है 2 की वॉचिंग, लैपटॉप पे दिखा रहा है 3 की वॉचिंग. मैं किस पे यकीन करूं? Ooh, everything looks so good. People in Fontaine sure know how to enjoy life. Why, of course. Go ahead, try whatever you like. If the food's good, I'll make a group reservation for the rest of Spina di Rosula next time. And if it's not? Well, then I'll still bring everyone. Albeit with only one dish per table. You, sure have your own way of doing things. Oh, we called this a farewell meal, but we could also treat it like a victory feast, right? We did just win that case after all. It was a pleasure working with you. It's certainly worth celebrating. Oh, true. Very true. In that case, boss, we'll have another 2 dishes. Huh? Paimon didn't mean that you had to order even more food. Speaking of cases, do you think that the mastermind behind the serial disappearances will get caught soon now that this has all happened? Well, we've certainly taken a big step forward, but I feel that's about it. We know that there's an organization that means to dissolve these young women, but we still don't know what they are really after. If it hadn't happened right in front of us, Paimon wouldn't have ever believed that a person could be dissolved like that. Right? Yet it was because this was such a preposterous notion that the investigation could never really move forward before. Ugh. If only that guy could have finished speaking! We were so close to hearing who was behind it. In such investigations, even the smallest step can seem like a yawning chasm if the trail of clues is cut off. To be honest,
I don't have high hopes for any follow-up that the authorities might conduct. It's not that I don't have faith in their ability. It's just that a different perspective is required in some matters. It's easy to guard against and deceive a single narrow perspective. A shift in thinking is required at such times in order to produce a breakthrough, which is exactly why the Spina di Rosula exist. Those highfalutin folk are not all-knowing. That's why we exist. To seep in... Seems Paimon thought things were simpler than they act. It's all right. Well, this was supposed to be a farewell meal, so I doubt you have further interest in... Let's talk about something else. Like, what are your future मुझे खुद नहीं plans? पता मेरे फ्यूचर प्लान क्या है, तेरे को क्या बताऊं? मेरे फ्यूचर प्लान पे 1000 सब्सक्राइबर YouTube पे करने का प्लान है, YouTube से पैसा कमाने का प्लान है, ऐसे सही याशी करने का प्लान है, इतना ही है. But we haven't had much quality. So we wanted to ask about the Hydra or Archon for more information. That's true. We didn't have a chance to speak to her after the trial ended. It didn't really seem like the right time or place to do it at. I see. So, your primary objective, which has been foiled so far, was to have a chat with the Hydroarch. I've heard that there's a long line of people waiting to meet Lady Furina. I suspect you'll be waiting for quite a while, considering that you missed your chance today. Yeah, we've heard that she's super popular here in Fontaine, and that it'll be tough getting any of her time. Well, would you consider some more, unique ways? Perhaps even methods of, let's say, questionable legality? Guess that's Spina di Rosula's boss for you. Chock full of sketchy ideas. Well, what did you have in mind? Well, one way would be to infiltrate a performance troupe at the Opera House, only to abandon your act at the play's climax and ask to speak to her after the performance. I'm sure Lady Furina would be eager to see the ending, and would agree in order to finish watching the play. Don't you think? Could you suggest something a little more practical? This plan seems pretty hard to pull off. We'd have to go learn... All right, here's another. Find a way to conceal yourselves under her bed. Then wake her up in the dead of night and demand answers. Don't let her go back to sleep until she answers all you... I can personally testify that this one works. When I'm sleepy, I'll do anything as long as I can finally get some sleep. That might work, but that's not really the problem. The problem is we don't want to get ourselves arrested. Valid point. I overlooked that part. I was just thinking about leveraging a person's desire for sleep. How can you overlook something like that? All right, no more joking around. Perhaps you could... Oh, I don't know. Cut the line when she's on a break. You did defeat her in court, clearing citizens of hers from false accusations. False accusations she had nearly upheld personally. I imagine that she feels quite ashamed about the whole thing. You mean that if we catch her while she's on a break, she might be too embarrassed to refuse? Oh, that does. Why don't we give it a try after this meal? You know, strike while the iron is hot and all. Huh? Paimon, did you drink my Fanta? Was this your drink? Sorry about that. Paimon wasn't really paying attention and the cup was right next to Paimon. No, it's fine. We're just about done here. Alright. Honestly, Paimon wouldn't recommend Fanta anyway. It tastes kind of salty and icky. My drink also tastes tasty. Is that so? Huh. Well, in that case, we'll have to blacklist the Fanta here then. If we're all finished eating, then I'll go pay. Yeah, we're stuffed. Thanks for the treat, Navia. Navia मीर तो है भाई. Oh, so full. Paimon can barely float anymore. You could try walking, you know. Nah, that would be so... normal. You know, like you. Okay. As for expenses this month, we're left with... Hey, Navia! What are you doing over there? Oh, nothing. It was just a meal, you know? Nothing the Spina di Rosula can't cover. Let's get ready
to try to meet the Hydro Archon again. So this is goodbye, huh? Well, if you do encounter any other trouble in Fontaine, you're always welcome to contact the Spina di Rosula. I'll give your requests the highest priority. In any case, I wish you smooth sailing. I'll see you again, See ya! Act 2 स्टार्ट होगा भाई अपने को वो क्रिएट होते हैं ना वो चाहिए भाई कब मिलेगा वो एक्ट 2 पे है तो सही ठीक है कंप्लीट अदर क्वेस्ट काम करो मैं आता हूँ ठीक है थोड़ा ब्रेक लेके आते 3 घंटा हो गया
So we are back. Nilbaji पे सबको सही आवाज क्या है? Go to Fountain Plaza in front of Opera House. यहाँ पे साथ में क्यों ना मैं आर्टिकिनो के फूल उखाड़ लूं। आ गए वो फूल, ये गए तो थे। नहीं यार, यहीं पे हुआ करते थे वो। हो रहे फूल दो हमको। ठीक है, उधर मार्कर रोड लग रहा है वो मेरे को। मार्कर रोड ही थोड़े बहुत यहाँ से मिल गए, यहाँ पे पड़े हैं। एक आधे ज्यादा दूर के। मार्कर रोड है वो। और कहाँ पे हो सकते हैं इसके फूल? ना, सामने थोड़े हैं, 5 होंगे, वो भी कलेक्ट कर लेंगे जाके। इतने ही थे। इस पहाड़ वहाड़ पे हो तो सकते हैं भाई, देखना पड़ेगा जाके। पर दूर दूर तक मेरे को दिख से नहीं रहे, समझ रहे हो? चांसेस कम है मतलब। मार्कर रोड ही भरे हुए भाई। नहीं मिल रहे, छोड़ो, जितने मिल गए उतने मिल गए। People around anymore. कुछ खाने Looks को like लाया that था मैं boat we जाके। took to Aranias might have been the last one. Vache? Looks like we're back here again. Huh? Traveler? Are you hearing voices again? And it is clear than it was during the day. That's kind of spooky. उसने हमको वो Are दिया you था sure ना we अपना don't want to come back in the morning? विजन दिया था, तब से आवाज आ रही है। Hey, why are you still walking towards it? There might be something nasty in the water. They are getting a little good. Huh? Hang on. Paimon can kind of hear a voice. It's calling for Vache, right? Hey, traveler, stop walking. Come on, wake up. Vache, are you my dear Vache? Oceanoid इसको मारने से सामान तो मिलता है। No, wait. You seem to be someone else. Do you know Vache? Do you know where my love is? Who are you? Wait. Who am I? I'm very sorry. I fear I do not know. My memories feel like they have been washed away like a flood. So many fragments dissolved amidst the tide, never to be recovered. How much have I lost? How many things that I once held dear while on land have I since forgotten? You were once a human? Yes, that is what I was once. But now, I am but the consciousness of one who has lost their form.
You lost your form. I do not know how I came to be like this either. I only vaguely remember being covered in light blue water, and then all grew dim. She be one of the girls who were disturbed. I also remember going to many places. I loved adventure, loved exploring places of peril. No matter where I went, Vacher would go with me. I knew how dearly he loved me, and I also loved him equally as much. But now, we can no longer go back. The pain of such parting, I never knew how heavy it could be. So you need me to find him. No, our reunion no longer has any meaning. There is no way for us to create any new memory. The thought of me gives him no succor. So let it lie forgotten beneath the waters. If you meet Vacher, tell him not to look for me. Tell him to move on. That is the only thing I still remember. I believe it will be hard for him to forget about you. Hello Sahil, welcome to the stream. Perhaps that is so. As I was submerged in the waters, losing consciousness, I saw Vacher above the surface. His eyes were filled with such sorrow. If only I could have comforted him. Told him that I did not suffer. Indeed, I had felt a great war. Is that what you call it? Dissolving. It was a state of neither fear nor frenzy, with only an endless peace. मैंने आज इतने सारे fragile resin use किए भाई, कुछ नहीं मिला. And only then sees how they have lived for so long in a world of endless want and anxiety. It seems that after the body is dissolved, I think I hear your companion. It's time for you to go, I think. Farewell then. I am glad that you were able to sense my presence. Remember, if you see... किस पे यूज किया? आर्लेकिनो बिल्ड करा और ये Alhaitham. What the fuck is that? Someone's down! Look out! Dear God, it's a whole army of Gardamex. Chlorand? इसका ट्रस्ट मेरे को गलत इशारे कर रहा है. Quick, now's our chance! रो रही है क्या नाम पे आप? I should thank you for lending us your sword there, Chlorand. But before I do so, could you explain how you managed to show up here? I followed you. It seemed to me that danger has followed you more closely as of late. I believe that following someone without their knowledge is actually called stalking, is it not? Mr. Callus's last wish was for me to ensure your safety, and I will not betray his trust. He would do the same. कोई अच्छा दो Were he मिले. alive today. Do एक तो not डेंड्रो speak of my डैमेज father. क्या बोल रहा हूँ भाई, डैमेज बोनस Sorry, और Demosa. सीआर I was का not strong सर्कुलेट. enough.
Thank you for your aid, Miss Clorand, but do keep an eye out for... Sorry, I did not इसका consider खत्म your हो तो मैं feelings. दिखाता हूँ. Whatever. What else do you know? How did you come to the conclusion that I'd be in grave danger? I doubt I know much more than you. But I believe that the जाओ mastermind behind the कुछ serial ना. disappearances is very कल powerful. रात को भी मैंने फार्म Your किया. performance tonight will almost certainly attract their सारे attention. दिखा दो एक बार इसका बकबक खत्म होना. I'm sure they've known about me. And what about these Gardamex? I बहुत thought सारे only पीस those मिले यार associated के. with the Maison Gardiennage could control them. लगभग मान ले None of these 50-60 mecha have पीस serial numbers. I स्ट्रॉन्ग was sure बॉक्स to में check डाल a दिया moment मैं. ago. अब वो They are सारे not वेस्ट the हुए. ones used by the authorities to enforce the law. I can only conclude that some powerful or wealthy party must have obtained them via illegal means, deploying them as a private force of sorts. What? Your point being that they're out of Spina di Rosula's league, then? Yes. Be careful, and do not act rashly. I will continue investigating no matter what. We will bring the truth to light. That's... Regardless, thank you for your help today, Clorand. But if you get any ideas... I do not think that they'll strike again anytime soon. So I shall stop following you. Good day, all. ये क्या है? बॉडीगार्ड है क्या? Right. I suppose that's the best news we've gotten today. Demoiselle, I believe that Miss Clorand was being sincere with you. If we tried... I know, I just... She's... प्राप्त किया. स्ट्रॉन्ग बॉक्स है ना किया बे 50-60 पीस किया कुछ भी नहीं मिला. Oh, thank goodness! Paimon thought we were done for! Those Gardamex came out of nowhere while you were unconscious. Oh, and there was that champion duelist named Clorand who came out to save us too! Neuvillette We got से lucky there. Paimon probably couldn't have fought them off otherwise. गॉबलेट कौन सा अच्छा है? एचपी का, अटैक का या फिर क्या बोलते हैं? हाइड्रो डैमेज बोनस. Oh, come now. Forget all that polite talk. That wasn't really a farewell meal we had back there. Not as such. We're still partners. There's no need to thank me. It will take 50 years for me to match Demoiselle's magnanimity. If it were me, I would have joined the Spina di Rosula on account of her हाइड्रो डैमेज goodwill साला long वही नहीं मिला ago. भाई. All right, you two. That's enough. Actually, Navia, how did you know that we were in danger? Well, to be honest, you're the one who tipped us off, Paimon. Huh? Really? Paimon contributed somehow? Who? Yes. All thanks to you grabbing my drink by mistake. After we parted ways, I was on the way back to one of our bases when I suddenly thought of what you said. That the Fanta tasted kind of salty वो है and शायद. icky. What do you mean? Fanta only comes in sweet flavors. So how could it have tasted salty? The color of the drink, if I recall, had... So the Fanta had been spiked with water from the primordial sea? Yes. So if you hadn't drunk that cup for me... Spina di Rosula is preparing the grandest of awards for you as we speak for saving the boss. Huh. Really? Otherwise, we would have been fortunate to Paimon. Neither of us are from I sent Fontaine. people to Hotel de Boer to investigate. HP भी use कर ले. Whoever did this left जब no तक हाइड्रो trace at वही all. use कर रहा है. HP That's 32,000 हो when I गया figured HP out that you might be in 32,000. danger and hurried here. What? Why would they go after... Well, you did foil a plan. The goblet Speaking of में which, did anything एक तो मेरे को strange हाइड्रो का happen when you चाहिए. drank the primordial एक seawater? इलेक्ट्रो का चाहिए. इलेक्ट्रो के लिए Well, मैं it बहुत can't be ट्राई a किया अभी मिल ही नहीं coincidence रहा. that the Oh, and this time Paimon heard it too. Does सबसे that बेकार mean लक the है हमारा primordial seawater raises आर्लेकिनो में. someone's उसके बाद sensitivity to hydro अलाइथम. when it's used on people who are not from... That doesn't sound अलाइथम like too काम much चल of a जाएगा bad अभी. thing, to be honest. आर्लेकिनो का सेट ही नहीं मिल रहा. जो दूसरा वाला है ना उसके साथ में वही मिले जा रहा है बस. New intel? While you were out cold? Well, let's hear it, shall we? Oh, that is important. Vache. That name doesn't ring a bell. I suppose he hasn't Vache. stepped forward as a witness in court lately. Since he saw that young woman dissolve, he was at least at the but he never gave testimony or any information regarding people dissolving in the primordial seawater. Peace still Yes, alive. thank you. This is very important information indeed. Oh, you mean you'll help us investigate? Well, you did say that our farewell meal didn't really count. That means we're still partners, right? And besides, we're in this now whether we like it or not.
You're not gonna let those people... Demoiselle, do try not to look quite... You talk too much. Well, in that case, let's head back to one of our... We also have some plans to go over, and hopefully we can deepen our bonds as part... Don't worry, you two. ठीक है अगर 2-3 टाइम डोमेन करने पे वो आर्टिफैक्ट नहीं आ रहा तो वो डोमेन फार्म नहीं करना चाहिए कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स लगा रहे हो भाई सबसे पहले बैग में इधर खाली 20 बचे 45 थे या 50 नहीं 45 था मान ले 20 हो गया मतलब 25 मैंने ये यूज किया बाकी रेजिन वो सब और मेरे को मिला गया फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अलाइथम आर्टिफैक्ट ये मिला देख ये वाला पीस अच्छा लगा मेरे को डेंड्रो डैमेज बोनस है उसके साथ में सर्कुलेट मिल गया इसका गिल्डेड का ही कभी कभी एक टाइप का ही आर्टिफैक्ट ड्रॉप होते जाते हैं वही आवाज में ये 2 पीस अच्छे ठीक है सीआर और डेंड्रो उसके बाद ईएम का गॉबलेट मैंने मीको का जो था वो इस पे लगा दिया है अटैक का फेदर नॉर्मल और ये फ्लावर अलाइथम के ये पीसेस है इसमें ये वाला मिल गया डेंड्रो डैमेज बोनस उसके बाद याओ पे तो मैंने कुछ चेंज किया है नहीं वही नॉर्मल पर है एचपी का हीलिंग बोनस एचपी अटैक और एचपी सारे अपग्रेडेड है भी नहीं अभी फिर भी 23,000 हो गया नोवेलेट में कहा गया इसके आर्टिफैक्ट ठीक है ये फ्लावर इसका फेदर नॉर्मल है सारी चीजें फिर ये एचपी का सैंड लगा रखा है इधर भी एचपी का लगा दिया क्योंकि बोनस वाला मिला नहीं अभी के लिए और क्रिट डैमेज का सर्कुलेट है इतना ही फार्म हुआ है और लेकिन बेकार है इस पे कुछ नहीं मिला ये पायरो सीआर अटैक एचपी ये सब बेकार है ये फार्म ही नहीं हुई आर्टिफैक्ट पे फोकस मत कर वही है अलाइथम बिल्ड हो गया बाकी बाढ़ में ये तो क्या ही बिल्ड हुआ है इसको अपग्रेड करना बचा है सामान ही नहीं अपग्रेड करने को फ्लावर और फेदर अपग्रेड करना बचा है लेवल अप कर सबसे पहले लेवल अप का सामान है देखने का सामान तो है जैसे नूवी का आर्टिफैक्ट अपना देख सामान तो है ये चीज चाहिए इसके लिए स्टारफिश चाहिए अलाइथम के लिए ये वाला पत्थर है आर्लकीनो के लिए उसके रोज वेपन एंड टैलेंट यही हाल है इनका तो इसमें चाहिए होगा चिली चाहिए ये चीज आराम से हो जाएगा रोज देखिए कुछ रोज तो यहाँ पर है पानी के बाजू में वो तो कलेक्ट कर लिया मैं बाकी कहाँ पे क्या मालूम चलने में दिक्कत हो रही है क्या बूढ़े मीको को भूरे का साग टैलेंट देख टैलेंट कर रखा है ना अपग्रेड ये देख 7 पे है बाकी 5 है ये चीज चाहिए इसका 6 लेवल के हिसाब से तो मैक्स है मेन वाला ये अभी जस्ट निकला है इसको छोड़ दे ये सब करना है प्रीमो भी फार्म करना है बे जोंगली के लिए 540 है
बार और खाया आ जाता है, ठीक है। अब तो इन सामानों की जरूरत भी नहीं है अपने को। किस चीज का ये अटैक? ये चीज इतनी महंगी है ना भाई। 10,000 रुपए में 12,000, मतलब 90 टाइम खोलने के लिए 10,000। कुछ ज्यादा ही महंगा है। 1-2 हजार हो तो ठीक भी है। ये 500 का बेच रहे हैं। इनारा कौन है बे? कोई रिक्वेस्ट भेजता है ना, चैट में लिख दिया करो भाई। हेलो प्रयास, अगर मैं सही स्पेल कर रहा हूँ तो। नहीं कर रहा हूँ तो क्या ही हो सकता है। टेल मी। तो इनारा है कौन, पता नहीं। एक काम करते हैं, सुमेरो जाएंगे, वहां पे वो पत्थर देख के आएंगे उस गुफा में जाके। या फिर लैपटॉप पे सर्च करो क्या पत्थर के लोकेशन, और वो देख के कलेक्ट कर लो। ये भी कर सकते हैं। अकाउंट रिव्यू कर सकते हैं, पर हमारा रिव्यू सही होगा नहीं होगा वो हमको खुद नहीं पता। वैसे लड़ने क्यों आया? यहाँ पे है थोड़ा पत्थर। ए, तो ये भी उखाड़ ले, नहीं उखाड़ना चाहिए। एट 46, 545, 585। मुसाशी। 20,000 ठीक है। अटैक 1600-1700 होना चाहिए, 1700 के आसपास। 61, 68। एनर्जी रिचार्ज कुछ ज्यादा ही है, 259। मौजा ही आगे देख के। इलेक्ट्रो डैमेज बोनस नहीं है? कोई बात नहीं यार, बढ़िया है। वेपन कैच दे रखा है फ्री वाला। R5 है, लेवल 99। कॉन्स्टलेशन 1। टैलेंट 1, 8, 10। बहुत ज्यादा इग्नोर नहीं किया तूने फर्स्ट वाले को, एक लेवल टैलेंट। और फिर एम्बलम ऑफ सेवरल फेथ का तूने सेट किया है, ठीक है। इसमें होता क्या, एनर्जी रिचार्ज प्लस 20% फर्स्ट लेवल पे, सेकंड पे इंक्रीजेस एलिमेंटल बर्स्ट डैमेज बाय 25%। इसका बर्स्ट ही मेन है, ठीक है। मैक्सिमम ऑफ 75% बोनस कैन बी ऑब्टेन्ड। सर्कुलेट क्रिट डैमेज का या रेट पे डैमेज 19%, नाइस। झोला अटैक परसेंट का है। क्रिट डैमेज है इसमें भी 30%, पता नहीं कहाँ से लाते हो तुम लोग इतना। ER का सैंड 20 और 10। फेदर 18 और 7, ठीक है ठीक है। फ्लावर बचाना 28 और 7। अरे बिस्किट का पैकेट उड़ गया मेरे। नाइस। यार तो लड़कियों का फेवरेट। कितना, 19,000? ऑलमोस्ट 19। प्लस 1800 का अटैक है, ठीक है। डिफेंस भी है 800-900। 75-240, नाइस। बढ़िया स्प्लिट है। बोनस वाला गॉबलेट लगाया है, ठीक है।
5 स्टार का जीरो रखा है वेपन, बहुत बढ़िया भाई, बहुत पैसे आ रहे हैं। C1 C0 शॉट, बड़ी सारी चीजें क्या है, ग्लैडिएटर सेट, ठीक है। सैंड से अटैक का गॉबलेट बोनस का ही है। डैमेज का होना चाहिए, डैमेज का है। ये वाला एवरेज सेट है भाई, 8% क्रिट रेट, ये इंसान देख के बर्दाश्त कर सकता है। 30% लौंडे कहाँ से लाते हैं, इतना किसका लग चल रहा है भाई। जैसे ये देख 27%, थोड़ी तारीफ करो अगले पल 27% दिख जाएगा। फेदर पे 18 और 5 नहीं 10, ठीक है। ये अपना वाला बंदा जो अपन भी निकाले, 19 और 1200, 300 का ही है। मैं बोनस का गॉबलेट भी लगा रखा है, 222 और 70, नाइस। कौन सा आर्टिफैक्ट लगा रहे हो? ओरिजिनल वेपन है ना ये, सिग्नेचर वेपन। R1 का 88%, नाइस। स्नाइपर 90, सारे C1 मतलब C0 या C1 जो भी बोलते हो वही है। गिल्डेड एज यूजुअल। CR मैंने भी ये डाला ना। देख 30% कहाँ से आता है भाई बंदों का, इतना कितना लक चल रहा है भाई कि 3-4 वहां पे ही घुस गए। ये एवरेज है, 6 और 9 ये चलेगा, क्योंकि इसमें डिफेंस भरा है शायद एक बार। सैंड्स 21 डैमेज, EM का सैंड है, ठीक है। गॉबलेट डेंड्रो का ही होगा, और इस डेंड्रो डैमेज बोनस पे स्केल करता है ना, इसके लिए यहाँ पे 70%। वो में सेशन लगा रखा, 17,800 और 1,000, ठीक। डैमेज बोनस है, ठीक है। 61 137, 4 स्टार का वेपन है, ठीक है। किफायती R5 है। एक सेकंड, डिफेंस पे स्केल करना है क्या? C0 हस्क ऑफ ऑपलेंटेड फील्ड्स, CR का सबप्लेट 17% चलेगा मेरे को। फेदर 26%, फिर से इस पे CR इंटू 2 प्लस CD इज इक्वल टू क्रिट वैल्यू। डिफेंस का सैंड, ठीक है। एवरेज सैंड है देख, 10-11% सही है। 30% कहाँ से ला रहे लौंडे, 30-40%। जीरो डैमेज, किसी पे वो नहीं है क्या बे? एक वो बहुत पुराना कैरेक्टर है एलॉय करके, वो मैं नहीं देखा अभी तक किसी के अकाउंट पे। बाकी 4 स्टार्स है। बेनेट का EM देखते हुए जाएंगे। Benny's adventure team, assemble! EM नहीं, ER 274, नाइस। Traveling to other worlds is all that anyone seems to be writing about these days. अपने बेनी का कितना हो गया यार? Benny's adventure team. भाई वो पत्थर की लोकेशन कहाँ है? वे एक पत्थर नहीं दिखता मेरे को। Right here, right now. Emerge. पत्थर है ना, ये कुछ और ही है। पत्थर 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 दो मेरे को। इस कोने में भी नहीं है, सामने पड़े है शायद। थैंक्स बड़ी। अरे कोई बात नहीं भाई, सच बताओ मेरे को इस गेम का उतना पता भी नहीं, बस मैं ऐसे ही रिव्यू कर रहा हूँ मजे मजे के लिए।
क्या मतलब सब्सक्राइबर चेज कर यार कर घटना वाला उठा ना भाई वो और आगे चल। वो फिनिक्स भी मेरे को कंफ्यूज होकर देख रहा है, बंदा कर क्या रहा है। सस्ते आर्टिफैक्ट भी चलेंगे भाई, बस निकल के जाओ। फुरीना पुल नहीं, शायद नहीं। मेरे पास है कहाँ पे, उसके लिए कुछ जमा ही नहीं है, खाली 3 है मेरे पे, कहाँ से निकलेगी। मेरे को मेन चाहिए जोंगली। बड़ा है क्या नीचे? नहीं बड़ा है। फुरीना मेरे को पता नहीं, कुछ खास भी नहीं लगती है, एवरेज लगती है। नेवलेट है मेरे पास, उसको निकालने का मतलब नहीं लग रहा है। इस कोने में है क्या नीचे? हाँ इतने ही मिले, कितना हुआ है? Wait. 7 और 20, 13 No. मोर। खरीद नहीं सकता क्या इसको? Whatever. किस्मत ही खराब है, लैपटॉप क्लिक करो। क्या नाम है उस पत्थर का? सैंड ग्रीस प्यूपा। सैंड ग्रीस प्यूपा लोकेशन जेंशन। एंटर। ऑल 74 सैंड ग्रीस प्यूपा लोकेशन। ठीक है, कितने मिनट का है? 8 Wait. मिनट। Huh? No. इसी को देखते हैं। Whatever. प्रचार क्यों आ जाता है भाई? 60 पे मिलेगा वैसे कुछ। Most humans could have the entirety of their fleeting lives chronicled in but a few short lines. Their stories really make for terribly dull reading. आएगा भी तो मैं 20 खत्म कर देता हूँ। अगला है। सर क्वालिटी बढ़ाओ, 360p चलेगा। टनल के इधर का मत दिखा भाई, टनल के इधर का कर लिया हूँ। Personally, I think the idea of things staying the same forever is quite beautiful. वाडी अल मजू पता नहीं कौन सी जगह। इधर पे है, ठीक है, इस कोने पे है, ये वाली जगह। इधर मिलेंगे थोड़े बहुत। इधर पे आना है, राइट के साथ फ्लाई करके ऊपर जाना है, राइट साइड उड़ के, और यहाँ साइड में थोड़े पड़ेगा। कौन उड़ रहा है भाई सामने? Right here, right now. Emerge. रोड भी रहते मेरे को से क्यों लड़ना पड़ता है? ना लग जाओ भाई।
दो ही मिले क्या? एक सेकंड, कितने मिलने चाहिए यहाँ पे? तो यहाँ बहुत होने चाहिए, बहुत ज्यादा मिलने चाहिए। साउंड कुछ ज्यादा ही ब्लर कर दे रहा है, कुछ नहीं दिखता। इन्वेस्टिगेट पर पैसे मिलेंगे। और होने चाहिए उधर जहाँ पे वो आ रहा है कीड़ा। कोई दिमाग खराब कर रखा है। An oversight on my part. Justice is कौन और कहाँ से? blindsided. पॉज कर एक सेकंड में लोकेशन देखो। इस बंदे को 5 मिल गए इधर। ये बंदा इधर ही घूम रहा है जिधर मैं हूँ, ठीक है? He took from here and यहाँ के राइट वाले एरिया से। ये रोबोट में Right now. Right here. Hopefully not, क्योंकि वो लेजर मार रहा है। You're up. Right now. Emerge. कुछ ज्यादा ही बड़ा है भाई। Silence. मर गया ना साले, गायब हो गया। आगे कहाँ पे मार्क लगाया उसने? टेलीपोर्टर के जस्ट साइड में, ठीक है? यहाँ पे ही तो हूँ मैं। ये कौन है बे? कौन है ये? हम तो नहीं समझ पाते जी। Right here. Right now. Right here. Don't be scared. Bow your head. Is that all? Right now. Right here. Hey, go away. Stay put. Settle down. अपना साले मर जाएगा तो कुछ गिराएगा भी नहीं। कैसा है ये? केओस डिवाइस नहीं की तरह केओस डिवाइस। ये लोकेशन में मैं सिर्फ अंधा हो रहा हूँ और कुछ नहीं। ठीक है, सो दिस इज द लोकेशन। इधर ये जो ऊपर वाला लाइन का स्टार्टिंग है उधर एक होना चाहिए। इस कोने में होनी चाहिए उसके हिसाब से। अबे नहीं, एंस्ट्रॉन्ग गायब हो गया एकदम से। Emerge. Right now. लगने वाला है ही नहीं। कौन है भाई ये अंधा लौड़ा? कौन है ये?
माँ की चूता ना सामने लौड़े। Is that all? इधर पे होना चाहिए, इधर झाड़ कुछ नहीं है। ठीक है, इधर होना चाहिए था, तो कुछ नहीं। यहाँ पे और यहाँ से राइट में होना चाहिए फिर। ठीक, कुत्ते का बच्चा ड्रैगन। एक भी नहीं है भाई, कोई और लोकेशन चलो, यहाँ पे मैं अंधा हो रहा हूँ। उसे लोकेशन चल, द सैंड्स ऑफ 3 कैनल्स करके है। टेलीपोर्टर ही खुला नहीं है, कोई और लोकेशन। क्वासर करके कोई जगह है यहाँ, हमें नहीं पता, यहाँ का भी नहीं खुला लोकेशन। आगे चलो। क्वासर के नीचे द सैंड। एक टेलीपोर्टर है तो सही, ठीक है, द सैंड तक मैं भाग के जा सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से भागना चालू करूँ, सैंड तक भागना है मेरे को, ठीक है, इधर तक जाना है मेरे को। द सैंड जहाँ तक लिखा है ना, क्या यही जगह है वो? पैसेज ऑफ गोल्स, ठीक है। मेरे को जाना है इधर, इसको नेविगेट लगाओ। बाजू में ही जाना उधर। वहां पे देखो, बाजू में देखो। देखो उसके बाद ये कहाँ जाएगा। इसके लेफ्ट में ही है एक टनल टाइप रहेगा, उधर पूरा नीचे कूद जाएगा ये, और उधर इसको मिल रहे 2। मैं भी भोसड़ी के उधर जा रहा था, उधर का मार्क लगाना, यहाँ क्यों भाग रहा है? टनल के नीचे कूदना और हमको 2 मिल जाएंगे। ठीक, Traveling to other worlds is all that anyone seems to be writing about these days. Goodness knows what they find so disappointing about their own world. उधर पहाड़ के ऊपर है करके एक जगह। इससे नीचे ही होगा। Emerge. तुम इससे मर जाओ। ये रहे। जहाँ पे ये है वहाँ पे पता नहीं है कुत्ते का बच्चा ड्रैगन क्यों है। यार ये लोग वेट कर, इसने इधर से लूटा, फिर आगे एक साइड में पेड़ है, उसके इधर इसको 3 मिल गया। जहाँ से आए थे उधर ही राइट साइड में एक पेड़ है, शायद वही वाला, उसके इधर 3 है। तो एक भी नहीं दिख रहा।
कोई बात नहीं, पीछे वाला पेड़ देख लेते हैं। तीन की जगह मेरे को ये दो टट्टी नजर आ रही है। कोई बात नहीं, एक और पेड़ है पीछे, असलियत में उसमें है नहीं। भाई यार, मतलब जिसमें पत्थर स्पॉन हो रहे हैं मेरे, उस वाले में ये नॉर्मल वाले बॉक्स सेट वाले और देखना। यहाँ पे तीन है, टल कितना काफी है। और Wait. Huh? No. इतना ले लिया मेरे भाई, आगे चलो। Whatever. कैनवीट कैंपस करके जगह है, कैनवीट कैंपस सिटी टाइप सा बना हुआ है, उसके पास में है ये रहा। ठीक है, इधर पे चलो फिर। यहाँ से आगे जाना है, खाई टाइप होगा, उससे कूद जाना है। उसके बाद पिलर चढ़ के ऊपर जाओगे, स्ट्रेट जाओगे, स्ट्रेट बढ़ते जाओगे। पहले मैं इतना फॉलो कर लूँ तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी मेरे भाई। फिर जाना है, इसको सेलेक्ट करना है, फिर ऊपर जाना है और स्ट्रेट बढ़ते जाना है। बढ़ते चलो स्ट्रेट। क्या अटक गया? इसको मार दो, क्योंकि बाद में Right इरिटेट now. करेगा, उससे पहले मार दो। Right here. You, Glaze! You... Flicker. Well now. नाउ फॉलो। एक लाइन सा बना होगा मैप में, ये रहा। ये लाइन के साइड को जाना है, ठीक है। वो भी भाग रहा, मैं भी भाग रहा हूँ। वो रे सामने दिख गए। अबे यार, ये गधे का बच्चा, ड्रैगन क्यों है भाई मेरी जिंदगी में? मेरा हो गया मेरे साथ, मैं और फॉलो नहीं कर रहा। आप वीडियो कृपया अपना बंद कर लीजिए। Wait. अब भाग जाइए। Huh? No. बीच हो गए मेरे साथ। Whatever. इसका बना लो अपडेट। एक बुक कम यूज कर, लेवल 59। ठीक है, बहुत बढ़िया। मीको का फोटो देखा, जेंशिन पे पोस्ट किया था। जेंशिन पे पोस्ट किया था Wait. Huh? क्या इंस्टाग्राम पे उनके? No. Whatever. या फिर तूने अपने डिस्कॉर्ड पे किया था? देख क्या था तू, कौन सी बड़ी बात। डिस्कॉर्ड, बैक, साहिल, जेंशिन। फोटो नजर तो आ नहीं रहा है मेरे को। पता नहीं चैट क्यों नहीं रिफ्रेश कर रहा। Wait. लेवल अप नहीं, लेवल अप नहीं। क्या करना था मेरे को? अभी याद था, अभी भूल रहा हूँ। क्रेट खोलना था।
इसका सिंगल 4 स्टार भी नहीं आता बे। 3 स्टार पकड़ा देंगे घटिया जो किसी को नीचे है। कूल स्टील, क्या कूल है इसमें? Wait. कितना इसको चाहिए डेवलप करने के लिए? Wait. 125 एक्सपीरियंस। इसका लेवल अप मैं भी करवा देता हूँ चलो। Right now, right here, right now. Don't be scared. Scatter! Here you are. 4700 का डैमेज। ठीक है, और अगर मैं इसको खेलते ये तो हो जाएगा लेवल। सामने 3 है, 3 दे देंगे, 4 है। ये 4 काफी रहना। एक ट्रेड हो जाएगा। Right here. You, Glay, you're up. Right now. Emerge. Right जब here. इन्फ्यूज होके आता है ना तब बढ़िया डैमेज करता है, मैं देखता हूँ। Here you are. Defract! 1800 3000 का डैमेज तो करता है, ठीक है। आर्टिफैक्ट भी उतना अच्छे से करी नहीं किया हूँ देखिए। तो चीज़ें टैलेंट में भी काम आएंगी जो फार्म करना। Emerge. Right here. लेवल 60 हो गया। सामान उठा ले भाई, सामान उठा ले, ऐसे नहीं छोड़ते। ठीक, पेट खोल दे जाके। उससे पहले ये चीजें निकाल ले, गाजर मूली जो मैंने निकाल ले। Don't let any of it roll away now. अब मेरे को चाहिए 30 है, जो कि इनको असंभव सा लग रहा है। 3 ग्रीन वाले, 8 ये चीज, 16 ये हो जाएगा। देखो ये चीज आराम से हो जाएगा। Wait. उसके बाद ये जो चाहिए ना ये मुश्किल है। ये भी हो जाएगा एक्चुअली। Whatever. 8 मतलब 4 बार मारना है, 40 लेगा, 160 कल हो जाएगा। बचा ये पत्थर, पत्थर इस जन्म नहीं होगा। 3 ये भी हो जाएंगे। टैलेंट का क्या हाल है, कुछ कर सकते हैं टैलेंट में? 30 अपन को नॉर्मल वाले की जरूरत नहीं है, पूरा कन्वर्ट कर देंगे जाके। इनाज़ुमा चलो और कन्वर्ट कर दो। ये क्या है? Geoculus resonance stone. Resonance stone. The stone can be used in a way to research for nearby geocolloid. This stone mysterious quality of geostatus. ये मेरे पास है ना भाई, मैंने सारे अब यूज कर लिए, मेरे हो गया मैक्स। एक बना ले, जितने बने ये सारे बना दो। आर्लेकिनो के लिए ये वाली की जरूरत है, बना बना। टोटल में इंटरनेट हो रहा है। बहुत बुरा हो रहा है इंटरनेट। 5G है शायद, ठीक है, एयरटेल 5G और फिर इंटरनेट हो रहा है। बहुत बुरा वो भी।
एक दिन एयरटेल का सही से नहीं चला, एक दिन। हाँ, घटिया एक्सपीरियंस रहा है ना एयरटेल के साथ। फास्टेस्ट नेटवर्क एक्सपीरियंस बोल रहे हैं ना लोग प्रचार में, ये है फास्टेस्ट। 50 सेकंड पहले टाइप क्यों हुआ है? हाँ ये तो जियो के भी हम बना सकते थोड़े बहुत। निको के लिए मेरे को ये वाली चीज चाहिए। दो बनेंगे, दो बना दो। फिर ये जितने हो सके बनाओ। उससे 3 और ये बना दे। ये कौन सा है? विंड का है। मेरे को चाहिए ये चीज, तो चाहिए ही चाहिए। 12 बना दे। 4 का बोनस, नाइस। और बना दे। ये वाला हम बनाते हैं थोड़ी देर में। कॉल बना दो। ये चीज चाहिए मेरे को, ठीक। जितने बन सके उतने बना दे। 30, 10 और 2 बोनस मिल गया। इन सब का क्या हाल है? 6, 1 की कमी है निको के लिए। ये चीज एक चाहिए। और 48 गैनोडर्मा, 48। उसके साथ में 22 ये। इसकी उतनी टेंशन नहीं है, बस 48 गैनोडर्मा। कुछ अपग्रेड करने लायक कंडीशन 9 चाहिए, वो तो अभी है नहीं। ये चीज अपग्रेड कर दो। लेवल 3, लेवल 4। आर्ले को क्या चाहिए? आर्ले के भी सामान नहीं है। थोड़ा बहुत लाइन आगे गया होगा, ठीक। लेवल के कारण ही नीचे है। टैलेंट भी इससे कम है। वेपन अच्छी नहीं है भाई, कुछ चीजों पे वेपन इतना बेकार दे रखे हैं ना मैंने। इसका वेपन जैसे कि आइडेंटिटी फ्री टू प्ले वाला। तीनों पे भी ये है टैसल। सिर्फ मीको का वेपन बढ़िया है भाई, 50% क्रिट डैमेज, मजा ही आ जाए। It's right up ahead, but let's make sure we weren't followed first. I've been keeping watch, demoiselle. I haven't spotted anyone suspicious thus far. Huh, very good. But let's not let our guard down for now. I shall find rooms for our respected guests. Thank you, Malus. Now, let's continue, traveler. Go to the accommodation area. कहाँ छुपते रह रहे भाई अपन?
कितना मोरा 200? वे टनल टाइप बनाया है तुमने इसमें। बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे इतने नीचे। Talk to me, let's look at the paint. Head of the stair. So, this is your base? It's not quite what Paimon imagined. Your accommodations have been arranged. Under the present circumstances, I can confidently say it's the best we have. Thank you. Well, our funds have been a little tight lately. After all, we don't allow illegal or unethical profiteering. In fact, our funds often come from citizenry who support us. Seems like it's tough times for everyone. But if you have the support of the people, that does sound like it's worth it. To be honest, our financial situation was a lot better back when my father was in charge a few years ago. I'm afraid I'm not quite his equal. Your father... he was the previous boss of Spina di Rosula, right? Demoiselle, if you'll allow me to explain. No. I'll explain it myself. I suppose I couldn't run from this topic forever. And as partners, this is something I hope they can understand. My father's name is Callus. Yes, the same one they call Callus the Unfaithful in the streets. 3 years ago, he was accused of murdering his own friend. But he chose a duel to defend his honor instead of standing trial. He died in the duelist's ring. Oh no. But I do not believe my father was a murderer. I'm sure he was set up. At the time, I believed that if he only stood trial and was duly investigated, something amiss would crop up and prove his innocence. But strangely, he not only requested the duel himself, but rumor has it that even after being seriously injured, to the point where he could be deemed as having lost the duel, he refused to surrender, determined to die in the arena. 3 years later, I still don't understand why he did that. How could he protect his honor if he's dead? If anything, he gave up his chance to defend himself. The closest piece of info I have is that my father had been investigating the serial disappearances case at the time of his death. Ah, so that's why you're so determined to get to the bottom of that case. That's right. I've also tried to investigate the murder my father was implicated in, but I haven't found a single new clue in my countless reviews of the investigation records. However, I believe that if the murder case is related to those behind the disappearances, they must know something. I must know what really happened. Was my father coerced? Framed? Even if he really did kill his friend, I must get to the truth. If only he'd been more open with me when he was still alive. He even hid the fact that my mother died due to complications when giving birth to me. And now, here I am investigating his death. You really are a handful, aren't you, Papa? For the sake of your family. You know you are quite alike in that Demoiselle, regard. please, if there is anything I can do, anything at all. I also will never believe that Master Callus murdered anyone. There are none whom I respect more than the two of you, Demoiselle. Master Callus did so much good in life, yet all it took was one murder case for him to be dubbed Callus the Unfaithful.
Even our supporters decreased greatly due to that incident, hence our strained finances at present. Wait, if Callus was such a good man, wouldn't people at least be a little suspicious when he was accused? No. Perhaps people just revel in that kind of drama. It's not something exclusive to people from Fontaine, really. Everyone's like that. People love watching the evil turn over a new leaf, but they also enjoy watching good people fall into an abyss from one slip-up just as much. But how could... never mind. If Callus was really falsely accused, we have to find the truth. He didn't deserve to have that happen to him. There is one other thing. Master Callus's opponent in the duel was Ms. Clorand. Oh, अच्छा वही well, जिसको then, बचा रही isn't that as good as saying that she was the one who killed him? तो बंदा the mood was a little strange between two of you. Yeah, that's not the sort of thing that you can just let go and move on from. Miss Clorand has always placed great emphasis on the honorable nature of the duel. If her opponent doesn't yield, she will not stop either. She knew Master Callus beforehand and greatly respected him, but seeing how he was resolute in the arena, there was only ever one choice she could have made. It's not that I don't understand her at all, but I just can't deal with this yet. Don't worry, Navia. Paimon knows how you feel. You don't have to force yourself to do that. Afterward, Miss Clorand told us that at the start of the duel, Master Callus requested that she ensure Demoiselle Navia's safety. Then that incident. Yes, that is our understanding as well. Oh, Papa. What madness drove you to ask the person who killed you to take care of me? All right, anyway, that's the information I wanted to share with you. Even if it did sound like I was just complaining towards the end. It's alright. Thanks. You two should go and rest. This was quite a day after all. Yeah, Paimon's feet. Please, relax and get some sleep. We will ensure you rest soundly. Rest in your room. Where the fuck is my room? Paimon slept so well. This place feels almost too safe. Huh? Navia? Where did the other two go? I sent them back to Poisson. It's Spina de Rosula's place of origin, and where we have our headquarters. There's not much for them to do here at the moment. Paimon gets the feeling that you're just trying to get them off your back. But never mind that. When did you get back? Were you waiting here the whole time? No, I just returned after going out for a while. I did some investigating yesterday regarding the name Vache. Vache. So you didn't sleep at all? How could I after having such critical new evidence appear? Guess Paimon wasn't speaking for everyone just now, huh? Unfortunately, this name seems to have been wiped from existence. It doesn't seem to have a match anywhere. I suspect that those behind this have already taken steps to hinder an investigation from this angle. But that does prove that this Vache person is a key witness in the incident. Does that mean we're too late, though? उसका lover था ना वैसे. No. There is one ray of hope. One place in Fontaine that they would find almost impossible to threaten, no matter how much they wanted to. And that is the archives kept by Chief Justice Neuvillette. A place where detailed files on all the cases in recent years are kept. If the Oceanette you met is one of the young women who went missing recently, we should be able to find some related information there. So Neuvillette maintains an archive of case files? Whew. Guess that's the hard-working Chief Justice for you. In that case, let's go talk to him, shall we? Hmm? Aren't you coming along now?
No, it's nothing. Let's go see the Honorable प्रीमो तो सारे बुक नहीं चाहिए कहाँ पे थी जस्टिस The palais is right up ahead. Come on. Halt! Please state your business here. The Chief Justice is presently occupied with official matters. Huh. This place does look pretty heavily guarded. Guess that proves that Neuvillette's files are really secure. Hey, don't you recognize us? Huh? Who are you? Just to be clear, I don't care who you are or who you might be related to. Our rules make no exceptions. See? They've got great discipline, too. Yep. Paimon can tell. If you're here just to crack jokes, I can point you towards the exit. Unlike some, we're busy, so please leave if you don't have a reason to be here. No. What I meant to say is, shouldn't you remember us from a few days ago? We were at the trial of the great magician Lyney. Oh, yes, I remember. I read about it in the Steambird. You must be Lyney's attorneys. It's all coming back to me now. We're here today to report and archive some information on a follow-up case. Huh. Is that even a thing? Of course. Don't worry. We're here on official business. You can trust us. All right then, I'll let you through. The Chief Justice is just inside. Thanks so much. Please come in. नॉक करने का सिस्टम बढ़िया था भाई Sorry to barge in, Monsieur Neuvillette. We only like to get in because we didn't know any other way. It's all right. Please let me know how I may be of assistance to you. So you're not mad at us? We're looking for a man called Vache. He may have been an eyewitness in the serial disappearances case. If we can find him, we may be able to unearth some key information on the case. Ah, I see. In that case, please wait here a moment while I browse through the files. Who knew that Neuvillette would be so easy to talk to? जज है ये बुढ़ा Unfortunately, I'm quite certain that no one by the name of Vache has been involved in any case, criminal or civil, in the past several years. There are no records of him either in the files or in my memory. So we are back to square one. Traveler, what if it was really just a dream? Is that so? All right then. Thank you so much, Mr. Ahem. Miss Navia, I can understand how you feel. Your father, Callus, was a truly exceptional man. We deeply regret his passing. And what are you trying to say, Monsieur Neuvillette? Are you trying to console me? Extend your sympathy? Or just express some tendril of regret? No. You are not trying to do any of that. I can hear it in your voice. There's no emotion behind your words. You only said those things because you felt like you should. It's just like last time. After my father took his place in the duelist ring, I pushed through the guards to talk to you as a last resort. You even told me then that you thought there was something fishy with the case, yet you still allowed the duel to go ahead. In your eyes, the value of a human life is nothing compared to those cold laws you hold so dear.
If you truly regret my father's death, then why didn't you call a stop to the duel? Why didn't you give me the power to stop him from throwing his life away? Why did you just let him die, despised and hated by all? Everything was hanging on a thread at that moment. Just the tiniest effort could have changed everything. There are still so many things I never got to tell him. So many questions he still owes me answers to. If you really have no heart, then just look me in the eyes. I, Navia, will show you the true meaning of regret. I'm sorry, Miss Navia. You and my father are truly alike. You keep all kinds of things in your heart and never say a word to anyone. It's not so much that you can't feel, but that you would never express anything. Oh well. In any case, everyone already knows full well the apathy of the Chief Justice. My apologies for taking my emotions out on you, Monsieur Chief Justice. Let's go, Traveler and Paimon. Neuvillette बेचारा सबसे दाटी सुनते रहता है। Navia, are you okay? I'm fine. Rain. It's raining. You're right. Wasn't it still sunny when we went into the building? And there shouldn't be any active trials today. How strange. Now that I think of it, on the day my father was convicted of murder, it was also raining. What is it? Did you think of something? Your father's case, was he outside when it happened? Yeah, he was outside. It was uncovered and the rain could fall there. Why? Do you think the rain could have affected the crime scene? That thought has occurred to us before. We've even expanded the search area to try to account for that, but didn't find anything of value. But there was something you didn't know at that time. Oh? Wait. The fact that people can be turned into water. So you're saying that the true murderer could have been turned into water and then got washed away with the rain? Yeah. And if that's what had happened, then no one would have believed your dad, even if he explained what he saw to the authorities. I really think I found a true genius for a partner. You're completely right. How did I not connect the dots early? All right, let's go to Poisson. With this new lead in mind, we'll get to the bottom of my father's case for Yeah, we're gonna make progress for sure this time. Do you want to go with me now? Or do you want to head over by yourself? You can go first, I will join you later. We should go while the idea is still Great, fresh. Let's go then. This weather is perfect for doing nothing at all. It's perfect for doing nothing at all, Besharam Alhaitham. जाती हो टेलीपोर्टर खोल लेते हैं। Whoa! What a huge ship! Why would a ship be anchored at a place like this? There's no need to be so surprised. While it may look like a ship, it's actually Spina di Rosula's headquarters. My father was the one who asked for it to be built like this. Perhaps our taste in exterior design is the only thing we occasionally had in common. A gigantic and glamorous ship embodies discovery, opportunity, ambition, and conquest. It symbolizes Spina di Rosula's bright and limitless future. I think I'm starting to get why you get like. And Paimon thought you were bluffing when you said Spina di Rosula had a glorious past. Paimon was confused why a group with such a history would live in the sewers. But now that Paimon has seen this ship for herself, she's been convinced. Well, Poisson is where Spina di Rosula began, after all. It's our main base.
वो तो ठीक है, शिप तक जाने का रास्ता कहाँ है? अच्छा आप क्या बेच रहे हो चाचा? कुछ भी नहीं बेच रहा है चाचा। बड़ा ही कमजोर सीढ़ी है भाई, आवाज कर रहा है। Maloose, we're back! Apologies for the wait, demoiselle, and our most important partners. You said before that you still had some business at the court. What brings you back to Poisson so quickly? About that. It's because my partner here reminded me of something really important. You see, what if my father's case had something to do with water from the primordial sea? You still remember, right, Maloose? On that night, it was raining? Yes, the case was quite similar to that of Mr. Linney's. Both were what you'd call impossible murders. Could the mastermind be the same? Could you tell us a bit more about what happened before? Yeah, of course. Many years ago, something called synth began to gain popularity in Poisson. At a glance, it was a kind of drink that could excite your mood and produce many pleasant hallucinations. Wait! Didn't that guard guy who turned into water also mention that the primordial water could be used to produce some kind of potion? Yes, he did. Considering what we know now, it's almost certain that synth is created using water from the primordial sea. If you drink synth for an extended amount of time, you'll suffer many side effects, such as losing the ability to focus or control your emotions. And if you were to stop drinking it completely, you'll experience flashes of paranoia and anxiety while lacking energy to do anything. It's an extremely dangerous substance. As he oversaw Poisson, my father was compelled to put a stop to synth abuse and called for a complete ban of it. Boss's uncompromising attitude incurred the synth vendor's wrath, but no matter how much they threatened or bribed him, he refused to yield. Not only that, Boss became determined to find the mastermind behind the synth operation and put an end to the problem once and for all. Yes, but the enemy was very cunning. So he could never get anything out of the dealers, all of whom only sold the stuff and weren't privy to the rest of the operation. Recognizing that, my father decided to contact the dealers in secret and cultivate personal relationships with them. Finally, he was able to convince someone to become his informant. The man's name was Jacques. He felt greatly ashamed about his work after seeing many families destroyed by synth abuse. That night, my father hosted a banquet at his countryside estate. He planned to meet up and exchange information with Jacques over some food. But then, we heard 2 gunshots from the courtyard. We raced to the scene and found my father, still holding a gun, and Jacques, who was already dead on the ground. Huh? How did that happen? Aren't they on the same side? Sounds just like Lenny's case, doesn't it? In both cases, the culprit seemed obvious, but neither appeared to have any motive at all. Looking back on it, though, I now believe the most important clue was something we all overlooked at the time. There were pieces of clothing left at the scene. So they could have belonged to someone who got this. Precisely. It's all thanks to you that I made the connection now. Back then, we all just thought they were some costumes that Jacques used to disguise himself at the banquet. But, considering it now, it's almost certain that they belong to a third person at the scene. With one extra person, we'll also need to reconsider why the 2 shots were fired. Maybe your father got into an argument. You're right. We still don't know what happened. But my intuition tells me that we're on the right track to figuring it all out. I'm finally headed towards the truth. Jacques was an empathetic man who was infinitely remorseful for his past actions. It's unlikely that he turned on Boss with 0 warning. I think this third person is probably the key to the full truth. On that note, however,
Even though this will not please you, demoiselle, as your and your father's butler, I must still offer a word of warning. Our opponent is insidious and cruel. They are extremely difficult to deal with, and Boss has already lost his life trying to bring them to justice. Even though Spina de Rosula has lost most of its former glory, Poisson has welcomed a new time of peace, and we have been allowed to live out our lives. There is no need to follow your father's path. It would be both wise and in line with Boss's wishes to step back and give up on the case. If that's indeed what he wished for, then he should have told me that himself. Was I not the closest person to him? And yet, I was the one most kept in the dark. What was the point of him dying without sharing any of the secrets he knew? Did he manage to protect anything in the end? Synth is still here. Callus the Unfaithful is still his epithet. And Spina di Rosula is barely getting by. Nothing has changed. Did he think I'd just accept his meaningless death and live out my life just as meaninglessly? I've never accepted that. Ever. Not since that day, and certainly not now. I want to find out the real answer for everyone's sake. For the missing girls, for the victims, and for myself. Navia. This is indeed the best moment to act. Your partner appears to be quite reliable, and more importantly, demoiselle, I think you're also ready to take this on. So you do know something else, Malus? Yes, I do. In fact, even before that banquet, Boss already knew of the connection between Synth and the serial disappearances case. But what drove all the tensions to the boiling point was the revelation that you, demoiselle, had been selected as the next target to disappear. What? Boss also didn't tell you that he had been diagnosed with a rare illness. The doctors told him that he had no more than 5 years left to live, and the serial disappearances case caused him great anxiety. 5 years was nowhere near enough time to resolve this long-standing conflict, but once he passed away, all the danger would pass on to you. Knowing all of this, he decided to use one final intimidation tactic before his death. He claimed to have already gotten his hands on some key incriminating evidence for the other side, and even told some members of Spina di Rosula about the details. But as long as you remained safe, he would not share the evidence with the public. If something were to happen to you, then he and all those he told would immediately expose all they knew about Synth and the disappeared victims. Right, so nobody would be able to get off scot-free. As we've seen, Boss's tactic has worked. Even though Boss has been gone for a long time, the other side has not tried to take Demoiselle's life. No, I don't believe it. He never appeared to look sick to me. No father wants their daughter to see them weak and haggard, especially someone as proud as Boss. To him, dying in a duel and suffering lasting dishonor as the unfaithful were still far preferable than losing face in front of his daughter. So he chose to die in silence, so that he could protect me. I'm afraid you're not understanding this correctly, demoiselle. What Boss wanted to hand to you was not a parasol, but a sword. If Boss's spirit could hear you telling me that you want to find the answer for the sake of everyone involved, I'm sure he'd be extremely proud. That fool. Couldn't he have just given it to me straight? No. He might have set up everything precisely because he never thought I'd be able to understand him. Is that the amount of confidence he had in me? And what if I was never able to make it to where I am now? He gave you the choice to live how you want. Yeah. I suppose that's true. With the way he'd set things up, if I had wanted, I could have just lived out my life without a care in the world. But thankfully, he rarely talked to me about complex matters, and thus understood little of me as a person. In this case, he really didn't need to give me an easy way out. Malus, what was the key evidence that he shared with you?
It's the location where synth is produced. Essentially, it's the enemy's headquarters. When he was threatening the enemy, boss didn't share the specifics of the incriminating evidence he found. But if you want to use it against the enemy, you'll still have to take several things into consideration. Why? If we know where the place is, can't we just go storming in? You mustn't forget that we're fighting against a mysterious and dangerous organization that's been in operation for decades. There's no telling what might be lying in wait at their headquarters. We also have no idea what kind of evidence we may be able to find inside, nor what people we may be able to capture. But a single visit to their headquarters would be tantamount to a formal declaration of war. The worst case would be that we leave empty-handed, but also open ourselves up to full retaliation. Then, in that case, why not work with the Fontaine authorities? Well, you saw one of them dissolve during Mr. Linney's case. We have no idea just how thoroughly they may have been infiltrated. Huh. That's true. Seems my father really had no choice. But things are different now. It should be a lot easier to prove the other side's guilt, now that we've connected Synth with the disappearances. You sound like you've put a lot of thought into this, Maloose. I am the butler, after all. I live but to serve the boss and Demoiselle's will. I've always been willing to take on any kind of risk for your sake. But considering my relative lack of ability, I've spent my time keeping secrets, performing basic investigations, and waiting for the right time to come. Thank you for all of that, Maloose. Have you discovered anything new in the past few years? Let me think. One conclusion I came to was that the enemy must be quite familiar with Spina di Rosula, or at least have an informant planted here. When I announced orders to the organization's members on Demoiselle's behalf, I used to deliberately keep a few people in the dark and observe the reactions of the synth vendors. If the vendors didn't change their plans, then the individuals informed of our orders must be innocent. If the vendors packed up and fled, however, then someone must have given them the news. After several rounds of testing and investigative tracing, I've narrowed the suspect list down to 3 people. The first is Florent, Spina di Rosula's senior advisor. Huh? Florent? Yes, surprising, isn't it? He was one of the people Boss trusted the most, which also means that he was someone who understood Boss really well. Thanks to his position within Boss's innermost circle, he always knew our upcoming plans and could thus avoid capture this whole time. There's someone else like him too. Marcel, the head of Confrérie of Cabrières. Uncle Marcel. What is this? It's a guild in Poisson. Boss helped it to grow to its current size and prominence. In the beginning, they were only reselling some daily goods, but now they're one of the richest guilds around, with a lot of business connections in the city. So, they're like a sister organization? Yes, you can say that. When we were fighting against the synth dealers, they provided us with plenty of support. It's a bit difficult to imagine someone using their own money to hunt down themselves. The final suspect is Thierry, the man responsible for coordinating information between Spina di Rosula and the guards. Although the guards mostly leave us to our own devices, there are still many activities we have to report to the local authorities. Since Thierry is always in the know about our current activities, he could theoretically always plan one step ahead. I see. These are all people who I communicate with quite regularly. To think that the enemy we've been fighting against has been right next to me all along, among those I trust the most. It's almost too hard to believe. If you want to investigate them, please take every precaution to not alert the quarry. Judging from our experience, the enemy is extremely cautious. Of course. And thank you, Maloose. You're too kind, my lady.
I'm just doing my... And before I forget, proving Boss's innocence would also mean clearing him of blame in Jacques' death. After that incident, Jacques' wife and daughter were taken into the Spina's care. They still live in Poisson today. If it might help, you could also pay them a visit. I can make the necessary... Oh, thank you so much, Malus. You really are the best. A new case awaits, my dear partner. Leave it to me. I hope we can work together to uncover the truth and end this case once and for all. Visit Jack's family. वो कौन है जिसको इसका बाप मारा? It is settled, then. Please excuse me, and enjoy your conversation at your leisure. Thank you for arranging everything for us, Malus. Excuse me, miss. Do you need anything from us? इसको जो सुना उस लड़की को लग रहा होगा इसके बाप की कातिल की बेटी. Hey, Navia's all quiet. This isn't like her at all. Let's not bother her for now. I'm sorry that I only came to visit after all this time. After what happened, I didn't know how I was supposed to face the two of you. Ah, if it's about that, there's no need to apologize. After my husband died, Spina di Rosula sent us a lot of mora and support. I understood your guilt and apology to be genuine. But aren't all of those things nothing compared to the loss of Jacques? I can understand the kind of pain that comes with losing a father so needlessly. You don't understand at all. I didn't know how to face you, because I didn't know what I could possibly bring as a consolation gift. I know only the full truth could bring closure to you, and to all of us. I'm sorry. I appreciate the sentiment, but you don't have to carry all that guilt. On the matter regarding my husband, my daughter and I have more or less found our answer already. Would you mind sharing it with me? I really can't believe that my father could ever bring himself to shoot Jacques. I always knew that my husband's money was earned through others' suffering. He told me countless times that if he could turn back the clock, he would never go into the synth business again. He had many regrets, and felt that he took the idea of providing for his family too literally. For the longest time, he thought Mora was everything. So when Mr. Callis came to him with a proposal, he accepted it almost immediately. He tried to be as careful as he could, but even so, he was still found out by the higher-ups. They found out about his betrayal? Papa didn't say that exactly, but Papa did tell me that I should never be ungrateful. Before he left that day, he told me that he had no choice. It was only later that I realized it was his final farewell to the two of us. Someone ordered Jax to take out Callis. I don't know that for sure, but you could say that's the conclusion I eventually came to. Which is why I'm the one who should feel guilty. Callis had always taken great care of us, both when he was still alive and after he passed away. Even if he fired the shot that killed my husband, it was likely in self-defense. It is impossible for me to hate him for what he had done. But Mama, why is Papa still the bad guy if he did the right thing? Papa always wanted to be a good man, so why did he have to do a bad thing in the end? Well, things aren't always as they seem. You still feel like your Papa was a good man, right? Yeah, Papa was a really good man. The best in the whole world. Then you should hold on to that. If a good man had to do a bad thing, then he must have had his reasons. Regardless of whether he left you a parasol or a sword. He must have done so to give you a better life. Oh. Thank you
for everything you've told me. I will definitely find the truth. The current state of things is not something I'm willing to just sit back and accept. Thank you. Even though your personality is quite different from your father's, your determination when you speak is really similar. You really think so? That's the first time anyone said that to me. Talk to Florine. अभी ये कहाँ पे है भाई? Are you okay, Navia? 75-meter higher. I'm fine. Don't worry. Let's investigate the 3 suspects next. Florent should be nearby, and we should be able to find Thierry and Uncle Marcel in the city. I'll get my... Greetings, boss. How may I be of assistance today? I'm sure you've heard about what happened at the Opera House. Someone got turned into water right in front of us. Yeah, I've heard. With something that dramatic, I'm sure journalists will milk it for all it's worth. And it'll be all the talk for the next several weeks. It also reminded me, on the day that the incident happened with my father, it was raining outside, and we found some clothes left at the scene. After my partner here put the dots together for me, I feel like we should try to reopen his case. Can you do me a favor and try to recall what happened that night? Let me think. Mr. Callis was feeling pretty upbeat that day. So, after that, he told us that he wanted to go get some fresh air. So we let him go without thinking much of it. Who knew that we would hear 2 gunshots ring out right after? My first reaction was that Mr. Callis's life was in danger. So I grabbed my holster and made a mad dash toward the scene. But when I got there, it was already too late. Mr. Callis was standing over a dead body with a gun in his hands. All we could do was look back and forth at each other, not knowing what to say. So you also remember 2 gunshots then? Indeed. The guard said that the first shot didn't hit anyone, while the second killed Jacques. But I've never really bought that explanation. Reason being, Mr. Callis had left his gun on the table. I even made sure to confirm that before running to the scene. But according to the guards, that doesn't mean he couldn't have had other guns on his person. About the clothes left at the scene that you mentioned, do you think there was a 3rd person there who was turned into water? It's very possible. At least from our perspective, my father had no reason to kill. So he would also have no reason to bring an extra gun with him. The gun he was holding probably belonged to Jacques, or a 3rd person on the scene. Yeah, that makes a lot of sense. So you're saying Mr. Callis ended up with the gun because he seized it from one of the other guys? But hold on. If that's what had happened, then why didn't he share the truth with any of us? He didn't even want to face the Oratrice machine, and chose instead to prove his honor in a duel. Did he lose all faith in the courts after seeing someone dissolve right in front of his eyes? About that, Malouse told me a thing or two. So, I think I can understand why he committed to the duel. I'll tell you everything once the whole truth has been revealed. I understand. Then I'll leave Mr. Callis's and if I may just say one more thing. The whole Callis the Unfaithful epithet has been a thorn in my side since the day it was invented. Many people have laughed at me for still calling him Mr. Callis, even after so many years have passed. But it was Mr. Callis's trust that allowed me to rise through the ranks of Spina di Rosula and live the life I lead today. No matter what others might say, he'll always be the man I respect the most. Don't worry. I will definitely find the truth. You and all our other comrades at the Spina deserve to know the truth as well. My apologies, boss, for that last sentimental bit. It's just... Go to the court of Fontaine. Where are you, court of Fontaine? Hold it.
नहीं ये इनका दूसरा बंदा Hey, Thierry, it's me. झूठ बोलता है Oh, झूठ नहीं मतलब अंदर की now, बातें बाहर what करता brings है you here, Miss Navia? I've heard that you made quite the name for yourself at the Opera House. Oh, so you've caught news of that already. Oh, okay. Hey, I'm also a member of the guards, you know. The way you make it sound, people would think I was sent off to Poisson because I had done something wrong. Are you sure there isn't a little bit of truth in that? Under normal circumstances, shouldn't you have been called back to the city already? I mean, where I work is really up to me. Let's just say I enjoy the ambiance. Callus did a fantastic job running the town. Buildings, it would be next to impossible for me to find a similarly easy but high-paying job in the city. Anyway, enough chit-chat. Are these two friends of yours? You, here for some formal business? Yes. These two are my partners. What happened at the Opera House made us realize that Linny's case and my father's may be related. We're trying to reinvestigate the details of my father's old case. Ah, I get it. You think there might be more to the case now that we know people can be dissolved in the water, right? I was also flabbergasted when I first heard of it. If you want to go through the original files from your father's case, I can help you look for them. That'd be much appreciated. Thank you. Actually, I have another question. Do you have the authority to dispatch Gardamex? Of course. Without them, I couldn't possibly handle Poisson on my own. Why do you ask? We definitely can't use them to forcefully get more evidence for your father's case. Well, you see, just recently, we were attacked by a horde of unnumbered Gardamex in the city. So, if you hypothetically wanted to do something against me, all you would need to do is get rid of the mecha serial numbers and send them after me. Then you think too highly of my abilities. Dispatching mecha is very different from controlling them. If I had to make an analogy, when you order a dish, the chef will make it for you. You can ask the chef to cook, but not to massage your shoulders or carry your baggage. If you try to make unreasonable demands, the chef would just think you're out of your mind and ignore you completely. The same goes for me and my Gardamex. Removing a serial number is also not as easy as you might think. There are a lot of complex steps to it, and it's almost impossible to keep it a secret. So I can promise you, those mecha were definitely private units. They're certainly not cheap. So, whoever their owner is must be super rich, powerful, or both. Now that you mention it, though, being in the synth business would definitely be profitable enough to afford this. Makes sense. Oh, then you're officially in the clear, Thierry. Oh, well, thank you for the vote of confidence, Navia. Jokes aside, I'd like to wish you all the best with your investigation. I'll be staying in the city for a little while, so just come find me if you need any support from the guards. अगले जन्म तक हो जाएगा क्या? Contact मार कहाँ पे ये? इतने कोने में क्यों है भाई? $97 meters. हाँ अगले जन्म. Hello, how may I help you? I'm here to see Marcel. Could you please let him know? You can just say Navia's looking for him. Sure, I will let him know right away. After meeting Marcel, I was in a hurry. Navia, hello. Sorry to keep you waiting. I'm not as young as I used to be, so my legs are giving out a bit. Oh, it's all right, Uncle Marcel. There's no need to stress. I just wanted to talk to you briefly about what happened in the Opera House. I'm sure you saw everything too, right? Yes, I've never seen anything so strange. Oh,
That's right. I went there with Navia to see the magic show. I also witnessed your marvelous sleuthing work. Quite. To beat the Hydro Archon at her own game on her own turf. I can already imagine everyone in Fontaine discussing your exploits over a few glasses of wine. Oh, Paimon doesn't want to become the talk of drunkards. Apologies. It's just how Fontaine is as a nation. चलो देखते हैं, ठीक है। अभी चल रहा है 4.7 ना। इसके बाद एक और बैनर आएगा 28 दिन का, उसके बाद एक अपडेट और आएगा जो कि चलेगा 2 महीना। 3 महीना अगर मैं मान लूँ, 3 महीना 90 दिन। अबे 90 दिन, ठीक है। 90 दिन का अगर मैं एवरेज लूँ तो हम कितने प्रीमोजेम कलेक्ट कर पाएंगे? एक दिन का 60 मिनिमम मान के चलेंगे, 5400। इतने में कितने क्रेडिट आएंगे? 33 आएंगे बस। 40 दिन वो हो गया। फिर ये पैच में भी तो अभी बचा है टाइम। फर्स्ट फेस है, फिर सेकंड फेस आएगा। और एक फेस अच्छे खासे दिन का तो है ही, ठीक है। 15-16 दिन ऐसा रहेगा। डेली 100 कहाँ से होगा? अरे 60 तो डेली से है, और कहाँ से लाएगा प्रीमियम? Hello. How may I help you? I'm here to see Mars. Sure. Navia, hello. Sorry to keep you waiting. I'm not as young as I used to be. Oh, it's all right. I just wanted to talk to you brief. Yes, मेरे को 20,000 I've never चाहिए seen जोंग anything का, so हो पाएगा? strange. Oh, you were at the Opera House too? That's right. I went there with Navia to see the magic show. Who knew it would 20,000. turn into a whole murder mystery? I also witnessed your marvelous sleuthing work. Quite impressive. To beat the Hydro Archon at her own game on her own turf, I can... Oh, Apologies. It's just how Fontaine is as a nation. Uncle Marcel, you've also noticed that एक other thing, पैच में right? 9-10,000 The fact प्रीमो that आराम humans से। can dissolve in water? Yes, I was reminded of your father's case right away. Is that what you're investigating now? मेरे को 20,000 करना है जोंगली तक। Exactly. I still don't have much solid proof, but I can sense that the other side has इतना already करना है begun कि to मैं act. 180 खोलने के लायक हूँ। And what makes you say that? We were attacked on Araneus by some unnumbered Gardamax. And there was also an attempt to get me to drink water from the primordial sea. If not for the vigilance of my partner, I probably wouldn't even be here talking to you right now. oh, you're giving us too much credit. Wasn't it you who protected us? Alas, it seems things तो are मेरे heating को up एक again. क्वेश्चन है, The peace एक that हफ्ता Callus लगेगा sought so कंप्लीट dearly करने will में, बस soon become a thing of the 2500 past. प्रीमो देगा। कौन सा But क्वेश्चन है rest भाई? assured, Navia, Poisson will always remain a safe haven for you. आर्कॉन If क्वेश्चन you're में चढ़ गया। scared, you can always return there. If anyone dares to lay their hands on you there, the Confrérie of Cabrières will use its funds to the last Mora to bring them to justice. Thank you, Uncle Marcel. But I don't intend to go into hiding. I'm going to strike while the iron's hot. Do you have any new thoughts on my father's case? About that. Sorry, my age is catching up with me, so it'll take me a while to recall my memory. The Confrérie was responsible for that banquet, so I was out and about the whole time making sure things... Then I heard the sound of a gunshot. Oh, it's okay. No need to push yourself. We'll ask... Sounds good. Just let me know if you ever need... All my wealth comes from Callus's... हो गया? यहाँ नहीं, कैलकुलेटर पे चलो। हमें चाहिए 180 ताकि कंफर्म हो जाए निकलना। हमारे पास है 3। एक क्रेडिट को खोलने पे लगेगा 160। 28,320 चाहिए मेरे को प्रीमोजेम्स। ज्यादा नहीं है, 28,000। 28,320। क्या मतलब 10 साल लग जाएगा अपने जमा करने में?
Alhaitham, फिर भी बर्बाद हुए साढ़े 102 है। कौन सा क्वेश्चन बोल रहा है तू? अरे नायरा, यहाँ पे तो कोई ऐसा दिख नहीं रहा है। एवरेज 75 में आ जाता है कैरेक्टर। एक ही अलग मिल रखा है, इससे क्या ही बोलूं। नहीडा को क्वेश्चन कर सकते हैं। इधर से भी 60-60 करके मिलेगा ना? कितने कैरेक्टर हैं देखना पड़ेगा, उतने मिल जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 है। अगर एवरेज 25 भी मान लो मैं कि हम 25 कर लिए, 25 इंटू 60, 2500 इंटू 6, 1500 यहाँ पे मिल जाएंगे। फिर ये वाले हैं, इनको ज्यादा खींचिए। मुझे मिलने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। This can work. I'll just treat them as new samples. Every scent tells a story. ओवर द क्यूज हाँ भैया, ऊपर जाना है इसके लिए। 75 का मतलब 150 होगा ना, तो 147 कर दो। 23,500। विन क्या है? विमारा विलेज के पास राना नाम की लड़की को ढूंढ। सुमेरो का है ना ये? विमारा विलेज, वेयर आर यू विमारा विलेज? विमारा 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 विमारा, यहाँ पे है तो सही विलेजेस, आरू विलेजेस सब है इसी लोकेशन में होना चाहिए। फिर यहाँ पे अगर विलेजेस है तो अंदर हिल, यहाँ पे सिटी है, पूल, विमारा विलेज ये रहा ठीक। ग्रीन एरिया विमारा विलेज के पास राणा। कैसे चिल्लाते ही? विलेज की डायरेक्शन में जा रहा हूँ ना, राइट साइड में। राणा नाम की लौंडिया। वो अवेलेबल कोर्स दिखा रहा है पर उस पे क्लिक कर। मिस्टीरियस पावर लिख के आ रहा है। पॉट पता नहीं क्यों चमक रहा है, पर चमक रहा है। फिशिंग कर रहा है वहां पे, ब्लू कलर में दिखा रहा है मैप पे।
ये वाला और इसको 1 हफ्ता लगेगा। Right now. Emerge. Right here. ये राणा सब लोग इस क्वेश्चन से डरते हैं। ऐसा क्या हो गया भाई? 1 घंटा लेता है इसके लिए? 1 घंटा नहीं, 1 हफ्ता। ये तो एक गूंगी है ना, जो गूंगे लोग होते हैं उनका पढ़ने का मन नहीं करता। इंसान कितना पढ़े। आर्यन का बाहर से तो कहाँ पे जा रहे हैं? बाहर से गायब है भाई, कहाँ पे है? वुडलैंड एनकाउंटर खेल के देख, पता चल जाएगा। मुझे प्रीमो चाहिए भाई। 2500 फर्स्ट वर्ल्ड क्वेस्ट। बाहर से 30 ही दिखा रहा है अभी। 500 रुपए के बराबर का क्वेस्ट है ये। It's been only a few days. Clean up the withering zone. Right now. Emerge. करना क्या था, मैं तो वही भूल गया। Don't be scared. Stay put. चार्ज अटैक ही कुछ करना साला बे। Right now. Right here. Right now. Uglay, you're up. लौड़े के बच्चे शेर। पहले वो ग्रीन वाला लेना पड़ेगा, फिर चार्ज अटैक यूज कर। हाँ तो उसमें बहुत सारे क्वेस्ट है, मिलकर सब टोटल हो जाता है इसमें। Yeah. Emerge. Right here. Right now. Settle down. दीदी चलो 30 जेम। आपका बिल हो गया 30 जेम। थैंक यू बोलने से काम नहीं है, जेम दो मेरे को। ना तो आप सुंदर हो जो मैं आपके लिए फ्री में काम करूं। जेम निकालो, जेम बकवास नहीं।
भाई ये क्वेश्चन को मैं आधे घंटे में खत्म नहीं कर सकता क्या? बिल्डिंग नहीं है रे वो। इसमें चलो, और इसका नेविगेशन ऑफ है ना, बहुत बढ़िया। कहाँ पे जाना है मेरे को? Melusines are beautiful creatures. They are the pride of Fontaine. Be sure to befriend them and cause them no harm. डरने लायक भी कुछ नहीं है रे इस क्वेश्चन में। वो बात अलग है, एक हफ्ता है इसका टाइम जैसा तू बोल रहा है। तेरा टाइगर टाइगर तो मर जा रहे हैं, किसी काम की नहीं है। इतना कुछ देख लिया जिंदगी में, टाइगर से किसको डर लग रहा है? तो गाइस अगर कोई नया बंदा स्ट्रीम पे ना भाई, सब्सक्राइब दबा दो यार। क्या मतलब है अपना रंडी होना बाद में करूँ? फॉलो रहना, जल्दी चल। चलना चले। हम भाग भी नहीं सकते इसमें। बाय द वे शी इज सुंदर तो है भाई। बटन पे एक्स का चेहरा समझ के चाटा मार दो। ये गलत इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है मेरे बारे में, हम इससे सख्त डिनाई करते हैं। कमेंट सेक्शन हमको ऑफ कर देना चाहिए। ठीक है ना साले, नहीं गंदी बात, ऑटो स्किप हो। $2500 प्रीमो जो, और तुम भाड़ में जाओ। अगर इन क्वेस्ट में आवाज रहता ना भाई, ये लाख गुना बेहतर होता। बिना आवाज वाले कोई क्या खेले? कोई और क्वेश्चन नहीं बचा है क्या वैसे मीको का? ये सब थोड़ा बोरिंग है भाई। ना मीको का है, ना शोगन का है। नेवलेट का है एक, बट कौन करे। जो इंडिया का है, अलाइथम है, लीलो है, गिलान का है, कुकुमी और यूला का है। बाकी कोई खास नहीं है। Personally, I think the idea of things staying the same forever is quite beautiful. भागना साले ले। But alas, that is simply not the way the world works. क्या नाम है इसका? अलाइथम। अलाइथम का बहुत सही है स्टोरी क्वेस्ट। 60 प्रीमो भी मिल जाएंगे। इसको धक्का देके नीचे नहीं गिरा सकता मैं। गिर जा साले, गिर जा। इसकी माँ का। मार यार।
सोच ऐसा हो यूट्यूब को एकदम से दया आ जाए, गरीब क्रिएटर 5 घंटे से लाइव स्ट्रीम कर रहा है और यूट्यूब मेरी वीडियो फैला दे और आज ही मेरा 1K सब्सक्राइबर हो जाए, कितना मजा आ जाए। भाई सिर्फ 60 मिलता है और वो होने में भी 3 घंटा लग ही जाएगा अगर पढ़ पढ़ के करो। मीको का सेक्सी था वे क्वेस्ट स्टोरी वाला, जो एंडिंग थी उसकी। हो सकता है वे, किसी को नहीं पता। मान ले तू कोई वीडियो अपलोड कर रहा है, तूने 1000 वीडियो अपलोड की, तेरे 100 सब्सक्राइबर हुए, कोई एक वीडियो तेरा 1000 सब्सक्राइबर करा सकता है। लक लक की बात है वे। मान ले अभी तू सोने गया रात में, कल सुबह उठ के देखते तेरे 5000 सब्सक्राइबर हो गए, आहा मजे ही मजे। क्या मतलब औकात में रहो, पजामे में रहो। पांच की वॉचिंग थी, 4 की हो गई, एक बंदा भाग गया ये बात सुन के। मेरे कौन से बढ़ रहे हैं भाई, हम दोनों एक ही नाव पे सवार हैं। तेरे कितने हैं, रुक देखता हूँ, मेरा ये चैनल मॉडरेटर होना चाहिए। गो टू चैनल, ठीक। 132। तूने वीडियो डाली है 85। 85 में 132, 17 व्यूज। 2 महीने पहले 15 व्यूज, 300 व्यू। तेरा चैनल का हाईएस्ट व्यू वाला तो ऑप्शन आ नहीं रहा है। 4 ही वीडियो डाली है, हाईएस्ट 300 है, ठीक है वीडियोस में। शॉर्ट्स के व्यू उतने मैटर नहीं करते, पर 10,000 गए। 300 व्यूज है तेरे वीडियो पे हाईएस्ट। तेरे मतलब जितने भी सब्स आए हैं शॉर्ट्स से आए हैं मैक्स, और लाइव स्ट्रीम। 1000 से मेरे को पता है क्या लगता है, अगला अगर मैं टारगेट लेके चलूँ ना, 1 साल लग जाएंगे अभी 1000 होने में। अगर इसी रेट पे चलूंगा तो 1 साल लग जाएगा। फिर 4000 घंटे करने मेरे को। वीडियो बनाने का आइडिया है बट आलस। सेम भाई, सेम सेम भाई, बिल्कुल सेम। आइडिया तो बहुत है, बस उसका 4 गुना आलस भी है। क्या मतलब चूतिया हर 2 दिन में वीडियो डाल देता है फिर भी आलस की बात कर रहा है। भाई देख, जिंदगी में मेहनत तो बहुत है। लोग बोलते हैं ना मेहनत करो, आपको लाइक आपकी लाइफ अच्छी होगी, भगवान भी मेहनत वालों का साथ देते हैं, पर भगवान आज तक साथ नहीं दिए। जेरी सिर्फ जेंशिन स्ट्रीम करेगा तो 4-5 महीने में। मेरे को वैरायटी स्ट्रीम करना है बे, ना जेंशिन ना पबजी, मेरे को वैरायटी ऑफ गेम स्ट्रीम करना है। अभी मैं 1-2 महीने में शायद मैं जमा कर रहा हूँ एक महंगा लैपटॉप लेने का, कम से कम 2 लाख का लैपटॉप लूंगा। उसमें खेलेंगे पीसी गेम्स, फिर आएगा मजा। पीसी गेम्स का स्ट्रीम मारेंगे या कुछ भी। ये क्वेश्चन में इतने बच्चे कहाँ से आ गए भाई, मैं बिना देखे टैप मार रहा हूँ आधे घंटे से। HSR मैंने डाउनलोड किया है, डाउनलोड करके रखा है मैंने, उसका भी स्ट्रीम कर सकते हैं।
शायद आज रात में मैं पबजी का स्ट्रीम करूँ, शायद, कंफर्म नहीं है, शायद। अभी वो ढंग से कर पाऊंगा क्योंकि मैंने एप्पल के ईयरफोन खरीद लिया ताकि मेरे को खुश रह पाए। मेन तो अभी है फॉन्टेन खत्म होना, तो एक तरीके से जेंशिन खत्म ही हो जाएगा, स्टोरी क्वेस्ट बचेंगे बस। पर मैं जेंशिन को मिल्क करना चाह रहा हूँ कि जेंशिन से जितना हो सके सब्सक्राइबर निकाल। अब बेस्ट पार्ट क्या है ना, ये गेम तू अकेले खेल सकता है, पबजी वगैरह अकेले खेलने को नहीं होगा। 30 प्रीमो आ गए भाई, और कितने इधर 50 मिल जाएंगे इसमें। उसमें भी बहुत सारे सही कैरेक्टर है जो मीको को कंपटीशन नहीं दे सकते जी, ये बकवास बात है। हाँ ठीक है, अच्छे हो सकते हैं बट मीको इज मीको। अबे मारो Emerge, नहीं right भले now. मशरूम के चोदों को। Stay put! Silence! क्या मतलब, मैं जिस दिन गाली देना बंद कर दूंगा मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। Emerge, right now. मर गया क्या वो? Don't be scared! ये तो ठीक है, वो ग्रीन वाला कहाँ पे है? सोलो वर्सेस स्क्वाड फुल रश दिखा दे अपनी स्किल को। कोई देखता नहीं है भाई, पहले करता था वो काम, 20 के लिए 25 के लिए वो सारे काम करता था पहले। बट भाई ये ठीक है, ये तू कर लेगा। मैंने वो बकचोदी भी की, गर्ल टीममेट वो सारी बकचोदी नहीं होती है, फ्लर्ट मारना है और वो बकचोदी भी किया मैं, पर कुछ उखड़ा नहीं। What a nuisance. अरे चूतिया मेरे को क्यों आना। मैंने बहुत बकचोदी की है भाई बीच में। अबे ये कौन है बे और क्यों है बे? Stay put! प्रीमो दो भाई। सुमेरो का ये चीज बड़ा अच्छा है, और फिर टेलीपोर्ट हो दो। पीस ऑफ केक नहीं साले, मेरा टाइम जा रहा है। उस लड़की को बोल पहले पेमेंट करे, मुफ्त में नहीं होते यहाँ पे चीजें। Emerge, right now. Emerge, right now. Emerge. Yeah. अबे यार अपना उधर रखना। क्या बकवास है, इस पौधे को मार। Right here, right now. Emerge. You, Glaze! Right now. Emerge. Right here. नूलेट बढ़िया डैमेज कर रहा है बे वैसे। Emerge. Right now. Bow your head. क्राफ्टन का ट्रेलर देख ले अभी, देख लो। ये क्या लिखता है?
राफ्टर नहीं है क्या है वो? कैफ का ट्रेलर देख तू अभी फिर बोलना है इससे ज्यादा वो कंपटीशन में है। कैफ का कौन है? ट्रेलर ये रहा। All units, target spotted! Target spotted! Stick to the plan. Shoot on sight. I repeat, shoot on sight. Don't be afraid. Listen to me. Wasn't it you who invited me? The silk is too fragile to be a threat. Unless you're more fragile than the silk. Case in point. Destiny has thousands of faces. Why does it choose to wear this one? Stealing a glance? Now then, where are you hiding? Sooner or later, the curtain has to fall. As for the ending, wanna take a guess? Heads or tails? What's your answer? Heads, तुक्का मारो। बढ़िया था भाई, बढ़िया था। Not bad, not bad. Now let me show you the goddess. इन सब के बाप का ट्रेलर आ गया, तुमको दिखाई दूँ। Myself reborn as Gucci. फुल इसमें देखेंगे जी। अब तुमको मैं दिखाता हूँ द बेस्ट ट्रेलर एवर मेड। I then found myself reborn as Gucci Yae, leading shrine maidens in sacred matters, sipping tea and kneeling in solemn meditation, and making appearances to listen to shrine visitors. Enough. Oh, this won't do. We're making a light novel here, not a dry documentary. Huh? And honestly, do you really think I lead such a boring existence? Hmm? No, not at all, Lady Gucci. That's chief editor to you. इससे अच्छा है तो बता। Yes, chief editor. A light novel begins with pure imagination. For example, और ये तो झुमके लगा रखी है भाई। I must say, this is quite the cunning trap. And the kitsune is after the ये वाली बात नहीं है भाई। But have I walked into your trap? Or have you walked into mine? I'm always watching. और ये एनिमेशन जो है भाई इसको बनता है। A sight to behold. I admit defeat. Just do it. Exercise me.
Exorcise you? But I thought you weren't ready to return to the cycle. So first, let me show you what a cruel world this can be. और इसकी आंखें भाई. No! It's so graphic. You'd never really do something like that, would you? Splendid. एक When the चीज readers नोटिस किया, किसी और कैरेक्टर ने जेंशिन इम्पैक्ट के लोगों को मॉडिफाई नहीं किया था वीडियो में या किसी चीज में. इसमें देख जेंशिन इम्पैक्ट के लोगों के ऊपर वो अपने फॉक्स फॉर्म में आके बैठी हुई. starts asking that question, you know you've written a good one. बढ़िया था भाई, बढ़िया था. इससे ऊपर दिया है ये झिंगलू यार. अरे कहाँ टाइप कर रहा है झिंगलू. ओह, I know, I see. ये कैरेक्टर को मैं दूर से देख के पता है क्या बोल सकता हूँ. और कचिंग जो है अपनी, उसके सफेद बाल हो जाए वो ऐसी ही दिखेगी. क्या मतलब ज्यादा वीडियो मत दे, कॉपीराइट पड़े. छह सौ नौ सब्सक्राइबर लौड़े सब्सक्राइब भरेंगे नहीं भाई. इतने कंजूस है ना बंदे. इतने कंजूस कैसे हो सकते हैं. आज मैंने 5 घंटे में कमाए हैं 2 सब्सक्राइबर. ठीक है. अब प्रीमो जेम का हमसे पूछना मत क्योंकि वो मिलेगी. गेम में भाड़ में जाए बे. सारे कैरेक्टर भाड़ में जाए. मेरे को सब्सक्राइबर चाहिए, मेरे को पैसा चाहिए. कितना मजा आएगा सोच एक बार साहिल अपन को यूट्यूब से पेमेंट आने लग जाए. एक क्रोकोडाइल की क्या है भाई. Right here. Emerge. मीको को खाने के लिए आए हैं क्या. Stay put. राम खोरो. Settle down. है तो सारे एक शॉट के. ठीक. Right now. Right here. Right now. बेटे अद में रह लो. Emerge. मीको से दूर रहो. मीको के लिए मैंने नई आईडी बनाई थी. मीको तो बेस्ट इलेक्ट्रो का. हाँ भाई, मीको से बेस्ट कोई है. मैंने एक आईडी बनाई, फिर मेरे को पता चला उसमें एशिया नहीं है. मैंने ये आईडी बनाई. ठीक है. मैं जेंशिन में पैसे नहीं लगाता, मैं दूसरे गेम में पैसे लगाता है. और फिर भी मैंने एक ये 1500 का, एक ये 5000 का पैक लिया इसको निकालने के लिए. और साथ में मैं 3 दिन रेगुलर खेला. Right here. तब Right जाके now. कहीं मिली. Right here. बहुत मेहनत की थी भाई मीको को लेने के लिए. उसके बाद वाले आराम से मिलते रहे. ठीक है. 5K प्लस 1500 6500. अभी लगता है वेस्ट किया है. हो जाते जगह. या फिर एक मेरे को 500 का वो लेना चाहिए था. बाकी क्वेस्ट वेस्ट दबा के करता ना हो जाता. Go to the camp. Where is the camp? मैं तो सोच भी नहीं सकता पैसे. भाई मैंने इसमें 6500 डाला. पबजी में मैंने लाख रुपए डाला. उसका क्या करूं. 6500 चल एक बारी मान ले 10,000 से कम है तो मैं उतना नहीं ले रहा दिल पे. वो भी मीको के लिए तो चल भाड़ में जाए. पबजी में मैंने 1.5 लाख क्यों लगाया भाई, किस खुशी में. इतना डेड गेम हो चुका है ना वो. भाई एक व्यू नहीं आता. मैं स्ट्रीम करूंगा ना. तेरे को क्या स्ट्रीम करने का मजा आएगा जिसमें व्यूज आ रहा है, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं. पबजी में झाड़ कुछ नहीं हो रहा भाई. और ये गेम का ग्राफिक भी ठीक सही है. खेलने में भी चल थोड़ा बहुत मजा आ जाए क्योंकि नया गेम है, कुछ नया एक्सपीरियंस है.
जी ना। वन पॉइंट फाइव से थोड़ा कम, 1 लाख और 1.5 के बीच में कुछ ऐसा लगा। सही से याद नहीं पर इतना ही अमाउंट है। गेमिंग पीसी आ जाता है भाई, ये कोई मेरे 1 साल पुराने सेल्फ को जाके बता दो। अभी मल्टीपल गेम स्ट्रीम कर रहा, पीसी तो नहीं पर गेमिंग लैपटॉप में लेने वाला। ये मैंने क्यों यूज किया? लाइट दी कैंपेन, लाइट नहीं हुआ क्या? माइरो कैरेक्टर कहाँ पे है? पार्टी सेटअप। जाओ जाओ तुम बाहर जाओ इस बार। Just sharpen my... मेरे को मन कर रहा है माइनक्राफ्ट स्ट्रीम करूँ मैं। तेरे को लगता है माइनक्राफ्ट स्ट्रीम में कुछ उखड़ेगा? माइनक्राफ्ट में एक बकचोदी क्या है अपना, लाइक कुछ बंदे पूरा शहर बनाते हैं माइनक्राफ्ट में, वो चीज कर सकते हैं। इंडिया में उतने लोग नहीं भाई, जेंशिन से ज्यादा खेलते हैं। जेंशिन तो बिल्कुल ही लाइक ऑडियंस के मामले में कम है, और ये एक्चुअली फायदा है क्योंकि इंडिया में जेंशिन उतने नहीं खेल रहे तो उनके स्ट्रीमर भी कम है। इंडिया के कितने ही है, 2-3 है पॉपुलर स्ट्रीमर ज्यादा से ज्यादा। अभी फ्री फायर और जेंशिन का फर्क बता रहा हूँ ना, देख फ्री फायर के बहुत स्ट्रीमर है, जेंशिन का कोई स्ट्रीमर नहीं है। तो अकेला अगर तू जेंशिन को स्ट्रीम करने जाएगा ना, बंदे आएंगे और सपोर्ट दिखाएंगे, वो सोचेंगे कि चल ये तो कर रहा है, कोई तो कर रहा है, और सपोर्ट दिखाएंगे ताकि उनका गेम ग्रो। वहीं पे जैसे पबजी फ्री फायर, इसमें तेरे को बंदे देखने ही नहीं आएंगे, उनके पास 1000 ऑप्शन है। फ्री फायर तो साले मिलता भी नहीं मेरे को इस पे ऐप स्टोर पे। दो तीन दिन खेला हूं मैं खाली फ्री फायर जिंदगी में, वो भी कुछ समझ नहीं आया मेरे को चल क्या रहा है, इतना कार्टूनिश लगा। दूसरे वाईटी भी सपोर्ट करते हैं जेंशिन के, जेंशिन की कम्युनिटी बहुत। हाँ बे, जेंशिन का पॉजिटिव कम्युनिटी तो है। मेरे को सपोर्ट कर दो, मैं अच्छी बातें कर रहा हूँ ठीक है। 400 सब्सक्राइबर ही चाहिए, ज्यादा दूर नहीं हूँ। जो भी सुन रहे हैं ना, या अगर फ्यूचर में कभी कोई सुनेगा, ज्यादा दूर नहीं हूँ मैं, ठीक। गरीब की दुआएं लगेंगी। आज मैं भाई कम से कम इसको 7 घंटा स्ट्रीम करूंगा, इसकी माँ की चेयर। पूरा हफ्ते का मैं वॉच टाइम अभी निकालता हूँ। टेलीपोर्टर है ना? स्ट्रीमर है जेंशिन का, उसको एबिस एंड कैरेक्टर बिल्ड करता हूँ, उसका एबिस एंड कैरेक्टर बिल्ड करता हूँ। तू करके दे रहा है। पर पता है बंदे लोग खुद भी कर सकते हो अगर चाहे ना। जैसे भी मेरा गेम है ठीक है, मेरे को बंदे मारना आसान हो गया, बिजी हो गया। भले ही पहले कितना मुश्किल था, देख एक भी मेरे से हो नहीं रहा था, अब आसान हो गया। बस बात आखिर में लक की है कि आपका लक रहेगा तो ही आपको अच्छा आर्टिफैक्ट मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे।
वरना ऐसे कुत्ते के बच्चे आएंगे आपके Emerge, मैच right में, here. तलवार घुमाएंगे और बोलेंगे टाइम टू बट साला। Flicker. देख रहा है 1500 का डैमेज कर रहा है लाइफ। लेवल 60 हो गया देखना। यूट्यूब पे पॉपुलर होना बहुत मुश्किल। तुझे भी दूंगा बट तेरा आईडी में बहुत कुछ है भाई। मेरे हो जाएंगे वे, ऐसे ही बिल्ड हो जाएंगे। इवन को ना ऐसे बंदे रिक्वेस्ट भेजते हैं, बाद में मेरे वर्ल्ड का सामान चुरा के भाग जाते हैं, फिर मैं ढूंढूंगा तो मेरे को पत्थर नहीं मिलेगा। कितने फटुई मार दिया इसके लिए, प्रीमो नहीं दे रही भाई। Emerge, right here. Emerge. माँ का मजे भी नहीं। अरे ये कुत्ते का बच्चा भाई, इस पे एनिमेशन नहीं देगा। कहाँ गायब हो गया भाई ये? भाई मैं बिल्ड करने के नाम पे स्ट्रीम पे रंडी रोना करना चाहता हूँ, समझना। मेरे को कंटेंट चाहिए, मेरे को बंदे चाहिए जो सपोर्ट करने के नाम पे सब्सक्राइब करे। और कितना बताऊँ तेरे को मैं। मुझे लगता है जेंशिन इम्पैक्ट का एक मैं ही हूँ मासूम क्रिएटर, है ना बेचारा। हर एक क्वेस्ट करते रहता है, पूरा मैप खेलते रहेगा। अरे राणा तुम मर जा, सब मेरे को वो दे Primo. Why I will take care of this? कभी कभार ना ऑप्शन होना चाहिए था जो मर्जी से करें हम लोग। Right here, right now. Yeah. अबे यार ये गलत जगह क्यों यूज करती है? Right now. जितनी फेवरेट है ना उतनी थोड़ी हार्ड टू प्ले भी है देखो। What a nuisance. Right here, emerge. वो मार रही है ना, तेरे को क्यों जरूरत है इनको मारने का? Right here, emerge, right now. An oversight on my part. Silence! ये 5 प्रीमोस दे रहा है क्लियर करने के। 5 प्रीमो इसमें भी मिलेगा। क्वेस्ट ही तो करता है तू। भाई इस गेम में कुछ और है करने को? दो चीजें, क्वेस्ट है अभी से। अभी हमसे होता नहीं, क्वेस्ट के अलावा कुछ हमसे होता नहीं। और कैरेक्टर बिल्ड नहीं किया गया साले, पिछले 2 दिन से कैरेक्टर बिल्ड कर रहा हूँ। एचपी देख 32,000 देख रहे हैं, 70 लेवल में 25,000 की एचपी इसकी। मेहनत तो है, इसके लिए जूस पी रहा है ना साला। क्या मतलब क्रिट रेट 20%? एक्सप्लोरेशन के नाम पे भाई तू क्या चाह रहा है? एक्सप्लोरेशन के नाम पे बंदा क्या करे? जंगल घूमे, जंगल जंगल जा जा के मैं क्या बोलूं? ये जंगल कितना सुंदर है गाइस, इसमें कितने अच्छे फूल हैं, ये पहाड़ कितना चूतिया है गाइस।
कुछ लोग करते हैं, मैं देखा, नई नई जगह ढूंढेंगे मैप में, पूरी मैप की गांड चढ़ जाएंगे, कुछ ना कुछ मिलेगा, दिल शेप का मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा। 6 घंटे हो गए भाई। स्ट्रीम स्टार्टेड 6 आवर्स अगो। कुछ लोगों का ऐसा भी देखा, तू भी देखा होगा, स्ट्रीम स्टार्टेड 1 ईयर अगो। वो लोग पता नहीं कैसे कर रहे हैं, 1-2 साल से लाइव स्ट्रीम। 100% एक्सप्लोरेशन कर हर मैप का, कोई भी लोकेशन का। एक्सप्लोरेशन बढ़ता कैसे है बे? परसेंटेज। कितने दूर जाना है? बहुत ज्यादा दूर जाना है। चेस्ट ओपन करने से, चैलेंज करने से। भाई तेरे को ये लगता है ये क्वेस्ट एक्सपी हमको ये देगा भी प्रीमो, जिस रफ्तार से चल रहा है? अरे राणा पागल है क्या? साली कहाँ कहाँ भाग जा रही है? ये मर जाएगी, मैं इसको ढूंढने नहीं आऊंगा। वो तो मेरे को 2500 प्रीमो का लालच मिल रहा था। इसको दोबारा जाने कौन बोला? एआर इंक्रीज कर, 50 हो जाएगा यार, 51 या 52 अभी हो सकता है। पर ऐसा ना हो कि मैं वो कर दूं, फिर वर्ल्ड का लेवल ज्यादा हो जाए तो कोई मरे ही ना हमसे। ऐसा बहुत बार हो रखा है ये। Right here. इसको आने से मेरे पास। आजा, भगते हुए भगते हुए भगते हुए। Come on out. साले अब आ। अच्छा यार, इसको आना जरूरी था। कम कर सकता है ना वर्ल्ड लेवल? बात तो है। इसमें भी प्रीमो मिलेंगे अपन को, वर्ल्ड क्वेस्ट वाले में। मिली वो जो भी है लेवल वाला, प्रीमो उसके भी है। स्टार्टेड से क्या मतलब है साले, में तो प्रीमो चाहिए। अभी स्टार्ट ही हुआ है। 50 प्रीमो, थैंक यू।
जैसे साकुरा ट्री है इनाजुमा का, ये क्वेस्ट करने से सुमेरो का रिवॉर्ड ट्री ओपन होता है। जैसे हम लोग समझा, देख उससे मेरे को याद आया, हम लोग ये चीज भी कर सकते हैं, यहाँ का स्टैचू, फिर इनाजुमा का स्टैचू, और फिर फाउंटेन का स्टैचू, ठीक समझा? फाउंटेन, इनाजुमा और सुमेरो, 3 जगह का स्टैचू। वेयर इज माई ब्लडी कैलकुलेटर? 23,000 बाढ़ में जाओ। 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 60, 1600 एक्सपीरियंस हमको यहाँ से मिल जाएगा। समझ आए? क्योंकि 9 लेवल हर एक स्टैचू में बढ़ा सकते हैं, एक लेवल होता है 10 तक जाना है, 9 लेवल 60 मिल जाते हैं एक उसमें, 1600। 2500 ये क्वेश्चन दे रहा है, 4000 प्रीमो का इंतजाम ऐसे हो गया। काश इसी 2500 सब्सक्राइबर का इंतजाम हो जाए। अपन लोग मिलके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा सकते क्या? सोच कुछ अगर ऐसा हो या कोई चीज, कोई तरीका हो जिंदगी में सब्सक्राइबर बढ़ाने का। जैसे अगर जिंदगी में इस बूढ़े को पानी में धक्का मार के गिराने का आइडिया होता, कितनी अच्छी होती जिंदगी। सोचिए बूढ़ा तरफ के पानी में गिर जाता, बोलता मेरे को बचाओ, मेरे को बचाओ, अम्मी को आके इसको लात मार देती, और वो बोलती एक बूढ़ा पानी में गया छपाक। आवाज तो आया पानी में डूबने की, बूढ़ा गिर गया क्या? क्या पता वेयर इज शी। स्टेमिना नहीं है सालों मेरे पे, ऐसे नहीं जा पाऊंगा भाई। यहाँ से चलो उड़ते जाएंगे। 4 की वॉच में कोई एक नया बंदा देख रहा है भाई, सब्सक्राइब का एक बटन दिख रहा होगा तेरे को, उसमें चप्पल मार के फेंक, या फेंक के मार, जो तेरे मन में वो कर, पर सब्सक्राइब दबा दे भाई। 610 हो जाएंगे। एक तो ना अपन लोग अपने जीमेल आईडी से भी सब्सक्राइब नहीं कर सकते। एक तरीका होता है ना कि अपने जीमेल आईडी क्रिएट कर लो और सब्सक्राइब कर लो, वो तरीका भी मैं यूज किया था 1 साल पहले, बट यूट्यूब उनको हटा देता है। ये चलेगा? किस काम का ये? एबिस के प्रीमो वेस्ट कर रहा है तू हर दिन, हर दिन, हर 15 दिन में। एबिस हो खा रहा है हमसे। कहाँ जाना है भाई? कहाँ घूम रहा हूँ? कहाँ जाना है? कहाँ जाना है साले? विराट गोल्डन डक। अभी वो पाकिस्तान के सामने भी कहाँ मारा? 4-5 मारा था ना, 6-7 कुछ ऐसा ही था, सिंगल डिजिट ही था। विराट भाई ने अपना पूरा पावर आरसीबी में लगा दिया। दो 216 मीटर नहीं चल रहा मैं, क्या मतलब चलना पड़ेगा? Right now, तो पहले मारूंगा emerge. भाई, कुत्ते का बच्चा। हट साड़े,
खाना इस नमूने से लोग डरते हैं। Right now. Emerge. Right here. इसको मारना अलग मजा है। जब वे ये चिल्लाते हुए आता है और जब वे ये मर जाता है, कुछ नहीं करता है। नॉकआउट में खेलेगा वो भाई बड़े मैच का प्लेयर, वो नहीं खेलता छोटे में। पावर क्यों वेस्ट करेगा भाई, बकते रहना है क्या भाई बस। गो देयर, हाउ कैन आई गो देयर, हाउ कैन आई प्रोबेबली गो देयर। Right now. Right here. दुनिया भर के मशरूम इन लोगों ने यही गिरा दिए क्या? Settle down. पेट मिला। Let the record show that I verbally consent to relinquishing these items into your possession. वहीं पे है वो रिवॉर्ड की, फॉक्स किलिंग लायन, फॉक्स किलिंग लायन। अच्छा शेर शेर होता है भाई, ये तो बात बहुत कम लोग समझ पाते हैं, पर तुम इनमें से एक हो। ऑल्सो डेली टीपॉट में फर्नीचर बना रहा है ना, नहीं रे अभी भी टीपॉट चमक रहा है, वहाँ जाना पड़ेगा। छोड़ दे इसको। सीनरी बढ़िया है, बढ़िया तो है। अच्छी नहीं लग रही तो बता दे भाई। थंबनेल बनाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है ना इंसान को। एक मेरे पहले के टाइम के थंबनेल थे, एक आजकल के, जो ही सेक्सी बना था। अभी जो मैंने लगा रखा है वो तो मैंने उठाया है, पर बहुत अच्छे भी बनाए हैं मैंने। फर्क नहीं है भाई, किसी की सुंदरता को अप्रिशिएट करने का मतलब ये नहीं कि इंसान ठरगी हो। इसमें मेरे को अच्छा क्या लगता है देखो बता दो। एक तो इसका एटीट्यूड ठीक ठाक है, उसके बाद इसके जो इसने झुमके लगाए हैं ना भाई, झुमके इतने प्यारे हैं ना इसके, समझ रहे हो? जैसे हिलेगी तो देखो झुमके भी साथ में, झुमके अलग ही अट्रैक्ट करते हैं पता नहीं। अबे यार ये क्या करना है, प्ले द रिदम ऑफ द ग्रेट दिस थिंग एट द डिजायर्ड लोकेशन। रिदम कहाँ से प्ले करूँ मैं? क्या मेरे बैग में कुछ है? मेरे पास ये चीज है, ठीक। गो टू दी आर्च, इधर ही तो है ही मैं। Complete a trial. What am I supposed to do? Register?
पार्टिकल्स कलेक्टेड। साले पार्टिकल कहाँ से कलेक्ट? उस कोने में है थोड़े बहुत। आठ और 7 चाहिए। इस बच्चे को मैं मार दूंगा। म्यूजिक बजा। म्यूजिक का तो हो गया, पार्टिकल कहाँ है? कुछ तो होना चाहिए जो पाथ आप फॉलो करो, उनको मारने से कुछ मिलेगा। क्या मारना नहीं है उनको। बकचोदी क्या है भाई? वो पार्टिकल साले मेरे को क्या सपना आ रहा है? कहाँ पे है वो? एक और बार ये बकचोदी में हम वापस आ चुके हैं। क्यों हमसे मत पूछना, बस आ चुके हैं। कभी कभार मेरे को ऐसा लगता है कि प्रो तो मैं हूँ, समझ रहा है? बिना कुछ जाने, बिना कुछ पहचाने कि मेरा अपना आप सारा काम हो जैसे जाता है ना। लौड़ा भी नहीं हुआ।
देखो एक कहाँ मिस कर सकता हूँ मैं, एक कहाँ मिस कर सकता हूँ मैं। इनको नहीं मारना। देखो यू आर अ गधी, तुम एक गधी हो, ये चीज तुम मान लो। रिटर्न देयर। तो मैं कहाँ था, मैं क्या बोल रहा था? तो मैं हूँ। जब बच्चा पैदा होता है ना तो डॉक्टर क्या बोलते हैं? लड़का पैदा हुआ है, लड़की पैदा हुआ है। मेरे पे बोलते प्रो पैदा हुआ है। आई शुड एडमिट कि प्रो तो मैं हूँ। अब की बार मेरी सरकार। इस चूते की गांड मार दूंगा मैं अगर ये नहीं हटा। तो मैं क्या बोल रहा था? प्रो तो मैं हूँ, समझ लो। प्रीशियस चेस्ट, लग्जरी चेस्ट चाहिए मेरे को। Go on, open it up. Show me what's inside. क्या है ये 4-5 उड़ते हुए चीजें कलेक्ट करना? क्या है मेरे? कुछ मुश्किल चीजें लाओ तो मैं मानूं। लो द रिबन। अरे भोसड़ी। गाना बजाते हुए भी सुंदर लग रही है। अभी प्रीमो चाहिए मेरे को। 50 और 30 80 मिल गया तब से इसमें, बट 80 से कुछ होगा नहीं। वैसा तो भी अचीवमेंट हो गया। प्रीमो जन झाड़ भी नहीं गया इसमें। 150 मीटर्स उस कोने में जाना है। यहाँ पे स्टैचू ऑफ दी सेवन खोलना है। अभी बस ये लोगों का नाम देख। पांच प्रीमो। अरे नारे, अरे नारे 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 ना 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 गोरी है। खेलना है इनको। आराम आराम हराम भाई, आराम हराम। आराम नॉट गुड माय फ्रेंड। देख रहा है 1100 का डैमेज तो दे रहा है। Right here, right now. क्या क्लियर हो गया? इसकी माँ। अच्छा Where are you, my friend? Where are you? कहाँ पे हो सकते हैं ये? पर 4-5 चेस्ट, 3-4 टेलीपोर्ट क्या प्रीमो ले लिया? यहाँ कौन सा टेलीपोर्टर तेरे को नजर आ रहा है? अच्छा ठीक है, यहाँ पे एक टेलीपोर्टर है। चेस्ट तो नहीं है, चेस्ट तो मेरे को नहीं दिखा। कहाँ है? किसको मारूं? कोई है भी? हेलो this light take me to my location। बड़ी लाइट ही गायब हो गया। Right here. Emerge. Right here. कहाँ अटक गया? अरे नहीं भोजू, भोजू। Right now. Emerge. Right now.
An oversight on my part. Bow your head. अबे यार इस पे एक जमाना लगेगा ना अपना अटैक करने में। अभी चैलेंज करके 10 प्रीमो चेस्ट कहाँ? तो चैलेंज था, मेरे को लगा इसका पार्ट है वो। एक चेस्ट तो ये रहा, ठीक। कॉमन चेस्ट है कर। Right here, right now. गेंडे को मारने से मिलेगा। Emerge. गेंडा मर गया। चेस्ट चाहिए भाई, चेस्ट। लाइट लेके जाएगा मेरे को चेस्ट तक। Right here, right now, right here. Eat this! Nice and spicy. Right now. Emerge. कितना छोटा है ये। Don't tell me that's everything. क्या ये चिली है? Is this chili? ना पीच है, पीच काम कर। यहाँ कोई नहीं है भाई, किसको मारूं? क्या है यहाँ? तो होना चाहिए मेरे को। ऊपर आसमान भी खाली है। ये कपड़े उठा के भागने के रस्सी से। नल्ला बेरोजगार इंसान यहाँ पे करेगा। फोन करने ऊपर लीज के ऊपर है बंदे। वो स्टोन फोड़ना, कौन सा स्टोन? खुफिया रास्ता बना। अरे मूली पड़ा है, उठा। मूली का है। जो अपना स्टैचूज को ढूंढना पड़ेगा। सीढ़ी भाई, जिस दिन तेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे साहिल, तेरे को कैसा लगेगा? Eliminate the Vanagan feat. इसका Right here. Emerge. साले का आग फॉलो कर रहा है मेरे को। ये मारने Right now. कैसे हो गए? Emerge. I'm always watching. Right now. Emerge. Silence. इसके आग फॉलो करते हैं ना। रिटर्न टू सिलापाना। जैसे अमिताभ 7 करोड़ बोलता है ना, वैसे वाला।
भाई वो शो भी अच्छा ही था, बंडोड। मतलब एज हो गया ना, बट बढ़िया था, टाइम पास। प्ले द रिदम। नॉलेज भी मिलती थी। सही था। उतना नहीं देखता था मैं, बट कभी कभी देखा, तब जब जब देखा तब सही लगा। टीवी देखे हुए जमाना हो गया, टीवी में सिर्फ आईपीएल में देखा। यार ये लोग देते नहीं है क्या फ्री में? ऐसे गरीब लोग हैं, काम करने बुलाए, प्रीमो नहीं देते। ये कौन है? हिली चौधरी? राजा। राजा नहीं बन सका तो नाम में राजा, बहुत बढ़िया। और ये क्या है? हेलीकॉप्टर है। हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर। पम पम। टीवी पर है ना, मैं एनीमे देख रहा, मैं बस। एनीमे ज्यादा देखे ही नहीं मैंने। एक स्पाई फैमिली देखा बस, वो भी मोबाइल पे। और एक कौन सा तो अजीब एनीमे था जो रील से देख के फिर मैं देखने गया। किंगडम ऑफ रूइन करके या कुछ था वो। 10 एपिसोड है, वो एक देखा मोबाइल पे ही। टीवी तो हमेशा बिजी रहता है, उसको क्या देखेगा। भाई मैंने देखा कुछ गेम्स है लाइक जिनमें तेरे को पेट्रोल स्टेशन चलाना है या कुछ वैसे काम करने हैं, ठीक, पेट्रोल भर गाड़ियों में, वो सब उस पे आ रहे हैं लाख लाख व्यूज। पीसी गेम है वो। नहीं भाई, अभी तक इतना नहीं बिगड़ा हूं मैं। तो समझ रहा हो, पेट्रोल वाले गेम सब में व्यूज आ रहे हैं। एक बार पीसी आ जाए ना, वो सारी बकचोदी करेंगे। एंड बच्चों के सब्सक्राइबर्स लेंगे 50 के और मिलेंगे। चिल्ड्रन ऑफ द फॉरेस्ट, हियर वी गो। इधर जाओ साहब। हाँ वही सिमुलेटर गेम्स एंड ऑल। लौंडिया मिल गई क्या तेरे को? लौंडे 609 ही है वे सब्सक्राइबर एक्चुअली। कितना लंबा है भाई ये क्वेस्ट। सोच कोई दुनिया में ऐसा होगा जो ये पढ़ पढ़ के खेल रहा होगा। साढ़े 11 बज गए थे। 11:30। हाँ 11:30 बज गए। बहुत ज्यादा देर। और एक क्वेश्चन मेरे को दूर दूर तक खत्म होता हुआ नजर आ नहीं रहा है।
Child's vision. It appears that the child lost control of the elemental power within it before. The vision has lost its glow now that its owner has left it behind. तो ये अपने लिए काम नहीं करेगा. अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है. वो भाई. ये तो मिलन में नहीं. मान ले मैं एक दो स्पिन करूँ और मेरे को क्लोरीन मिल जाए. और क्या फायदा, कौन सा मैं उसको यूज करने वाला हूँ. स्टॉप. सामान पार्किंग. प्रीमो. ये क्वेस्ट अपने सिबलिंग से भी रिलेटेड है. हम लोग अपना सिबलिंग चेंज नहीं कर सकते क्या? मैं लाइफ में अभी लूमिन बन जाऊं और एथर बन जाए मेरा सिबलिंग. ईथर बन जाए. लूमिन शादी प्यारी है बे. एथर वेस्ट है. 5 प्लेट हो गए. लूमिन अजीब ही दिखता है. न्यू अकाउंट बना एंड उसमें न्यू अकाउंट बनाना बड़ा वो है. फिर तेरे को सब कुछ स्टार्टिंग से करना होगा. भाई अगर मैं सोच नया अकाउंट बनाऊं, स्ट्रीम का टाइटल रखूं प्लीज सपोर्ट मी, स्टार्टिंग अ न्यू जर्नी इन जेंशिन इम्पैक्ट, ऐसे ही कुछ बकचोदी लिख दूं टाइटल में, क्या लगता है कुछ उखड़ेगा? क्या मतलब वो कुछ ज्यादा बकचोदी है? Talk to Arana Villa, quest complete. Everyone reach the glory path. 1200 मीटर जाना है और टेलीपोर्टर बंद है. कोई तो रास्ता होगा भाई. सुमेरो का गाना भी मेरे को Is इतना it अच्छा what you लगता है wish ना. to find? Hopefully इस the गेम के excitement of opening मेरे a दो treasure फेवरेट chest गाने has यही at है. least एक made it सुमेरो a का worthwhile जो अभी बज experience. रहा है, और दूसरा जोंगली का जो बीट ड्रॉप वाला आता है ना, वो सेक्सी लगता है. और ये गाना, ये बहुत रिलैक्सिंग है भाई. तुझे पता बहुत से लोग अकाउंट रिव्यू करने आते हैं, 10 में से 8 जन फ्लेक्स करने आते हैं. भाई पता है क्या, अकाउंट रिव्यू करने आ रहे हैं ना, अगर उनको मेरे कमेंट सेक्शन में मैसेज करना होगा, उनको सब्सक्राइब करना पड़ेगा. इसका मतलब है वो सब्सक्राइब करके आ रहे हैं. तो मैं रिव्यू कर देता हूँ ताकि मेरे को कुछ पता नहीं है, मैं सिर्फ उनका अकाउंट में नंबर पढ़ देता हूँ खाली. वो फ्लेक्स मेरे सामने क्या करेगा? मेरे को इस गेम से लंदन लेना देना नहीं है. मेरे को सब्सक्राइबर से लेने देना है. वो बंदा एक सब्सक्राइबर तो बढ़ा रहा है. फर्क इतना है, वो गेम में फ्लेक्स करता है, मैं असल जिंदगी में फ्लेक्स करता हूँ. तेरे सही है भाई, मजे तो तेरे है साहिल. 3-4 वीडियो डाला है, 100 सब्सक्राइबर. अरे रे रे रे, फेमस तो तुम हो लौंडे. 3-4 में 100 ठीक है. मेरे 300 में 600. अगर तू मेरे जगह हो, 100 गुना में तेरा कर दूं, तो 100 का 100 गुना कितना हुआ? 10,000 होते तेरे. Observe the Sumeru closest to find the hidden song. What the fuck is find the hidden song? Look for objectives.
Play the music. शॉर्ट से मेरे को सब्सक्राइब नहीं करते, ना ही मेरा शॉर्ट पे देखता। एक गया था भी 5,000 ठीक, उसको खाली 3 सब्सक्राइबर मिला, 2-3। बंदे पता है देखते हैं वीडियो, ज्यादा वो बंदे लाइक करेंगे, वो भी नहीं करते एक्चुअली में, और भाग जाएंगे। जेंशिन का क्या बनाओ रे? जेंशिन का कुछ मेरे पास आइडिया नहीं है शॉर्ट के लिए। हाँ चल, मैं विश का बना सकता हूँ, बट उसके अलावा क्या? एक होता रहता है ना तेरे दिमाग में, आएगा तू बना देगा। 200 मीटर जाना है, और मेरे को लग रहा है पैदल ही जाना पड़ेगा। इसको मैं मारना चाह रहा हूँ। Here you are, a process of elimination. पूरा लाइथम का डैमेज है इसमें। बहुत कम डैमेज कर रहा है। मजा ही आ गया। एडिट ही बना दे कैरेक्टर का, तो लगता है मेरी एडिटिंग इतनी अच्छी है। Right here. Emerge. Right here. Right now. Ah! Settle down. Is it what you wish to find? Hopefully the excitement of opening a treasure chest has at least made it a worthwhile experience. ये करना cannot use during combat। कौन लड़ रहा है मेरे से? अबे यार इनको बहुत प्यारी है क्या? Emerge. Silence. इस घटिया आदमी की शक्ल नहीं देखनी मेरे को। तुम आओ। अबे यार ये पत्ते ना भाई। पत्ते देखना ही है। अब हट रहा है। Enter the gloomy path. ये पूरा क्लियर करना होगा। क्लीन अप द विदरिंग जोन एज यूजुअल। ये काम नहीं है मेरे पे। ये क्या है साला? क्यों नहीं? तेरे को ये तो मार रहा है। Right here. Right now. Emerge. Right here. Emerge. अभी तो आर्कॉन क्वेस्ट कर रहा था, उसमें जो क्लोरीन का एंट्री सीन है, उसमें कोई बीजीएम अच्छा सा लगा के पोस्ट कर दे। क्लोरीन का कौन सा था? लड़ाई वाला ना? वो ग्रीन वाला मिला ही नहीं है मेरे को।
What was this? ये पता नहीं ग्रीन कलर का कुछ तो मिला बट हाँ क्या है? क्या हो गया इससे? कुछ भी नहीं। Right here. Emerge. Right here. कुछ कर भी रहा है ये। Right now. Emerge. Right now. Out of the frying pan, into the fire! Settle down! Huh! सामान इलेक्ट्रो ठीक है मेरे को मिल गया। अब मेरे को वापस जाना। यहाँ से लाके वापस उस जगह में जाके लगाना। बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय। कुत्ता बना के मारा इसने। उनके भी सारे वापस चले गए। बाहर जाओ जाओ अंदर आओ। Lead the way! छोटा बन खा जाओ। खुद लगा। ऐसे बहुत टाइम जाएगा बेटा। यहाँ आ गया।
कहाँ पे? यहाँ पे दिखा गया और वो गायब हो गया भाई। जिस सेकंड में पहुंचा उस सेकंड वो गायब हो गया। She's so pretty. जस्ट टेल मी यहाँ पे वीक आ गया। Right here. Right now. Emerge. You're... Silence! जिस सेकंड में पहुंचा उसी सेकंड वो गायब हो गया। ये वाला लास्ट में चला, सबसे नीचे। ओपनर मर गया। नाइस। Right now. Emerge. Right now. कोई जगह साफ जाना है। मतलब कि मेरे को दिख नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है। कुछ सामान नहीं है यहाँ पे। ये क्या है? एक डंडा और 3 वो। कुछ है यहाँ पे और? एक डंडा और 3 वो के अलावा। Is this flower related to something? I can't wait any... Nice and spicy. यार ये जैनलिन का चूतिया है क्या ये बैरड? क्या ये गुआवा? Out of the frying pan, into the fire. Listen, ना तो क्या है वो? एक ठंडा है, 3 वो चीज है। मुझे क्या पता क्या है ये। Boba, get them. वो रहा। Now I got stomach cramps. अरे नहीं, ये तो वही है जहाँ से मैं आया।
Nothing's here. तो मैं किसी और दूसरे का मैं लेके जाऊं उसमें देने को तो हर जगह का अपना मीनिंग होता है वो चीज छोड़ के मान लो भी मैं दूसरी जगह का लेके जा रहा हूँ तो देने will it allow me to do so? I don't think so. दूसरी जगह का तू लेके आने देगा ठीक और यहाँ पे कुछ है नहीं क्या लेवल की बकचोदी है भाई ये Nice and spicy. अगर ये फूल से रिलेटेड है तो मैं नहीं समझ पा रहा तीनों जगह का फूल लेके उठा के देखता हूँ नहीं क्या ही उठाऊं इन दो जगह को ऑलरेडी उठा रखा है वहाँ का ऑलरेडी उठाया हूँ ये सिंबल बस दे रखा है क्या है ये एक लन तीन आंड इस सिंबल का क्या मतलब है एक लंड है तीन आंड है ठीक ये सिंबल है Does it want me कि मैं दूर से जाऊँ ना don't want me to do so क्या हो रहा है गेम में मैं काटूं पता नहीं क्या हो रहा है मत पूछो कुछ तो हो रहा है अबे लौड़े की बाल झेंगी इसके ऊपर हम यहाँ से तो नहीं जा सकते ठीक Is this some kind of hint ये चीज
क्या ये मेरे को कह रहा है नीचे वाले से लेके जा? 3 ऑप्शन है, 3 जगह जाते हैं, नीचे वाले से ले। Is this saying me that? क्या इस कहने के हिसाब से यहाँ पे कुछ है? क्या मुझे इसमें जाना चाहिए? मेरे हिसाब से इसमें मैं पहले ही जा रखा हूँ। एक सेकंड, अब मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। Don't be scared. यहाँ से हम एंट्री मारे, ठीक। यहाँ पीछे 2 तो है, एक ये रहा एंड एक और है पीछे, वो रहा। मगर कैसे? चलो विमल थूकना बंद करेगा तो मेरा दिमाग चल जाए। Am I correct? Or as usual, I'm wrong. मेरे हिसाब से मैं एग्जिट मार। एग्जिट के नीचे एक है जिसमें कुछ भी नहीं है बकचोदी के अलावा। फिर उसके सामने फ्लावर है, ठीक। पूरे लेफ्ट में कुछ भी नहीं है। यहाँ से लाओगे नहीं लेगा, राइट से लाओगे नहीं लेगा। राइट में यहाँ एक और है तो सही, उसका भी ये लेता नहीं। गुफा है ना, ये है राइट में, नहीं देगा यहाँ का भी। तो जगह कौन सी बची? कुछ ऐसा कोई लेके यहाँ का पत्थर तोड़ जाए। एक काम करूँ, यहाँ पे एक और बार लेके जाता हूँ। उसकी माँ का, What a nuisance. ये चीज में कोई घंटा लगा करने में। मारो और इनको खत्म करो भाई। Emerge, right now. Emerge. Stay put. Bow your head. Abandoned property belongs to whoever finds it first. So, it's legally yours now. She get the idea. Stream started 7 hours ago.
भाई ये चीज़ हम कल करते हैं, 12 बज गए, इट्स टू लेट। अभी के लिए रहने दो स्ट्रीम, कल करते हैं बाकी का जिनशी।